ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದ 3 ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಕೇವಲ 3 ಆದದ್ದು, 3 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಆದದ್ದು.
I request the captain of KCC Kadri as well as the captain of Boss Warriors, please be reported here immediately for the tossing ceremony. ನಾನು ಜಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. So last call for the captain to report for the toss ceremony. ಬಾಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬಾಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ
Welcome back once again, cricket lovers. Good morning, everyone, and good morning to the all cricket lovers who gathered here in the morning itself here in this beautiful Derlakatte cricket ground to witness the final day of a prestigious Souhard Trophy 2026 Season 5. And good morning to all the cricket viewers from YouTube channel live telecast of this cricket tournament in Mangalore media. Good morning all viewers, and this is your Satish Salian, and wishing all the best for all the participating team in the final day of this cricket tournament, and hoping for the best for every teams, and hoping for the best day for the cricket, and the title decider day, the will going to become the champion of the prestigious Souhard Trophy 2026 Season 3. After being toss which is completed, the captain of KCCR Kadri winning the toss in the morning. They elected to ball first, and the Ravi, the captain of the side, won the toss, selected to ball first in the morning. It's going to be a bright and sunny morning, and it looks like the perfect weather condition in the morning itself. The bright sunny morning in this most beautiful huge cricket ground. And umpire walks towards the middle. Umpire Vivek of a challenge bowler, and Ranjesh, the umpire of UCA. Both are very good cricketers, the former cricketers. The one is all-rounder, one is technically very sound batter, Ranjesh, and Vivek, very good bowler of a challenge bowler. The two umpires walking towards the middle, and in our commentary box we have Harish Patel as a TV umpire, as ready here. The one more experienced umpire, got more than 35 years of experience in his umpiring career. And Mangalore media is ready here with the live telecast under the great leadership of the Kamal Adimeshwari, and all his teammates are ready here. And in our scoring department, online score, of course, manual scorer, Mr. Swastik is ready here. And online scoring department, Sahan is ready here. And everything is ready for the coverage here. KCCR Kadri, they are going to start the journey after winning the toss. Boss Warriors, the team which is under the leadership of the owner Jalil Boss, the boys from Kudroli, and they will going to give the challenge for the team KCCR Kadri. Winning the toss, elected to ball first. Opening batters of Boss Warriors already made their way to the middle of the pitch. Siab Munna will going to face the first delivery. Just wanted to reach to that delivery which is just wide outside the line of off stump, and enough time for Siab Munna to complete his first run, and first run for the team as well. It's one without loss of any wicket. Dilip, the experienced campaigner, great all-rounder, is in action. Lovely reverse hit, but played it straight to the field, and little bit hesitation for the run. Ramesh is got a little bit jerk after seeing that the stroke which is played straight to the hands of field. Slight bit of agitation because of that fumble from the field. And the batter completed a single. Both the opening batters is off the mark with a single. It's 1-2 without loss of any wicket. Once again played it gently down to point region for a single. Sunil, the fielder at back point region, once again is in action. Sunil Subbu, the lovely shot played very nicely in the gap towards a long off the boundary, and it's going to be a first boundary. Satish tried to get that one off his leg, but ball just defeating his trying legs and went into the boundary. First boundary comes up here for the Boss Warriors. A nice placement here from Ramesh in the negation, leaning into the right. Just have a look at the replay. Coming into the batter and almost going away from the batter. In fact, a slight bit of leg cutter and good placement in the negation. There is a long off, but it is a straighter version and stoppable
Satish slight a bit of misjudgment while he tried to stop the ball. Not really tried to get the ball from his hand. He tried to use his feet to stop the boundary, but ball defeats him. 7 on the board. Drives that one again wide off. Dilip played it down to long off region for a walkable single. With that single scope, but moves on to 8 on the board. Positive start here for the team Boss Warriors. The talents from Kudroli area under leadership of Jalil Boss. Lofted, what a shot! Magnificently struck that one. Beautiful shot. Sia Bunna is getting that. Ramiz correction is the batter. Munna correction. And that's off the toes. You know exactly this is a loose delivery. What a shot! And off the toes, played it nicely down to deep square leg. No one there in the deep square leg. This is a power play. They played it very nicely down to deep square leg boundary for 4 runs. So what a shot, what a start here for Boss Warriors. It's 12 without loss of one wicket in first over. Both opening batters are complementing each other very well with 6 runs respectively in 3 balls they face respectively. The positive approach here from Siab Munna and Ramiz. Second over going to start. Experienced Satish brought into attack to bowl the second and last over of the power play. And he bowls again, nicely played it down to deep mid wicket region. This time protection has been given in the deep. And ample time for the batter to complete the single with the addition of that single scope. But moves on to 13 without loss of any wicket. Sia Munna and Ramiz so far looking so good, playing the ball very confidently. Again deflected from the leg. Quick work done by the fielder, but not quick enough to stop the single. Both the field ball batters, in fact, no hesitation to go for the single. And one more leg by Scoba Namuzan to 14 on the board. 14 without loss of any wicket. Good start, very good start. Oh, this time lovely delivery from Satish, and just getting that delivery right in the spot. He just Ramiz tried to play across the line. He's so good so far by playing with the merit of the delivery, but this time he's trying to play across. The pace the penalty for that first wicket back in the pavilion of Boss Warriors. The 14-run partnership for the first wicket which is comes to an end. Ramiz departs for 7 after playing 5 deliveries. Satish strikes for his team. It's 14 for 1. You are watching the prestigious Souhard Trophy 2026 Season 5. Good news for the cricket lovers in RNFC. That is Kudroli Premier League Season 8 will go into commence. Of course, it's commenced on April. It's a festival of cricket from 27 to 2nd May at one of the most beautiful cricket ground is situated in Kudroli, the Tipu Sultan cricket town. And that will be a festival of cricket will go into commence with a huge cash prize of rupees 1,11,111 and 55,555. Lovely shot, played it very nicely the gap, and Raghu the fielder and backing up. Even Sunil is also chasing the ball, and combination work by the both, and ample time for the batter complete that couple of runs. Shishant the batter picked up a couple of runs, and with that couple of runs he is off the mark, and Todosco now moves on to
16 for the loss of 1 wicket in the over. Number second is in progress. Again, a bowler will going to bowl, and a lovely delivery, beautifully bowled. The perfect line and length in the negation. This is turning out to be a good over there from Satish. Leg by call by umpire. The kind of restriction which is required from this second over of the power play. So far, Satish bowled a tidy line and length. But still, it's a good score on the board for the Boss Warriors. They got 17 already in this over. This time again, one more dot delivery. This has been a fantastic over which has comes to an end here from Satish. After that, first over is very expensive. The second over of RNFC Trophy 2026. And the date we have already mentioned about this tournament 27/4 to 2/5 May 2/5 2026 and at Kudroli Tipu Sultan Nagar ground. Some top teams will going to participate in this cricket tournament. Any team is interested to enroll their name, they can contact the organizer to enroll their name for this cricket tournament. And the Bedra Media having a live telecast of this cricket tournament, one of the biggest tournament in the history of Kudroli will going to commence. Nitesh brought in attack to bowl the third over. 24 minutes, which is given for the fielding team to complete their 6 overs quota. I request all the teams, kindly request you to please maintain that time sense, which is one of the biggest part of the cricket, which is a discipline, the time sense. The first ball, which is nicely swept that one down to square leg region in behind the square, and by Siab Munna. And with that single scope, moves on to 18 for 1. Mitesh Little Master is in action for KCCR Kadri registered. Oh, what a shot! This is an absolutely massive hit. This is an absolutely majestic. It just hammered that one into the deep long on for a U6. And this is one of the biggest sixers of the tournament. Ball is almost hitting the building. Hitting the building, that shows that how long it is gone. What a massive hit. Putting everything behind the stroke. Ball is high and handsome. Just have a look at catch there from the cameraman. Of course, he finds it a bit difficult to catch the ball, but have a look at where the ball is landed. Just in front of Hotel Green Line Boarding and Lodging. Getting some free advertisement from the stroke of the batter Siab Munna. Again up and over, just over the tying hands of the fielder Raghu, the experienced campaigner. And he got a single that didn't quite timed it properly. And with that single, Skobana moves on to 25, the quarter century. And straight away the Chayar problem for the batter Siya Munna, and looks like he's absolutely feeling oh my goodness, already has got some health issue. He's not playing the matches regularly. If you are not feeling good, I request him to please take him out of ground, make some treatment quickly, because this is not good to see that you need to keep going. If you are not feeling well, this is my humble request him to not to continue. There's so many the incidents which is happening in the ground, so that it's very
important for Souhard Munna. If you are not able to continue, then you take a rest, because cricket is always there. You can play cricket, of course, if you are healthy enough. Plenty of cricket is left, but precaution is better than cure. It's very important, because you can't force your body. You can't force your body. That looks like after he got some treatment, he just wanted to continue. So, Souhard Munna, what a batting display from him so far. He's looking very confident, hitting the massive sixes in this particular over of Mitesh. Shashank this time tried to get the stroke, which is, I don't know what kind of technique he's wanted to implement to get the ball on the onside region. Little movement of his feet, just tried to close the face of the bat to get the ball into the square leg region. Missed by the flight of the delivery. Again, Flum in front of the wicket, no doubt at all. Shashank, and again his poor technique is implemented to get the ball. When the ball is in a midland leg stump, you are here trying for the cross-batted stroke. Again, you can see that Mitesh is bowling that such a good line. Definitely that ball is going to hit the leg stump of the batter, and hitting him onto the back foot. And umpire has got no hesitation, Vivek, to call that leg before wicket. Shashank departs. It's 25 for 2. Boss Warriors are looking very good. If you go to the region where someone can say that in Kudroli, so many teams, and present I think the more than 10 to 15 teams. If you go to that Kudroli to Bandar, there are plenty of the teams, and you can call as the cricket hub. Played it very nicely down to long on region for a single. So over number 3 gone. Awais, the new batter in, came experienced campaigner. 3 gone after completion of 3 overs. The Boss Warriors are absolutely looking so good so far. It's 26 for 2. 26 for the loss of 2 wickets. 3 overs completed. 3 overs remaining in the innings of Boss Warriors. And wait and see how well they will going to continue that start what they got. And of course, KCC Derlakatte is one of the most reputed team, the reputed organization. They engaged in not only in the cricket but even in the social work and cultural activities. One of the most prestigious organization, KCC Derlakatte, registered. Wait and see how well they will going to come back. It's a time to change in voice as well as language. It's a time for bring my friend Mr. Gopi. First time today in this final day of this cricket tournament. And welcome Gopi, good morning to you. And the welcome for the day number 2 and champion decider day of the Souhard Trophy 2026. A lovely start here from Boss Warriors, even though the team which is not having any ranking here, but the way that they are played 3 overs against KCC Derlakatte, registered one of the ranking team of the Mangalore pool. But need to appreciate the effort of the batters of Boss Warriors, especially the Souhard Munna, absolutely looking so good so far, scored a valuable runs from his bat. एग्जैक्टली सतीश, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत, गुड मॉर्निंग सतीश, और सारे दर्शकों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। souhard मुन्ना इस वक्त एक बेहतरीन बल्लेबाजी अपनाते हुए और फलस्वरूप इस वक्त बॉस वॉरियर्स एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ। souhard मुन्ना बैटिंग ऑन 14 ऑफ जस्ट 7 डिलीवरीज, और इस बीच रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक का सवाल है, इस वक्त souhard मुन्ना ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। अवेज सामना करते हुए ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 29 रनों पर। बॉस वॉरियर्स नॉन रैंकिंग टीम, लेकिन यहाँ पर एक बेहतर प्रदर्शन उनके बल्लेबाज देते हुए
केसीसीआर कदरी के खिलाफ एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला कवर पॉइंट की दिशा में, रन इस वक्त मिलेगा जरूर। थ्रो काफी ऊंचा, गेंदबाज के पहुंच से बाहर और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आज का जो कि पहला मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, द डे नंबर 2 Souhard the Trophy Season 5 2026 is now started just short while ago between Boss Warriors versus KCCR Kadri. Reverse shot, just waiting to the ball to come on to his bat and they played that one with a twisted bat at the last moment down to back on the third man for a single. और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 31 रनों पर, 31 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 32 रनों पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फोर्थ ओवर हैज बीन गेम स्टोन एंड 6 रन्स केम फ्रॉम द लास्ट ओवर फ्रॉम दिलीप। और 4 ओवर के बाद अभी भी ऐसा करना पड़ेगा। बॉस वॉरियर्स एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ, 32 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर, 32 for 2 after completion of 4 overs. Boss Warriors scored against KCCR Kadri in the bat number 1 of this prestigious cricket tournament. Souhard the Trophy Season 5 2026, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered. Just talking about the next match, one more big match is now coming up. Young Fred Surwa will take over Sneha Malamar in the next match. And that match coming up live exclusively right in front of you right after this match. And because of that, I request all the players of these two teams, the players of Sneha Malamar as well as Young Fred Surwa, please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर इस मैच का, तो गेंदबाज रघु इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। जस्ट 12 balls left in overall calculation in their innings। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर इनका, तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार बल्लेबाज सिया पुन्ना इज बैटिंग ऑन 17 of just 10 deliveries he faced with a strike rate of 170। और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार ओवर की पहली गेंद लेकर रघु, गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए 5वां ओवर शुरू होता हुआ बॉस वॉरियर्स की पारी में। काफी दूर दूर तक पहला ओवर क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और इस बीच रघु ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी इफ नॉट सक्सीडेड। विकेट कीपर विकेट जरूर उन्होंने झटका है, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूट चुकी थी। कार्तिक जो विकेट कीपर थे और काफी प्रतिभाशाली क्रिकेटर कार्तिक इस वक्त विकेटों के पीछे अपना कार्यभार बखूबी अदा करते हुए विकेट कीपर के रूप में। और पहली गेंद डॉट इस वक्त उनके खाते में जुड़ चुका है। 32 for the loss of 2 wicket at the start of the 5th over in fact। और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए, जहाँ तक सवाल है आज टॉप सीडेड टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। पहला मैच इस वक्त प्रगति पर, बॉस वॉरियर्स और केसीसीआर कदरी के बीच। इस मैच के बाद स्नेहा मालेमार का मुकाबला होगा यंग फ्रेंड्स के साथ एक और बेहतरीन मैच में। तीसरे मैच में भिड़ेंगे श्री आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स और एनएम जप्पू। और उसके बाद चौथा मैच पहले दौर का आज का खेला जाएगा टीम मैट्रिक्स और टोरपेडोस काला के बीच। तो लॉट्स ऑफ क्रिकेटिंग एक्शंस विल कमिंग अप टुडे ऑन दिस ग्राउंड। देलकट्टे का विशाल सा मैदान और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए। गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रघु, दाहिने हाथों पर द विकेट सियाब मुन्ना सामना करते हुए। सियाब का शॉट इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रहेगा बाहर 6 रनों के लिए। एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंटली प्लेड एंड द बॉल वेंट मेनी माइल्स फ्रॉम द फेंस फॉर अ मैक्सिमम। दूसरा छक्का इस वक्त लग चुका है। फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को जिस तरीके से उन्होंने डिस्पैच किया काबिल तारीफ है। देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, जस्ट अ बिट ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड लॉफ्टेड दैट वन इन स्टाइल फॉर अ 6। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। राघु देखते हैं कि छक्का प्रदान करने के बाद किस तरीके की कमबैक यहाँ पर करते हैं। और इस बीच अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल गॉट इन फैक्ट, देन लुकिंग फॉर द सेकंड, लेकिन दूसरा रन इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिला। जस्ट अ सिंगल गॉट। और
एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट स्टिल 9 balls left in overall calculation in the innings आवेश इस वक्त सामना करते हुए राघु की गेंदों का और राघु इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची एक रन का इजाफा 1 run added to the total scoreboard moving up to 40 on the board for losing 2 wickets 24 मिनट प्रति पारी के 6 ओवर पूरे करने के लिए गेंदबाज को दिए गए इस श्रृंखला के अनुसार 24 minutes allotted time is given for the bowlers to complete their 6 overs quota as far as the rules and regulations is concerned और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का राघु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सियाब मुन्ना इस बार just gone for a mighty hit not succeeded and dot delivery ball good one from the राघु और सियाब मुन्ना 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 14 गेंदों कब तक वो सामना कर चुके इस ओवर में अंतिम बार राघु गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार सियाब मुन्ना सामना करते हुए इस बार मिड विकेट पर एंड दिस इज गॉन नो इन फैक्ट आई थिंक इट्स क्रॉस्ड ओवर द फेंस वाइड इस लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे जीतोड़ कोशिश जरूर की थी अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने की लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था हैव अ लुक एट दिस इज द रीप्ले और अंतिम क्षण में नाकामयाब रहे और गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 6 रनों के लिए 6 number 2 in this over and in overall calculation 6 number 3 came from the bat of Siab Munna. Now the scoreboard stands 50 comes up for Boss Warrior. In fact 46 now the score 46 in fact 46 for the loss of 2 wicket and over number 5 has been came to an end. और निश्चित रूप से इस वक्त 3 छक्के सियाब जड़ चुके हैं एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हैं बैटिंग ऑन 30 सियाब मुन्ना इन जस्ट 15 डिलीवर्स ही स्कोर्ड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ एग्जैक्टली 200 और अंतिम ओवर उनके पारी का इस वक्त शुरू होता है जहाँ तक सियाब मुन्ना का सवाल एक बेहतरीन पारी वो इस वक्त खेलते हुए अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ केसीसीआर कदरी 30 रन वो इस वक्त बना चुके हैं और अंतिम ओवर जो कि उनकी पारी का शुरू होता है और देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू करते हैं एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में और सुबह का वक्त धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता वक्त सुबह के लगभग 10:48 बज चुके हैं और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए लगभग 29 से 30 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज का दाखिल हो चुका है और ओवर की पहली गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी इस बार बेहतर गेंद सियाब इस वक्त स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है बल्लेबाज का और जहाँ तक सवाल है सियाब ऑफ स्ट्राइक थे और यहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखना चाहा और आखिरकार स्ट्राइक जहाँ तक सवाल है डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है The scoreboard stays at 46 for the loss of 3 wickets. This is the 6th and the last over of their innings is now started. सौहार्द ट्रॉफी 2026 सीजन 5 के विजेता को चैंपियन को दिया जाएगा 1,50,000 रुपये नगद और सौहार्द ट्रॉफी 2026 और रनर्स को दिया जाएगा 75,000 रुपये 75,000 कैश और सौहार्द ट्रॉफी 2026 और तीसरे स्थानिक और चौथे स्थानीय यानी सेमीफाइनल लूजर्स को दिया जाएंगे 25,000 रुपये 25,000 कैश फॉर द सेमीफाइनल लूजर्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एंड सौहार्द ट्रॉफी 2026 विल गिवन तो इस बीच गेंदबाज इस बीच उछालना चाहा टॉप पे लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ कर आए 1 रन मिलेगा बल्लेबाज 2 रन लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा 4 कदम आगे जरूर बढ़ाते स्ट्राइकर रन के नए बल्लेबाज ने लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतोष 47 now for the loss of 47 for the loss of 3 wicket और इस बीच ऐमान सामना करते हुए जितेश की गेंदों का 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में गेंदबाज जितेश फेंक चुके हैं दाहिना हाथ राउंड द विकेट ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी और यहाँ पर सियाब स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल और विकेट इस वक्त गिर चुका है नॉन स्ट्राइक रन पर
So Siab back on strike. He's batting on 31 of 16 deliveries. One more wicket fall in the face of run out. No, ballebaz, new batsman. Number 6 batsman is now comes out to the middle. 3 balls left in overall calculation in the innings. बॉस वॉरियर्स एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ है और नए बल्लेबाज कमर इस वक्त नए बल्लेबाज कमर यानी इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ और जहाँ तक सवाल है इस वक्त वो सामना करेंगे सियाब मुन्ना इस वक्त सामना करेंगे जितेश की गेंदों का 3 गेंदें उनकी पारी में बाकी जितेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस बार उछालना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली सियाब रन लेना नहीं चाहते हैं और डॉट गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज जितेश के 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में जस्ट 2 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज इस वक्त ये गेंद इस बार चूके एक बार फिर से फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर जितेश निस्संदेह 5 बेहतर गेंद यहां पर फेंक चुके हैं और यहां पर विकेट गिर चुका है तो सियाब स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में स्ट्राइक रन की ओर दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइक रन पर रन आउट होता हुआ फैंटास्टिक इनिंग्स केम टू फ्रॉम सियाब 31 of 17 deliveries he scored and after being playing a fantastic knock off 31 of 17 deliveries including 3 massive sixes hit by Siab Munna he is backing to pavilion after done his job fantastically now अंतिम गेंद बाकी और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और रितेश काफी बेहतरीन 5 गेंद इस ओवर में फेंक चुके हैं और जितेश इस वक्त अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार द लास्ट बॉल ऑफ बॉस वॉरियर्स इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप जितेश टू राहिल और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस बार चूके बेहतरीन गेंदबाजी फैंटास्टिक ओवर came from जितेश just 2 runs conceded by him in the final over of boss warriors innings और इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इस अंतिम ओवर में जो जितेश ने की है सिर्फ 2 रन अंतिम ओवर में प्रदान किए और डेथ ओवर में 2 रन प्रदान करना कोई मामूली बात नहीं है और यहाँ पर सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए जितेश एक बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके हैं डेथ ओवर्स में सो द इनिंग्स इज अप फॉर Boss Warrior. They finished with 48 for the loss of 6 wickets and they set a competitive target of 49 for KCCR कदरी और देखते हैं यहाँ पर exactly 8.17 रिक्वायर्ड रन रेट जो है इस 49 रन तक पहुंचने के लिए 49 in the stipulated 36 still they have to score for victory with that per 10 wicket the present equation shows for KCCR कदरी और देखते हैं यहाँ पर KCCR कदरी इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस तरीके की बल्लेबाजी यानी बैटिंग यहाँ पर अपनाते हैं तो खासकर जहां तक लक्ष्य तक 49 रनों के पहुंचने का सवाल है इस वक्त रवि पड्डई और जो सलामी बल्लेबाज है उनकी उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद ज़रूरी है केसीसीआर कदरी के लिए और देखते हैं यहाँ पर रवि सलाम पड्डई और किस तरीके की शुरुआत देते हैं केसीसीआर कदरी को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनके प्रमुख बल्लेबाज तो केसीसीआर कदरी की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब केसीसीआर कदरी की पारी की यहाँ पर शुरुआत होगी तो अब वक्त है एक ब्रेक करना इट्स टाइम फॉर ब्रेक थैंक यू धन्यवाद
Thank you very much, Gopi, and welcome back once again. I request all the players of Sneha Malemar as well as young friend Surwa. Kindly request you to please report here in the commentary box immediately to sign the official chart. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಪೈರ್ Vivek, and it's a start of the chasing, and 49 is a target for the team KCCR Kadri against Boss Warriors. Of course, they played like a Warriors, they played like a boss, and one boss which is leading from the front, Sia Munna, scoring lovely runs from his bat, and 31 runs is scored in 17 deliveries. And the first ball looks like umpire Vivek just wanted to clarify whether it is good enough to call the wide or a no ball. This is what Vivek has got a slight bit of confusion. And my goodness, what wicketkeeper is doing there? I can't understand. Umpire now asking for the third umpire. Asking for the third umpire to watch whether it's going to be no ball or a wide. The bowler came right in front of it's a wide. It's not a no ball. It's a wide confirmed by the umpire. And starts with a wide here by the bowler Manish. So here comes Manish again to Ravi Padayuru. You have Ravi Salian Padayuru, one of the big name as far as the big hitting is concerned. Oh, lovely delivery, good comeback here by the bowler Manish. Even though width is offered, but not a width which is right hand batter will going to enjoy. Now their review which is taken. I think it's the umpire's review, because again the bowler came right in front of umpire. Umpire, is it going to be umpire's review? Umpire's review. So it's umpire's review because the bowler came right in front of umpire, and we can see that. And it looks like the bowler is coming right in front of umpire, taking his right after the follow through. We can see how can umpire will going to see the ball. This is what a clear picture we can see. And right in front of umpire Vivek, and no clue for the umpire where the ball pitches, where the ball is going. But third umpire will going to decide. It's a fair delivery. It's a fair delivery. And the bowler have to take his left. In the morning itself, is a very good number of crowds gathering here in this Derlakatte ground to witness this very important day for the cricket. The Mangalore pool teams are taking part. Santosh Bantwal is looking in good look with the specs, absolutely. The beautifully ball, perfect delivery just outside the line of off stump. One more delivery which is defeats the bat. Oh, all the fans and following Santosh Bantwal. The man in a terrific form in the bat, and the way that he played in a Kudla Premier League, even though they are finished with the losing side, but he's absolutely got some entertainment with his batting performance. The reverse sweep played it very nicely in the gap. That will go into be a boundary. The first boundary for the KCCR Kadri. After 2 dot deliveries, struggled against the bowler. Ravi just wanted to implement that unorthodox cricketing stroke. Just have a look at the delivery and have a look at the technique. Last moment changing his grip. And lovely reverse sweep. Not really try to hit it too hard. Just helping it down. They played it exquisite reverse sweep down to third man boundary for 4 runs. It's 5 without loss of any wicket. Manish after that 2 dot ball. And Ravi just break the shackle in the right time, because the team is required 49. They have to get some good start. You cannot underestimate any team in the limited over matches. Of course, the 6 overs game, the Boss Warriors came with the full strength, getting some
The very good talents from Kudroli, giving the opportunity and taking part in the Mangalore pool is not a joke. I need to appreciate Boss Warriors. This is a typical Ravi Salian Padayur for you. You can't do the mistake of bowling to his arc. Just again, the ball is shaping into the legs of Ravi Salian. He's so strong off his legs. And when you're bowling in the power play, when you're not having a ample fielder in that, adequate fielder for that line and length, there's no ample face in the bowling, and he didn't got adequate field for that, and he got a punishment for that. Lovely pick there from Ravi. Back-to-back 2 boundaries. Take the total score into 9 now. Manish, 5th time in this over. Right arm over the wicket, bowls. Again, catch it is a call. Misfield by the fielder. Charan, the fielder, tried to get the ball. But falling short of him, and one more single added total chance which is provided for the catch. But the fielder Charan couldn't manage to hang it. Just falling short of him. 10 runs straight away coming here for KCCR Kadri. And after that, back-to-back 2 dot ball. Ravi picked up a back-to-back 2 boundaries. Ball him, clean him up. Jitesh playing wrong shot. Nowhere near the pitch of the delivery. With the flight, Manish bowled that delivery. And Jitesh tried to play across the line of delivery. Even that think it's a power play over. Maybe the Jitesh wanted to play that shot, but he playing his first delivery, facing his first delivery, and you can't do the mistake of playing across. Absolutely nowhere near the pitch of the delivery. The ball hits the off stump of the batter. The first wicket back in the pavilion of KCCR Kadri, and both the teams has got start. KCCR Kadri got 10, and the team Boss Warriors has got 1 wicket, the wicket of Jitesh. It's 10 for 1 after completion of over number 1. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. One more very young talent, Charan, brought into attack. The man who played for Hanuman cricketers as well, and even for MPC Bajalakeri, and especially for this team Boss Warriors. Again, one more talent from Kudroli. The brought into attack. Ravi to face him. Charan. Far outside the line of off stump and going to be a wide. Starts with the warm-up delivery. Gone far outside the line of off stump and Souhard moves on to 11 for 1. Here comes Charan. Ball system catching his call, and ball just dropping between gully and the back point region fielder. And not a quick movement there from the fielder. Had to be a take this all chances. You can't give life for the batter like Ravi Salian. And try to play the reverse sweep, the same technique he wanted to implement what he made for in the first over of the bowling of Manish. And with that single, Souhard moves on to 12 for 1. In the over number second is in progress. Charan to continue. Ritesh. Oh, lovely delivery there from Charan. Lovely delivery. The ball is very close to the off stump, and half-hearted shout here for the caught behind the wicket. But just an excitement rather than the confidence. Beautifully bowled there by Charan. The wicket keeper behind the stump. Not confident enough. Lovely delivery. The ball misses the stump completely. It's 10 for 1. Oh, lofted this one. Absolutely fantastic. Oh, he played it. The fielder there in the cow corner. The fielder there in the cow corner, and I'm really surprised, isn't it? Because the field placement, you can see, the most of that time of power play, they will kept one field in the mid wicket and one long on, or it is long on or long off, but they kept it in the cow corner.
I thought it's one of the safest stroke to play in the books. And I thought that Mitesh is the safest stroke. But finds the field. The wicket number 2 gone. In case they're all short of trouble now. Almost drags it from the outside the line of off stump. No placement whatsoever. Choosing one of the fielder out of 2. This is one of the disappointment fact that in the power play, when you hit the ball, when you take an aerial route, you need to be very careful because you got plenty of areas to play the stroke, and you're choosing one of the area where the fielder is set. In the power play, only 2 fielders outside the circle, and it may be that hurting factor for the batter is choosing one of that fielder. It's 11 for 1. Karthik, the little master, came into bat here, and Charan bowls with a wide. Charan, the successful bowler, have to restrict this wide deliveries. The second wide of this over, and scored the moves on to 13. Oh, lovely delivery, good line. This is what the line Charan have to target. The turning out to be a good over. It's 14 for loss of 2 wicket. Boss Warriors. They know exactly they can win this match if they bowl well and field well. Against KCCR Kadri registered. Oh, plumb in front of wicket. One more wicket back in the pavilion, right on the spot. Lovely Yorker and delivery from Charan. There's no hesitation for umpire Ranjesh to raise his finger. Charan picks up for wicket number 2. And it's a scoreboard is 13 for the loss of 2 wickets. Just have a look at it in the replay. That was absolutely plumb in front of wicket. Have a look at that. Where his back foot is absolutely right in front middle stump. And Karthik couldn't manage to capitalize opportunities given for him in that batting order. The cases Kadri are looking in more trouble in this over. 2 wickets here for Charan. It's 13 for 3. What a over turning out to be here for Boss Warriors. 2 wickets in this over. Charan bowls. This time again. This is the one area Charan need to be a little bit careful. After picking up wickets, the bowler have to be a little bit careful because the batter is coming in with a tremendous pressure. You need to utilize that pressure situation of the batter, not to bowl wide. And the bowling a wide will going to give some kind of confidence for the incoming batter, Arshit, the experienced campaigner. One more lovely delivery, equally well played there by Arshit. Down to mid-wicket region for an easy single. So this is on a great over, excellent over there from Charan, excluding that 3 wides in the over, but still it's a quiet over. 6 runs and 2 wickets for Charan. The great stuff from young man. It's 15 for 3 after completion of over number 2. We are talking about lovely weather condition, and in my right we have a gentleman called Mr. Kabir Derlakatte, the man who is responsible for a lovely pitch. Famously known as a Kabir, not only as a groundsman, but he is the one, is absolutely the busy man in 2 days of cricket tournament. Is a pitch maker, pitch cleaner, everything. Pitch marking, all-rounder. Now he's enjoying the game of cricket in our commentary box with me. It's 15 for 3 after completion of over number 2. Still long way to go for the KCCR Kadri to back in this game. Required run rate is now jumped into 8.50 runs per over. Another 34 more runs required for the victory in the remaining 24 deliveries. And Boss Warriors has got a good opportunity to upset the big team. After that, batted brilliantly. Lost the toss, asked by the opposition to bat first.
And one of the highlight of the innings of Boss Warriors, Siab Munna, scoring valuable 32 runs from his bat with some massive hits. The man really won the heart of all cricket lovers with this big innings, massive strokes which came from his bat. Sahal, one more bowler has got opportunity to perform for the ranking teams. Wow, what a shot, lovely shot there from Arshit. Technically, if you see, that was a classical cover drive. And this kind of cricketing stroke, only the players who playing for over-arm cricket, they play that exquisite cover drives. Technically, if you see, that stroke is absolutely leaning into the drive with the full face of the bat. Picked up a single, 16 for 3. In the over number 3 is in progress. Sahal to Ravi Salian Padayur. Again, played it nicely into long off region. Played it very nicely to single down to long off region. It's 18 on the board. 17, correction. 17 for 3. Over number 3 is in progress. Sahal. Oh! Again, pretty ordinary attempt there from the fielder. They have to grab this opportunity. The late movement there from the fielder. Late reaction coming from the fielder. Rio of safe is played. Tried to get that catch. Just falling short of him. So one more single taken that score into 18. Of course, this there are the hard work we can see there in the building with the bright sunny morning. One of the difficult job to do. Oh, this time catch it is the call. Again the falling shot of Charan, misjudgment, but take. Oh, mix up. Hesitation for the second run. Charan did a great job to read that deviation. After the ball landed in front of him, ball just changing the direction. But he managed to keep his eyes. Just a single. And of course, there is a couple of runs here. But the misunderstanding between the wicket between Ravi versus Arshit. And with the addition of that single score, but moves on to 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Sahal to continue to Arshit. Arshit drives it and powerfully sweet sound you can hear. Perfectly struck from the full face of the bat, sweet part of the bat. But just a single for that, and with that single score, but moves on to 20 for the loss of 3 wicket. Another 29 more runs required for the victory. The match is absolutely evenly poised, but Boss Warriors are looking in control. Sam Plum in front of wicket. One more wicket back in the pavilion. This is a huge one for the point of view of Boss Warriors. Ravi just tried to play across the line of the delivery. No hesitation from Vivek to raise his finger. Just have a look at it in replay. Sahal strikes with a huge wicket. Now KCR Kadri are looking in more trouble. Oh, that's absolutely Plum in front of wicket. Even in a closed eyes, you can raise your finger because this is absolutely clear Plum. The ball which has got a little bit extra bounce. That's the problem that Ravi couldn't manage to read it properly. That's really a huge wicket for the team Boss Warriors. They celebrate the most that wicket. More than any wicket. This is the one wicket they really celebrates a lot. Why not? They got a huge one. It's 19 for 4. The over number 3 is in progress. 3 overs comes to an end, and it's 19 for 4. And it's a time to change in voice as well as change in language. It's time for Gopi. And what a performance here from Boss Warriors, Gopi. KCR Kadri are looking in more trouble now. It's 19 for 4. 19ಕ್ಕೆ 4. 20 correction. 20 for 4.
and 29 more runs required, Gopi. 20 on the board, 20, and they have to get another 29 runs to win the match in the remaining 3 overs. 18 ball, 29, Gopi. That looks like it's going to be a big ask, but not impossible. KCR Kadri have to bounce back here with some big overs. Otherwise, team of Boss Warriors definitely has got opportunity to upset the ranking team. एग्जैक्टली सतीश, इस वक्त कम बैक करना ज़रूरी बन चुका है केसीसीआर कदरी के लिए। तो जैसा कि आपने फरमाया सतीश, रैंकिंग टीम के लिए अपसेट कहलाएगा अगर केसीसीआर कदरी इस मैच को हारता है तो इस बीच पहली गेंद बेहतर गेंद थी। इस वक्त गेंद को उछालना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और चौथा ओवर जो कि शुरू हो चुका है और अब तक बॉस वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है इस मैच में। और इस बीच गेंदबाज सहल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, फैंटास्टिकली स्ट्राइक विद द रिवर्स शॉट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। हर्षित के बल्ले से स्ट्रोक लग चुका है इस वक्त। लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, एट द लास्ट मोमेंट ही जस्ट प्लेड दैट वन विद वन हैंड एंड फाइंड्स द गैप एज वेल जस्ट वाइड ऑफ द गली फील्डर। और रिप्ले पर देखिए किस तरीके से स्ट्रोक इस वक्त खेला था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली प्लेड विद वन हैंड एट द लास्ट मोमेंट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। जरूरतमंद चौका केसीसीआर कदरी के लिए इस वक्त रख चुका है। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज हर्षित और दिलीप की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। मुजम्मिल जो कि पिछले गेंद पर चौका प्रदान कर चुका है, स्कोर 24 रनों पर पहुंच चुका है गेंदबाज। इस बीच ये गेंद हर्षित का स्ट्रोक एंड इट्स गॉन many miles for a maximum. It's a biggie. This is an outstanding strike. 4 and a 6, and with these two strokes, I must say KCCR Kadri are now back in the game. Have a look at this in the replay. Just stand and delivered, and he just got that one right from the middle of the bat. The scoreboard is now moving up to 30 on the board. Now the equation stands 15 balls left, 19 runs to get. और फुल टॉस ड्राइव कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। हर्षित इस वक्त पारी के भागदौड़ को यहाँ पर संभाले हुए, हालांकि 4 विकेटें उनके सामने जरूर गिर चुके हैं, रवि, जितेश, रितेश और कार्तिक के रूप में, लेकिन एक छोर पर हर्षित इस वक्त डटे हुए। दिलीप इस वक्त सामना करते हैं मुजम्मिल की गेंदों का, गेंद को ड्राइव कर दिया दिलीप ने खूबसूरती के साथ, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद दीपक से कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो ये ओवर इस वक्त केसीसीआर कदरी के लिए काफी बेहतरीन साबित होता हुआ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके का स्ट्रोक था, जस्ट एक्सपोजिंग द स्टंप्स lofted that one. और यहाँ पर देखिए फैंटास्टिकली स्ट्राइक एंड फाइंड्स द गैप एज वेल बिटवीन वाइड लॉन्ग ऑफ एंड एक्स्ट्रा कवर। चौका यहाँ पर प्रदान करते हैं। नाउ इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर फॉर द बैटिंग साइड। केसीसीआर कदरी 35 ऑन द बोर्ड और मुजम्मिल की गेंद, ये गेंद उछालना चाहा इस वक्त, बेहतर गेंद थी चूंकि इस वक्त अंतिम क्षण में व्हाट अ फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एंड द इनिंग्स ऑफ केसीसीआर कदरी। मैं जानना चाहूंगा इस ओवर में कितने रन बने। 15 रन इस ओवर में बने, 15 runs scored from this over, and now the equation stands 12 balls remaining, 14 runs required for KCCR Kadri. हर्षित एक छक्का और एक चौका पिछले ओवर में झड़ चुके हैं और दिलीप पारी के उनके पिछले ओवर के 5वीं गेंद पर जो चौका लगाया था उस चौके की बदौलत यहाँ पर समीकरण आसान बन चुका है। 12 गेंदें 14 रन चाहिए और यहाँ पर कमबैक करना है इस वक्त बॉस वॉरियर्स के गेंदबाजों को, तो एक घातक गेंदबाजी इन बचे हुए 2 ओवर में करनी होगी। Meantime, the next batsman Malamal will take over young friends to one. Because of that, I request once again all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. One more big match is now coming up right after this match. गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए मनीष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामने इस वक्त करने के लिए तैयार हर्षित। हालांकि रवि सालियान पटायूर का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव क्रिएट हो चुका था केसीसीआर कदरी के ऊपर पिछले ओवर के शुरुआत से पहले, उस दबाव को काफ़ी हद तक हटा चुके हैं। हर्षित और दिलीप पिछले ओवर में मिलकर 15 रन बटोरने में सफल। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए 12 गेंदों का, तो 14 रन इस वक्त चाहिए बचे हुए 12 गेंदों पर। और मनीष फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ऑफिशियल हाಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और इस बीच मनीष फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ
ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हर्षित इस वक्त सपना करते हुए 14 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज मनीष दाइना तो बढ़ता विकेट हर्षित के लिए ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लेकिन फील्डर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नाउ 11 balls remaining, 13 runs required and दिलीप बैक ऑन स्ट्राइक। निश्चित रूप से केसीसीआर कदरी के लिए ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी जो कि काफी बेहतरीन साबित होते हुए। और मनीष इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया दिलीप ने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ऐसा कहना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच केसीसीआर कदरी लुकिंग राइट ऑन टॉप। And what a fantastically struck by दिलीप। Have a look at this in the replay। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को डाला था मिड विकेट फील्डर के बाईं ओर से, वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे, जितोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में सफल। 40 ऑन द बोर्ड। नाउ 10 balls 9 runs required। इक्वेशन सीम्स टू बी much easier now for the batting side। और इस वक्त मनीष काफी दबाव में नजर आते हैं, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दिलीप के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, मिस फील्ड, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। नाउ 9 runs टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। और निश्चित रूप से इस वक्त एक सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है, क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाजों को केसीसीआर का। देखा जहां तक सवाल इस वक्त गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चंद विकेटों की सख्त जरूरत है। इस बार गेंद को खेला, गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रन, 41 for 4। यंग फ्रेंड्स उरुवा ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಬಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। I request the captains of Young Friends Urwa as well as Sneha Malebal please come in front of the stage for the toss procedure। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, यहाँ तो ऊपर द विकेट हर्षित इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को कट करना चाहा, बेहतर गेंद थी गेंदबाज मनीष के, इस वक्त रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। नाउ 7 balls left 8 runs required। और निश्चित रूप से चंद डॉट गेंदों की इस वक्त सख्त दरकार बॉस वॉरियर्स के गेंदबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए इस मोड पर। और इस बीच इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर मनीष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया है हर्षित ने लॉन्ग ऑफ पर, शायद वहां पर फील्डर मौजूद है, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 42 ऑन द बोर्ड, दैट मींस 5 overs has been came now 7 runs to get from remaining last over, that means in remaining 6 overs, 6 for tie 7 for win। And now the last over, that means 6 balls remaining in overall calculation in the innings। This is the match number 1 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Souhard the Trophy Season 5 2026 is now progressing here, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered DFC। And the first match is now progressing here between Boss Warriors versus KCCR कदरी। मुकाबला इस वक्त जारी है, मैच अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बराबरी पर रुक चुका है। और कैप्टन स्नेह मलेमार ಹಾಗೂ यंग फ्रेंड्स ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और 7 runs to get from 6 deliveries। और गेंदबाजी शुरू करते हुए सुशांत, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनके बारे में द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। फर्स्ट बॉल, God is outside it this time, just went wide of the wicket keeper, in fact chase for the fielder and it might be cut off just inside the fence। 2 रन मिलेगा इस वक्त, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद बिल्कुल फाइन निकली थी इस वक्त शॉर्ट टर्मैन फील्डर के दाईं ओर से, और 2 रन बल्लेबाज इस वक्त दौड़कर रिपोर्ट करने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 44। नाउ 5 to get from 5 deliveries। अंपायर ने इशारा किया कि देयर exceeds their time limit, so one fielder they have to brought inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned। और गेंदबाज इस वक्त सुशांत, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड। नाउ the equation seems to be much easier for the batting side, 4 to get from 5 balls। और सुशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, यह गेंद ड्राइव कर दिया मिड ऑन पर, मिस फील्ड, गेंद जाते हुए डीप इन विकेट पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाए। और इसी के साथ हर्षित की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है। हर्षित फैंटास्टिक इनिंग्स फ्रॉम हर्षित, विकेट लॉस फॉर केसीसीआर कदरी, लेकिन केसीसीआर कदरी इस वक्त विजय के अति निकट यहां पर पहुंच चुका है। यंग फ्रेंड्स उरुवा ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಬಾರ್ ತಂಡದ
ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now the scoreboard says 46. That means 3 required in remaining 4 deliveries. 4 गेंदे बाकी 3 रन चाहिए. और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का 46 for the loss of 5 wicket. और ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಬಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 to get from 4 deliveries. New batsman is now comes out to the middle. नितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और 2-3 डॉट गेंदे लगातार अगर गेंदबाज फेंकते तो शायद यहाँ पर बॉस वॉरियर्स इस मैच में वापस आ सकता है. फिलहाल तख्ता यहाँ पर केसीसीआर कदरी का बारी लगता हुआ. 4 गेंदे 3 रन चाहिए. और नितेश नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज सुशांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार. 3 रन चाहिए 4 गेंदों में. और दाहिने हाथों पर द विकेट सुशांत इस वक्त तैयार. ये गेंद नितेश के लिए. गेंद को झलना चाहा. गेंद हमें में इस वक्त अपील जारी है. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा नितेश की पारी समाप्त हो चुकी है. स्वीप करना चाहा था, टॉप एज पर गेंद टकराई, गेंद को लपक लिया गया है. और अब ऐसा कहना पड़ेगा द मैच इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग. नाउ 3 to get from 3 deliveries. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो रिवर्स शॉट खेलना चाहता, टॉपेज पर गेंद टकराई थी. और यहाँ पर देखिए आसान सा कैच लपका गया सिली पॉइंट क्षेत्र पर. और 3 गेंदे बाकी 3 रन चाहिए इस वक्त. विकेट नंबर 6 गिर चुका. 6 विकेट डाउन. नाउ इट्स 46 for 6. सुनील उर्फ सुब्बू इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. 3 गेंदे 3 रन. और अंतिम 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन प्रदान करते हुए गेंदबाज पिछले गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं. पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में नितेश की पारी समाप्त हो चुकी है. सुनील इस वक्त सामना करते हुए सुशांत की गेंदों का. और सुशांत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. 3 गेंदे बाकी 3 रन चाहिए विजय के लिए. काफी दिलचस्प मैच इस वक्त प्रगति पर. सुशांत दाहिना तो बड़ा विकेट हल्के से पुश कर दिया. जस्ट वाइड ऑफ द कवर पॉइंट फील्डर. 1 रन मिलेगा जरूर. गेंद को हल्के से अंतिम अक्षर में पुश कर दिया था. और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के बाईं ओर से गेंद निकलती हुई. और 2 गेंदे इस वक्त बाकी है. 2 रन विजय के लिए चाहिए. और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज दिलीप जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए. 2 लगातार डॉट गेंदे सुशांत इस वक्त फेंकते हैं तो शायद यहाँ पर विजय दर्ज कर सकता है बॉस वॉरियर्स. लेकिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दिलीप जिनकी निगाहें इस वक्त गेंद पर जम चुकी है. और देखना है कि इस वक्त दिलीप जो बल्लेबाज उन पर किस तरह नियंत्रण प्राप्त करते हैं गेंदबाज सुशांत. 2 of 2 अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑफ सबसे बाहर. वाइड का इशारा. रनआउट जरूर हो चुका है नॉन स्ट्राइक रन पर. लेकिन 1 रन मिल चुका है एक्स्ट्रास के रूप में, वाइड के रूप में. और इस 1 रन के साथ स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. नाउ जस्ट अ सिंगल रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 2 डिलीवरीज. 7th विकेट डाउन. इट्स 48 for 7. केसीसीआर कदरी. Two balls left, just 1 run required. We're just waiting for the number 9 batsman. 7th wicket down. Now Sushant दाहिना तो बड़ा विकेट दिलीप के लिए. That's it for this match. Fantastically struck by Dilip. And with that stroke, KCC Al-Qadri registered a thrilling victory by 3 wickets with just 1 ball to spare against Boss Warriors. And with that 3 wickets thrilling victory, KCC Al-Qadri will through to the next round of this competition. So the match number 1 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy Season 5 2026 has been came and with proudly presented by Derlakatte Friends Circle registered. And now the second match is going to start. One more big match is now coming up. Young Friends will takes over Sneha Malemar. And that match starts within just a short while.
So, the man of the match of this match award goes to the man who scored 20 valuable runs in the critical circumstances of the match. And because of that fantastic knock of 20 runs, Harshit of KCCR Kadri entered the man of the match. I request Harshit of KCCR Kadri, please come in front of the commentator box and receive the man of the match award from one of our chief guests. And I request Mr. Shaji to please distribute the award for Harshit for his fantastic batting knock of 20 runs in this match. Mat-turning knock, in fact. So the next match, Neha Malemal will take over Young Friends Urwan. Before that match starts, for the next further comments, I would like to invite for the first time today Mr. Abdul Razak Sarmara in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಜಲೀಲ್ ಬಾಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಜ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಹರ್ಷಿತ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Arshit, the match winning innings of Arshit, the 20 runs is scored, and the match winning knock from Arshit. Unfortunately, the Boss Warriors absolutely played a very good game of cricket, and they are finished with that losing side, but they need to appreciate their appearance in the Mangalore pool. Boss Warriors ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಲೀಲ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಫೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಬಟ್ ದೇ ವಾನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ದ ವೇ ದಟ್ they are given some fight for the KCCR Kadri registered. Congratulations for KCCR Kadri registered for winning their first match. And this match is going to be one more big match. And Young Friends takes on Sneha Malemar.
Welcome back for the match number 2 of day number 2 and the final day of this cricket tournament. And this is going to be a very good contest, a big contest. Sneh Malamar versus the team Young Friends Urva. Winning the toss, captain of Sneh Malamar. Young Friends Urva, captain won the toss, selected to ball first, and Rifan will going to start the proceedings from the commentary box. And opening batters already came into bat. Ranjit as a non-striker. And striker will be maybe it's Sharat Bolangadi. Just need to see that name. And Rifan will go into start proceedings. Umpire Arish Padil and umpire Azmal Jokat at square leg. 24 minutes which is given for the fielding team to complete their 6 overs quota. So that please note that. Keep it in your mind, and here comes the first delivery. Round the wicket, right arm. Oh, lovely delivery. Starts with a quicker one, faster one. Surprise the batter. No opportunity for the batter to get any kind of stroke here. Sharat Bolangadi is a striker and beaten by the pace of the ball. Operating round the wicket, Rifan. And Sharat has got no clue in the negation. Not really offering any strokes. No damage done. No run scored. Second time in this over. The Samar drives that one into that long on region for a walkable single. And Sajid, the fielder, in the deep long on, fields the ball. Ample time for the batter Sharat to complete the single. He's off the mark with a single, and even Sneha Malamar is off the mark. Now Ranjit will going to take the strike, and wait and see how we'll going to take. There is a key player, fantastic all-rounder, get a very good season from the bat and ball, and especially in this season from the bat, especially in the Actors Champions Trophy. This time wanted to go for the sweep shot. They're quickly going for the single, directed, which is attempted by the fielder. No backup, and they're grabbing that opportunity. They completed a valuable couple of runs. With that couple of runs, Kopata moves on to 3 on the board. And some new faces in Young Friends Urva. Manish, the big man down at short extra cover with the jersey number 17. And the Muspikar, some of the new faces we can see in Young Friends Urva. Danush is the one more young bowler at square leg. Here comes next delivery. Top edge, but I think the fielder is underneath it. It's gone. This is a huge wicket for the point of view of a team Young Friends Urva. Ranjit wanted to play his favorite slog sweep shot, but he's got the top edge. Just have a look at the stroke against the pace of Rifan. If you try to play across the line now, looks like it's the ball which is hitting him almost in the handle, near the handle of the bat. Bottom of the bat which comes into play. Just have a look at it in replay. And rightly so. The ball is hitting him and not in the sweet part of the bat. The ball just ballooning up in there. The fielder just running back, getting into the position quickly. And completes a catch. And the wicket number, the first back in the pavilion. It's a huge success for Young Friends Urva. The wicket of the danger man, the man in form, is back in the pavilion. And just have a look at it exactly. It's not in the part what you need to loves to play the shot. Because of a pace and a bounce, defeats the bat of Ranjit. Arshad Bujal in the pick, in the screen. The man won the two-wheeler in a Kudla Premier League. Electric vehicle. As a man of the series of Kudla Premier League. And one more two-wheeler winner back in the hut. Ranjit won the two-wheeler in Actors Champions Trophy. One more big all-rounder came into bat here with a lot of responsibility. Gitesh, the Rifan again surprised him with the quicker one, just passing around his legs. No time to react to that delivery. Even the ball is down the leg stump. But he couldn't manage to get the bat in time because of the extra pace in the ball. 3 for 1. Good start there from Rifan.
for young friend Surwa. Again across the line, played it down to mid-wicket region. They wanted to come back for a second, and comes a throw, and it's a high throw, wide throw. Grabbing that opportunity, slight a bit of hesitation for the second run, but responded. It's a risky one, but a complete couple of runs. A good over there from Rifan, which is comes in, and successful over. After completion of first over, it's Sneha Malamar 5 for 1 after completion of over number 1. You are watching the prestigious Souhard the Trophy 2026, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered. The match number 3 of day number 2 and final day of this cricket tournament will be played between Sri Adimaheshwari Cricketers versus NM Jaipur. And I request all the players of both the teams, kindly request you to please complete the signatures and please cooperate with the organizer. It's a bright and sunny morning. Time is exactly 11 past 45. The hot sun making the condition very hot. Hafiz brought into attack, one more new face in the bowling department of young friend Surwa. Starts with a warm-up delivery down the leg side, but it's well within the reach of the batter. And misjudgment by Sharath Bolangadi, and beaten by the pace. And the dot delivery here. Hafiz, wait and see how this young man will going to grab this opportunity. It's always going to be a big moment for any youngsters to come and perform for the team like young friend Surwa. And especially in the power play overs, it's not an easy job, but it's a big challenge. And wait to see how he'll going to receive the challenge here. Drives that one, but lack of placement, played it straight to the hands of Midan Shahs, the fielder. Down at Azim, the fielder, at short mid-on. No run scored. Once again, lovely delivery. Hafiz absolutely exploiting that condition very well. Maybe he's getting some support from the wind a little bit, going into the left of the commentary box. Getting that line and length so well. Quicker delivery. Beaten by the face. No movement in the negation. Straighter one and quicker one. Slight a bit of movement and the last moment. And here comes the fourth delivery of this over. Once again, edging it down the third man. Ajmal, a fantastic throw came from Ajmal. He just celebrates. But we need to wait for the umpire decision. It's been gone for the TV umpire. Harish Padil referred for the TV umpire. What a pick up and throw there from Ajmal. Once again, have a look at that. His class in the field. Pick that one in his right hand and have a look at that throw. This has been absolutely fantastic. Look like Gitesh is looking in trouble. Always whenever there is a direct hit, definitely the most of the time that the batter is in trouble. A batter is in trouble. Vivek, the umpire, the third umpire, the TV umpire, will go into watch. This is one of the biggest moment of the match. Already lost the wicket of Ranjit very cheaply. And only that we are looking for Gitesh can handle the pressure, can anchor the innings. He can play the sheet ankle role. But direct, it's always going to be a big moment of this innings. Of course, it's a direct hit, and looks like the batter is short of his crease, is gone. Out is a call from the third umpire. What a throw there from Ajmal. Once again, his class infield still remains better and better.
It's 5 for 2 now. Malamar are looking in more trouble. Pratap walks towards the middle, being the captain of the side. How to play captain's knock, responsibility in his shoulder. Yesterday they won the man of the match award for his match-winning knock in Souhard Trophy. The one more dot ball. It's been outstanding bowling from Hafiz so far. The young man grabbing the opportunity with both hands. Lovely line and length. Consistency we can see in his line and length, and accuracy as well as pace in the ball. Really creates a problem. Again, played it nicely in the square leg region. Defeats the two fielders. And Arshad Bajal using his feet to stop that one. Chance of run out. Oh my goodness. One more run out taken place. They wanted to come back for the third. Sharat Bolangadi departs. One more direct it this time. Have a look at the chase from Arshad Bajal. Stops it from his leg and pick up by his partner Dhanush. Return comes. Receives a throw. Santosh Bantwal absolutely disturbed the furniture by hitting that one directly. And Sharat is short of his crease. Wicket number 3 gone. Sneh Malamar looking in more trouble. It's 7 for 3 after completion of over number 2. Outstanding over. Just a couple of runs conceded. That came in the last delivery of the over. Great spell there from Hafiz. 2 run-outs in this over. Only a couple of runs. It's 7 for 3, Sneh Malamar. How to bounce back. And remaining 4 overs very important. The disappointment for Sharat Bolangadi. The man is not really contributed, even getting a lot of chances. After that is the one match he played in UCG cricket ground, the match-winning knock. After that, just missing his the performance so far, Sharat Bolangadi, especially in the big tournaments. Replacing him is the one more big striker of the ball, the man who played high catching innings in the Kudla Premier League with some massive hittings. The one and one day. Rakshak, the batter, came in to bat here. Rakshak, how to save his team along with his captain. And the bowler brought in to attack to bowl the third over. Manish, one more young talent. Typical Pratap's batting. Off the back foot, played it gently down to point region towards Hafiz at mid-off. Ample time for him to complete the single. It's 8 for 3. Over number 3 is in progress. The crowd is the morning itself as they came in a big number here in the Derlakatte cricket ground. The witness high voltage matches. Sneh Malamar, they got a potential. They got a good quality players in the side, but they have to perform. Swings and missed. The typical Rakshak's reaction. They wanted to swing that one against the turn and line. They missed it completely. No run scored. 8 for 3. Third time in this over. Manish. This time he connected one and just wide of the fielder. One bounce into the fence for 4 runs. Dhanush, the man there in the deep square, like behind the square. Just tried to get the catch, but just missing his trying hands. Not a great effort there from the young man, Dhanush. He picked that one, and a difficult chance for fielder Dhanush to get that one. At least he tried to stop the boundary, but welcome boundary comes up here for the team Sneh Malamar. Much required.
You can see it in a replay again and again. Far outside the line of off stump and white signal umpire. One more extra. With that extra score, moves on to 13 for 3. Slowly, the runs which started to come in this over. After that slow start from Sneha Malamar, at the same time they lost the wickets. 3 massive wickets back in the pavilion. Manish swings and again. Lovely delivery, flighted one, but he need to be brave enough. He need to be brave enough to giving flight to the batter like Rakshak. It's always going to be a big gamble. In the monitor, Rashid Baba, one more popular. The player is enjoying this cricket. One more lovely delivery again. Identical mirror display of the previous delivery. Same line and length, and the children started to cover Rashid Baba. In the picture, the most popular I just mentioned about is icon of all children's. It's 13 for 3. I wanted to go for the reverse sweep and unforced error there from Tanush. well, he fell down. But no one realized why. And Arshad Badal has got a big smile in his face saying, what happened? So over number 3 which is completed. After completion of over number 3, it's 14 for 3. Sneha Malamar still searching for the right track, struggling in the middle. And wait and see how well they're going to bounce back here. And the time to change in voice as well as in language. Again, it's over to Gopi. And Gopi looks like Sneha Malamar and young friends are hoping for some nail biter. Both the team has got some good players in the side. But where the Sneha Malamar has struggled in the beginning. They lost 3 wickets, but at the same time, not good enough runs on the board. But even though Gopi, 3 overs remaining, having Pratap and Rakshak, one massive striker of the ball, one is the intelligent cricketer in the middle. Still, Sneha Malamar has got opportunity to bounce back. At least 20 to 25 needed in remaining 18 deliveries if they wanted to give some kind of competition for the team Young Friends Urua. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा फर्स्ट 3 ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ यंग फ्रेंड्स, लेकिन इस वक्त प्रताप और रक्षक मौजूद है और कम से कम 25 से 30 रन जैसा कि आपने फरमाया सतीश बचे हुए 3 ओवर में यहां पर बटोरते हैं बल्लेबाज स्नेहा मालामार के, तो एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। इस बार स्ट्रोक था, इस वक्त बेहतर स्ट्रोक और गेंद इस वक्त लंगोन सीमा रेखा के अंदर पैर के जरिए रोकी गई है बेहतरीन तरीके से। दमदार स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज का, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त उतनी बेहतर फील्डिंग लंगोन फील्डर जो खड़े हुए थे उन्होंने इस वक्त की, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और गेंदबाज तनवीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट प्रताप सामना करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, नॉट कलेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट गॉट अ सिंगल। With a single run, the scoreboard moving up to 16 for the loss of 3 wickets. Runs are hard to come by in the situations for the batsmen of Sneha Malamar. निश्चित रूप से मैंने और सतीश ने फरमाया था कि इस वक्त कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा स्नेहा मालामार को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है, क्योंकि यंग फ्रेंड्स के पास जो बलाढ्य बैटिंग लाइनअप है उसके खिलाफ अगर बल्लेबाजी करनी है इस बार, this time I think he's hit that one and no, in fact it taken just inside the fence by the fielder. Brilliantly taken by the fielder. It was just wide is long gone. और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। देखिए यहाँ पर स्ट्रोक था दमदार, लेकिन इतना दमदार नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और वाइड इस लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लपक लिया गया खूबसूरती के साथ फील्डर द्वारा और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रक्षक की पारी समाप्त, 4था विकेट गिर चुका। स्नेहा मालामार आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। तो 4था विकेट गिर चुका है और जहां तक अगले मैच का सवाल, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, वन मोर गुड मैच इज नॉट कमिंग अप। NM Japu will take over Sri Adi Maheshwari cricketers in the next match, and because of that I request once again all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ NM Japu ತಂಡದ
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 3.3 overs completed, 16 for the loss of 4 wicket. New batsman is now comes out to the middle, number 6 batsman राजेश, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और तनवीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट. ये गेंद स्वीप कर दिया गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. निस्संदेह एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की जरूरत है, न सिर्फ साझेदारी की बल्कि तेज साझेदारी की इस वक्त जरूरत है. क्विक पार्टनरशिप जिस अंग्रेजी में कहते हैं, स्नेहा मलेमार को चाहिए अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है. तो ये गेंद इस बॉल आउट, जस्ट वांटेड टू प्ले द रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड, लेग स्टंप uprooted. One more wicket fallen, Pratap departs and a vital wicket loss for Sneha Malemar. This is an outstanding delivery from the bowler तनवीर, और यहाँ पर देखिए मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे आते हुए, और इस गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहता, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा क्विकर बल्ले को वंचित करते हुए सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई, और लेग स्टंप को उखाड़ कर ले जाते हुए गिल्ली बेल्स डिस्टर्ब होते हुए. वन मोर विकेट फॉलर. द प्रॉब्लम्स आर मोर बिल्डिंग अप नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ स्नेहा मलेमार. नाउ दे आर रियली स्ट्रगलिंग आउट इन द मिडल. 17 for 5. स्टिल 13 balls left in ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स. 13 गेंदें अभी भी बाकी, और ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज अपनी क्षमता एबिलिटी के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए. अश्विन कुमार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज तनवीर. रिवर्स शॉट डेलिकेटली प्लेड बट प्रोटेक्शन आउट देयर, डीप बैक थर्ड मैन, जस्ट अ सिंगल ही गॉट. सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड 4th ओवर हैज बीन केम टू एंड. Sneha Malemar still searching for the right track in this situation against young friends who won the match number 2 of this prestigious cricket tournament, Souhard the trophy season 5 2026. और 2 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं यहाँ पर इन बचे हुए 2 ओवर में स्नेहा मलेमार के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा द फर्स्ट 4 overs बिलोंग्स टू दी बॉलर्स ऑफ यंग फ्रेंड्स हुआ. पहले 4 ओवर में यंग फ्रेंड्स हुआ के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर की है, और गेंदबाजी संभालते हुए अरशद बजाल, और 5वां ओवर स्नेहा मलेमार की पारी में शुरू होता हुआ अश्विन कुमार इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दोपहर के 12 इस वक्त बजते हुए, ठीक 12 इस वक्त दोपहर के बज चुके हैं, और सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इसे बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ते हुए इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, और कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे. सही गेंद घोषित, क्विकर गेंद थी. और जहाँ तक इस बीच सवाल है अगली गेंद का, तो अरशद बचाल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार संतोष बंटवाल काफी चौकन्ने हैं, और पहले सोचा कि गेंद को मोड़ा जाए, अंतिम क्षण में निर्धार बदलते हुए गेंद को स्टीयर करना चाहा. स्टीयर करने में चूके गेंद से जैसे ही क्रीज से एक बैकफुट उन्होंने अपना उठाया, विकेट कीपर संतोष बंटवाल ने अपना काम तमाम किया विकेटों के पीछे बेहतर तरीके से. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, स्टीयर करने में चूके क्रीज से आगे निकले, और बेहतर वर्क संतोष बंटवाल का. स्टंप आउट के रूप में विकेट गिर चुका है. अश्विन कुमार की पारी समाप्त, 6वां विकेट गिर चुका है. स्नेहा मलेमार really struggling out in the middle. It's 18 for 6. Sharan, the number 8 batsman, is now coming out to the middle with lots of responsibilities in this situation. और इस वक्त तो सामना करेंगे अरशद बजाल की गेंदों का. 10 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में, और गेंदबाज अरशद. ये गेंद धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर हल्के से गेंद को पुश कर दिया कवर पॉइंट की दिशा में. डायरेक्ट हिट लग चुका है इस वक्त. जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर का, तो अंपायर इस वक्त इशारा करेंगे जरूर तीसरे अंपायर की ओर. और बेहतर फील्डिंग वहां पर कवर पॉइंट के फील्डर ने की थी. गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया था इस वक्त नॉन स्ट्राइक लाइन पर, और देखना है कि जब निशाना स्टंप्सों पर टकराया तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से थ्रो टकराता हुआ, और तीसरे अंपायर इस वक्त इसे नॉट आउट यहाँ पर घोषित करते हुए. ही सर्वाइव्ड.
and a single run added to the total in the face of extras. 19 for the loss of 6 wickets. दोनों बल्लेबाज राजेश और शरण ना एक एक रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं और दोनों ने भी एक एक गेंद का इस वक्त सामना किया है। और अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता थोड़ी सी शफल होने के बाद, लेकिन चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन सब बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। यह गेंद धीमी गेंद थी, इस वक्त गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त डीप स्क्वायर की दिशा में 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर बल्लेबाज बच नहीं पाए। एक और विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। जोखिम भरा दूसरा रन चुराना चाहता और इस बीच थ्रो पहुंचता हुआ डीप स्क्वायर लेग फील्डर का विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करते हुए तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिया। और देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से हुआ था। जोखिम भरा दूसरा रन था और भुगतान इस वक्त बल्लेबाज को करना पड़ा। बेहतर पिकअप, आसान सा रनआउट इस वक्त होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इंतजार है इस वक्त नंबर 9 बल्लेबाज का। ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. न्यू मैन नंबर 9 बैट्समैन कम्स आउट टू द मिडिल। अश्विन तमन सामना करते हुए ड्राइव कर दिया इस वक्त अरशद की गेंद को लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 for 7, 5 overs completed in their innings. Fifth over has been games today. 21 for the loss of 7 wicket, and now just a last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में स्नेहा माल के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तनवीर अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अश्विन तमन्ना जो कि सपना इस वक्त करने के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल कम्स, पहली गेंद लेकर तनवीर तैयार अश्विन तमन के लिए। ये गेंद ड्राइव किया, दमदार स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, गेंद को रोका गया। दूसरे के लिए बल्लेबाज तौर पर यहाँ पर नजदीकी मामला हो सकता है, एंड दिस इज गॉन इन फैक्ट। अब गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर। 1 more विकेट फॉलन। दूसरा रन जो कि काफी जोखिम भरा साबित हुआ, और बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से दमदार स्ट्रोक था इस वक्त अश्विन तमन का, गैप पर गए थे और बेहतर फील्डिंग वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा, बेहतर थ्रो। और जहां तक सवाल है रनआउट का, तो रनआउट यहाँ पर हो चुका है। एंड और एक बेहतर डिसीजन इस वक्त अंपायर अजमल जोकट ने इस गेंद पर दिया, बिना किसी तीसरे अंपायर की मदद लेते हुए खुद आउट होने घोषित किया, और 22 रनों पर 8वां विकेट गिर चुका है। 22 for 8। त्रिशान नए बल्लेबाज फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, और तनवीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, जबकि सामना करने के लिए तैयार अश्विन तमन्ना। दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड, मिडल स्टंप uprooted. 1 more wicket fallen. Ashwin Taman departs. 9th wicket gone for Sneha Manamar. It's 22 for 9 with just 4 balls left in their innings. तो 9वां विकेट इस वक्त गिर चुका है, और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, हो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। इस श्रृंखला के नियम अनुसार वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 11 बैट्समैन। नंबर 11 बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ किरण नंबर 11 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त वो सामना करेंगे तनवीर की गेंदों का। 3 विकेट तनवीर अब तक प्राप्त कर चुका है, सिर्फ 5 रन प्रदान करते हुए अपने 1.2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज तनवीर। और इस बीच अगले गेंद लेकर तैयार
किरण के लिए रिवर्स शॉट, डेलिकेटली इस वक्त गेंद को मोड़ दिया, गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा, 23 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। त्रिशान जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार तनवीर की गेंदों का। 3 गेंदें इस वक्त बाकी उनकी पारी में और तनवीर bowled out. That's it. Sneha Malemar's innings bundled out for just 23 runs before 2 deliveries of their stipulated quota. That means in 5.4 overs, they were bowled out for 23 runs. Fantastic piece of bowling performance given by the bowlers of Young Friends, and because of that, they restricted the strong batting lineup of Sneha Malemar for just 23 runs. And now the target for them is 24. और अंतिम विकेट जो गिरा था, देखिए किस तरीके से रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चुके थे बल्लेबाज त्रिशान, और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए उनके पैरों के बीच से होते हुए मिड लेग स्टंप पर जा टकराए, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। 24 रनों का लक्ष्य 24 the target for Young Friends, who won their innings now starts now within just a short while. And as far as the required run rate is concerned, exactly 4 runs per over the required run rate for them. 24 they have to score in the stipulated 6 overs. So that means in the stipulated 36 overs they have to score for victory with help of 10 wicket. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर यंग फ्रेंड्स और वह इस 24 रन 24 के लक्ष्य तक पहुँच पाता है या नहीं निर्धारित 6 ओवर में। और यंग फ्रेंड्स और वह की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you so much, Gopi. And I request Shri Adimeshwari cricketers Jappu as well as NM Jappu kindly request you to complete the formalities of signatures. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ಸೂಚನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So this is going to be a great contest now, and even the target, which is not a huge one, the 24 runs are required for the victory, and wait and see how Sneha Malemar will go and fight here with this small total. And the batter is in a terrific form in the season. Santosh Bantwal will go into face against the man in good form in the bat and ball, Ranjit. Here comes the first ball. Just played it nicely into the long on region. Santosh Bantwal is unstoppable in this particular season from the bat. With that in Kudla Premier League is heroic innings in all the matches, especially in that the qualifier number 2 and eliminator, the one-man army. And even his team is ended in a losing side, but everyone appreciated, loves this that innings he played. And is represented for the Red Wings Rangers, Kunjat Bail. Now Arshad Bajal, the man of the series of the Kudla Premier League, will go into face Ranjit. This has been an outstanding shot. Arshad Bajal not really disappointed the spectator of Derlakatte. They came in a huge number, just watch him.
What a shot. First delivery facing and he against the man in good form in the bowling. Of course, they're playing for the same team, KGF Kings, and Arshad Bajal really enjoyed the bowling of Ranjit when he was in the team. But now he is in opposition and Ranjit will not going to enjoy the bowling to Arshad Bajal. Here comes. Again up and over. Beautiful shot. Down to deep longer boundary for 4 runs. He's an hurry. Now ball is not real travel. Ball hits the wall. Yes, it is. Here comes the decision from umpire. The boundary. 6 and a boundary. The width is offered there by Ranjit. Didn't got adequate field for that. And just pays the penalty for that. So 10 in 2. Altogether 11 in 3. And for Arshad Bajal, 10 in 2. Oh, just have one more delivery, which is extra bounce in the relegation. Defeats the bat of Arshad Bajal. Why he has been called as with the nickname of killer of the ball. He loves to go after the bowler. He will not go into watch which bowler he is facing. He just wanted to kill the ball. That's it. Here comes. Oh, this time good comeback. Lovely comeback here by Ranjit. Bowled a slower one. Derlakatte, but incoming bowl for the Arshad Bajal. Couldn't manage to read the slowness of the delivery. Excellent comeback here by Ranjit. But damage is already done. Damage is already done in this over by Arshad Bajal. 10 in 4 now. From his bat. Oh, it's a lovely shot. Have a look at the sound. He clearing that clear ground with a clean hit, as clean as a whistle. Outstanding struck. Expensive over which is comes in. Just have a look at the stroke, that one. Absolutely fantastic. Up and over. And ball is disappeared out of the park. When ball is in an arc, he will going to disappear the ball out of the park. This has been outstanding struck. Again you can see there from Arshad Bajal. Picking that line and then so quickly. And have a look at the immense power in that shot. And scoreboard jumps into 17 on the board. 7 to get. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂಥ ಶ್ರೀ ಆದಿಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ ಮತ್ತು NM ಜಪ್ ತಂಡದವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. Santosh Bantal will go in to take the strike. Sharan, the bowler. Left arm round the wicket. Pushes the ball gently down to point region for a easy single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 18 without loss of any wicket. Now Arshad Bajal back on strike. Again down the leg side, but well with the reach of the batter. One more dot ball here from the first dot delivery from Sharan. And scoreboard remains on 18 on the board. Just 6 more runs needed for the victory. The Sneha Malamar, they are absolutely disappointed. The batting performance which is not up to the mark. Sharan bowls. Over the wicket bowls. Going to be a punishable. Not from the umpire. Umpire says it's a fair delivery, but that bowler himself saying it's a wide delivery. The bowler himself saying that's a wide delivery, so that no question of asking for the third umpire, I must say. The bowler came right in front of umpire, so one more extra. Difficult for the umpire to watch if we are right in front. Here comes Saran. Swings and miss, swings and miss. Saran just tried to get the ball around the legs of the batter. Arshad Bajal is batting on 16. They faced 7 deliveries so far. Again, it's going to be one more delivery which is called as a wide. The scoreboard moves on to now 20. Just 4 needed for the victory. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ NM ಜಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Again wanted to go for the expansive drive, doesn't get the proper connection.
No connection at all in the negation. Deflected from his leg. One more single in the form of leg bye. 21 3 needed. Santosh Bantwal has got opportunity to finish the match. 3 needed for the victory. Sharan balls to Santosh. Wanted to go for switch it, one of his favorite. And you can't get anyone if it's a switch it is concerned. How Santosh Bantwal is playing. So easy for him, just like a left-hand batter hitting the ball. Once again, he wanted to continue, but this time wicketkeeper missed it. And just a single. They wanted to come back for the second, and they will made it quite easily in the end. Couple of runs, scores are level. Just one needed for the victory, and over which is comes to an end. After completion of over number 2, it's 23 without loss of any wicket. Just one needed for the victory. The 4 minutes left in this game. Now again, time for the selfie. And two young boys once again walk towards pitch, taking the selfie of Arshad Bajal, and he is finding it difficult to get the camera. Maybe he's taken the mobile from his father or mom, I don't know. But they are very happy. They are very happy. And Santosh Bantwal wants to run, but not Arshad Bajal. It doesn't want to get the runs, such kind of runs. They don't want, just he wanted to finish the match with the one big shots. That's what he wanted. Trishan. This time Santosh Bantwal is not interested. And he's saying that when I am interested, you are not interested, then why to go for the run? You just get the run from the bat. We don't want any leg buys and buys. Here comes Trishan. Swings and missed. I think it's got a bat onto that. And ball running down to find leg boundary for 4 runs. And they finished the match in a style with the boundary. Young friends Surua, they finished the match too early. In 2.2 deliveries, they got 23. Congratulations, young friends Surua. Hard luck, Sneha Malemar. It's not good enough for the runs to win this match. And the next match, Adi Maheshwari Cricketers versus NM Cricketers Japu, one more big match. Again, now more children are gathering here. Every part of the ground. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Now Arshad Bajal is been surrounded by the children. This is what is popularity. And that was really memorizing that the 90s decades in international cricket. The same kind scenario. No protection for the spectators. They are very free to come and enjoy with their favorite players. There's such kind of scenario here in the Derlakatte cricket ground. Arshad Bajal is been surrounded by the childrens, but no bodyguards for Arshad Bajal. Absolutely. Maybe then in future they can have some Z securities to prevent from attack from the children. Well, wait and see. And now is the time to
The man of the match. K19M2474 ಈ ಒಂದು ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ವೇಯಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಲು ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಲಕರು ಆ ಕಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. 2474 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುನೀರ್ ಬಂಡಶಾಲೆ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುನೀರ್ ಬಂಡಶಾಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ವೀರ್, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ತನ್ವೀರ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತನ್ವೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 1.4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ 6 ರನ್ನಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ತನ್ವೀರ್. So man of the match award, which is presented to Tanveer by our chief guest Munir. The man of the match award with the very attractive gift, and even the gift voucher which is presented for Tanveer for his fantastic bowling performance. Our losing team captain Sneha Malimar ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ K19M2474 K19M2474 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇತರ ವಾಹನ ತೆಗೆಯಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. K19M2474 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಲೆವಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ. So thank you so much Satish Salian sir and Gopi sir for your entertaining commentary. And we are heading to the match number 3 of day number 2 of this prestigious Souhard Trophy 2026, the season 5. I request team Sri Adimaheshwari Jeppu and NM Jeppu please start the play immediately. ಎರಡು ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಬೀರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಬೀರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆರ್ಗನೈಸರ್
ಸೊ ಎಸ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ರವರ ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು. 12 12:33ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಬೀರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕೆಬೀರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ 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 ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಲ್ ಚೆಕ್.
ಎಸ್ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾನಿಚ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ NM Cricketers Jappu please immediately report to the mic point for the tossing ceremony. ಸೊ ಎಸ್ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾನಿಚ್ಮಿಕೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಬರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನಿಚ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ NM ಜಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. If you are late for the tossing ceremony, we are going to hand over the toss to the opposition team. They're going to be automatically winning the toss. So I request captain of NM Jappu please immediately report to the mic point. ಸೊ ಎಸ್ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಮಗಾಗಿ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸಿಗ್ನೇಚರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಜನರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ನಾನಿಚ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಕೇಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. Hello, check. After winning the toss, captain of NM Jaipur Mangalore elected to field first against Adi Maheshwari Jaipur. And we are seeing Devik Prabhu coming into the middle for Adi Maheshwari Jaipur along with Saurav. Two good openers in the middle for
Adimeshwari Jaipur. On the other hand, NM Jaipur Mangalore, they're missing some key names in the absence of their marquee players. So yes, two umpires are ready for the match number 3 of day number 2 of this prestigious Souhard Trophy 2026. Devik Prabhu to take on the strikers and Saurav at the non-strikers end. And it's going to be Captain Atif starting the proceedings here for team NM Jaipur Mangalore. And if you look at the lineup of NM Jaipur Mangalore, they're also having so yes, after the Azan break, we are once again resuming the action. So it's a green signal to start the player from the main umpire, Ranjesh Uchil, along with the square leg umpire, Vivek Challenge Bowler. Two fantastic on-field umpires. And we also got the third and fourth umpire here in the commentary box. We have got one of the man with more than 25 years of experience in umpiring duties, Harish Padil. Along with him, one more highly qualified and experienced umpire, Azmal Jokate as well. And Devik Prabhu at the strikers end, Saurav on the non-strike. Atif starting the proceedings here for team NM Jaipur Mangalore. And once again we are seeing the man, the iconic star player of the side NM Jaipur. Oh, there's a direct hit which is coming, but I think lucky for Saurav, he survived. Bat which is landed in time. Behind the wickets we are seeing Sadiq NM, one of the names which is very popular. Every cricket lovers want to see him in action. Oh, that's a fantastic delivery. Excellent collection as well there from the wicketkeeper Sadiq. There's a fantastic start here for NM Jaipur Mangalore, bowling 2 consecutive dot deliveries. Atif once again takes his time against Devik Prabhu. Devik Prabhu, the man who started his career with Durga Konchadi, is a fantastic cricketer. A good all-rounder, not just in the batting department, in the bowling department as well. Devik Prabhu is a fantastic player. And Saurav has got the strikers in. Strike rotated from Devik.
Souhard at the facing end. So far 3 balls which is completed, 1 runs on the board. And it's Souhard at the facing end. Atif balls, brilliant delivery, ball which is played into the hands of Arif, and it's a misfielding in the fielding department inside the power play. Once you're standing at the boundary line as a boundary line fielder and making that mistake, the ball which is deflected of that unevenness, and Arif mistiming as well. So total misjudgment ball which is crossing the boundary for 4 runs. Oh, that's a good collection there from the fielder, the man Khalid NM. One of the pillars behind this successful team. Oh, fantastic delivery, fantastic delivery. Ball which is going along the carpet, racing away from the wickets. Beats the bat of Souhard. Couldn't manage to get any runs of that last delivery. So scoreboard after the completion of first over standing at 5 on the board. 5 runs without any wicket lost for Adimeshwari Jappu. In this 6 overs match, will they be able to get anything near to 40 plus? Because in the previous match we saw team Sneha Malemar couldn't manage to get in a big total on the board. They had a lot of difficulty scoring runs against young friend Surwa. Ball's brilliant delivery, ball which is going into the hands of Arif. Tawfiq it's in fact. So Tawfiq takes a catch perfectly. Doesn't make any mistake in the fielding department. One of the finest fielders is a wicket keeper as well. He can do multiple jobs for the team and takes the catch perfectly. And for the next match, I request a team matrix against Torpedoes Khana. The 2 big names. One name team matrix, which is had a lot of success in the Mangalore local pool division as well. Now they are entering in the Mangalore pool division as well, among the top 8 teams. And on the opposition, we are having no introduction needed. Torpedoes Khana, one of the successful teams this season. One of the most successful teams this season. So 5 for the loss of 1 wicket. So the first wicket departed. Daivik back in the pavilion. And the new batsman into the middle, Rizwan. The man who is played, I think one of the most underrated players, Rizwan. He's got a fantastic bowling as well as batting. Oh, just swung that one. And Rizwan says it's coming off from the bat. But Vivek, challenge bowler, has risen his finger, saying it's a plumb in front of the wicket. Appeal was loud there from the bowlers and the fielders. And straight away finger risen. And wicket number 2 which is departed. This is going to be a heartbreaking wicket for Adimeshwari Jappu. This is a big setback for the team Adimeshwari Jappu. Losing Rizwan for a golden duck. NM Jappu, they are definitely trying and getting success very early in this innings. So Hussaif starting the proceedings fantastically well for the team. NM Jappu Mangalore is an outstanding bowling so far from Hussaif. 2 balls and 2 wickets on a hat-trick opportunity for Hussaif. Hussaif balls.
Oh, fantastic delivery. This time he bowled it away from the batsman. And the ball which is going straight away into the hands of wicketkeeper Sadiq. And Sadiq has been doing great in the wicket-keeping department. Fantastic collections, on-point collections. Doesn't make any mistake at all. No white is a decision from the third umpire. It's a fair delivery. So far, fantastic bowling from Usaif. No runs conceded at all. Ball which is going down the leg side. This is going to be the first runs in this over in the form of extra. Usaif giving the runs away. So 6 for the loss of 2 wickets for Adimeshwari Jeppu. This has been a very quiet afternoon. A ball which is going into the hands of Rashid Baba. Couldn't manage to collect it perfectly. Batters completing for that run very quickly. So they got extras there. So white +1, 2 runs added in this delivery. Ajay just swept the ball. He found the gap. The ball which is racing, that's going like a tracer bullet. The quick outfield doing the job behind the wicketkeeper. The backward outfield is very quick. The fine leg and that third man region, once he can manage to clear that 30-yard circle behind the wicketkeeper, the ball is going to race to the fence, and that's what Ajay is taking the full advantage of. There's a fantastic so Saurav is a man now. Again Saurav in that same occasion, but this time I think fielders are managing to stop that one right in front of the boundary line maybe. So 3 runs added into the scoreboard. Ajay gets the strikers in. Wonderful stop there from Rashid Baba with the footwork. He manages to get the foot in line of the delivery and certainly saved a single for the team, because it would have been a clear boundary if Rashid Baba hadn't sprinted it across and chased it and stopped it. So good fielding showcase from Rashid Baba. Oh, just played nicely off the toes. Oh, directed would have sent him. He just had given up all his hope, thinking that the ball is going to hit the stumps. He wasn't even trying to cover to the danger end. So over completed, 2 overs which is completed. Even though Usaif got a wickets, 2 wickets in the first 2 deliveries, conceded 11 runs in this over. You can just imagine, in the last 3 deliveries, he conceded 11 runs. In the first 3 deliveries, he hadn't conceded any runs. He had only got 2 wickets in the first 3 deliveries, but in the last 3 deliveries, this is why the mindset, the experience is required. Scoreboard is having 16 for the loss of 2 wickets. 16 on the board for the loss of 2 wickets, and it looks like they're continuing with Atif for the over number 3. Atif, 1 bowler can bowl 2 overs, and 5 bowlers need to be used in this particular cricket tournament. Souhard the trophy, Derlakatte. Derlakatte Friend Circle. Every year they are conducting such a great tournament, one of the highest crowd pulling tournament in Ullal, in underarm cricket. There's a festival atmosphere for 2 days in this green ground, Derlakatte. So far we are progressing with the match number 3. Adimeshwari Jeppu taking against NM Jeppu. Both the teams coming from the same area. They know each other very well, the teams. And a fantastic delivery coming in from Atif. Balls a dotted delivery.
Ajay at the facing end. Saurav on the wrong strike. Saurav has played a brilliant innings. 5 balls, 11 is scored so far. So the ball which is going into the hands of Arif. He collects it perfectly. Doesn't make any mistake in the fielding department. Ajay, one of the most powerful strikers. On the other hand, Saurav, very calm and collective striker. Is very technically clean-sounded batsman. Oh, there's a big appeal. Wicketkeeper is very excited, but bowler doesn't seem that much of excitement from Atif. So no signal came from the umpire. It means, in fact, from the bat, yes. So that run added into the account of the batsman. Oh, struck that one pretty hard. And there's no protection stopping that one from crossing the fence. This is the reason why he is one of the most hard-hitting batsmen in the side of Adimeshwari Jaipur. Fantastic struck that along the carpet delivery. Nothing much wrong with that delivery. Into the middle stump line. And he just dispatches it along the carpet as well. Into that cow corner region for a 4. So boundary added. Scoreboard jumps up to 22 for the loss of 2 wickets. This is a good start here from the batters. They're really putting a good total on the board for the 3rd wicket. After they lost that 2 wickets very quickly. For 5 runs, they lost 2 wickets. And then they have been just playing a good innings. Oh, struck that one ball which is coming into the hands of the fielder. He just taken a quick throw. Khalid NM. Even at this age, it shows the fitness level is very high. The fitness is required at every age because without the fitness level, you cannot play in underarm cricket especially. Even the fielding department, ball which is coming all the time along the carpet, you need to be very quick and agile. So 3 overs completed, 23 for the loss of 2 valuable wickets here for Adimeshwari Jaipur. NM Jaipur, they decided to bowl first, and so far the decision has been not so much justified from the bowlers. And now this is a fantastic over which has been brought into the attack. Ayaz, one of the magicians behind the ball, is a clever operator. So 23 for the loss of 2 wickets. Ayaz starts the proceedings here. Oh, struck that one in the air. Oh, the fielder couldn't manage to reach that one in time. Mansoor Arkana makes a mistake in the fielding department. And in the meantime, they collected that ball. The batters crossing in for 3 runs. They managed to get in 3 runs between the wicket. Quick running here from Ajay and Saurav. Fantastic running in between the wicket. 26 on the board for the loss of 2 wickets. Once again, Ayaz. Oh, that's a brilliant delivery coming in from Ayaz. Almost confuses the batsman. It seemed like he's trying to bowl that leg cutter, but the ball which is going straight into that, just inside the tram line over that half box in the leg side. Oh, this is once again brilliant delivery used from Ayaz. But umpire says it's going far away on the leg side. So wide has been called. So far 3.3 overs play, which is so yes, he got a leg by single, and scoreboard which is having one more addition as well. Again, just the top edge of the bat. Ayaz, this is the beauty of Ayaz. He can turn the ball to both ways, and this pitch has been favoring
The quick turning bowlers, even Shreyas in yesterday's last match getting 3 wickets in that 2 overs spell, bowled a brilliant over. Oh, that's a fantastic delivery. That's what I'm talking about. The quick turning bowlers are very difficult to pick here for the batters. And once again, I request Team Matrix and Torpedoes Kana, all the players, please complete the signing procedure here at the commentary box. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಯಾಜ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ Ajay. Ajay, who scored 11 runs, is back into the pavilion. If he's 10 deliveries and scored valuable 11 runs, because scoring runs in the afternoon time not going to be such a easy job, especially in the first innings. Whenever you are setting a big total on the board, if you lose a wicket, it's going to be devastating for you. So they need to play some careful cricket. So just pushes the ball and the directed would have sent him back to the pavilion. Again, one more opportunity which is missed. So that over completed. So Kishan is a new man in the middle. Played his first ball as a dotted one. Couldn't manage to get a run. So 30 for the loss of 3 wickets after the completion of 4 overs. So the ball which is going into the hands of bowler Faisal brought into the attack. So Faisal balls, brilliant delivery, just swept the ball into that deep point region. Mansoor Arkana comes and collects it perfectly. Doesn't give any room for more than a single. Oh, perfect delivery. No hesitation for the umpires to raise his finger. Umpire raises his finger and batsman also without any hesitation walking back to the pavilion, because that one going to be a clean plumb in front of the wicket. Faisal bowling a brilliant delivery. This is what required here. Once the other bowlers are conceding runs, you need to cover that in the later overs. Along the carpet, right into the leg stump and middle stump. Ball which is caught surprisingly for Kishan. Kishan is back for a golden duck. After facing 2 deliveries, couldn't manage to open his account. So the new batsman into the middle, Nishan. So Nishan in the middle.
So far, it's been a very quiet innings from the batters of Adimeshwari Jeppu. There haven't been any sixes in this innings. I think only 2 boundaries which came from the bat of... in fact, 3 boundaries. 1 scored from Ajay, 2 scored from Saurav. Saurav still batting in the middle. He came in as an opener and still is been batting in the middle for team Adimeshwari Jeppu, putting runs on the board in every deliveries. He scored 14 so far from the 10 deliveries he has faced. Last 2 more remaining in this over from Faisal. And the new batsman Nishan done his job perfectly, giving the strike to the well-settled batsman Saurav. So far 4.4 overs proceedings are complete. This is a penultimate over which is in progress. Faisal, brilliant bowling again. Arif collects it perfectly. It's a score which is having 33 after the completion of 4.5 overs. Last 1 more remaining in this penultimate over. Faisal, so far very, very economical over. Getting the runs under control for NM Jeppu. There's a fantastic stroke. Struck that one. Fielder needs to collect that one perfectly, and Tawfiq doesn't make any mistakes in the fielding department. So collected the ball perfectly. And for the last over, they're going to require 1 more new bowler to bowl the last over. 34 for the loss of 4 wickets. So Tawfiq being introduced for the last over. Tawfiq, he can bowl as well as a part-time bowler. Tawfiq takes his time, bowls. A wide which is coming far away from the off-stump line of the left-handed batsman Nishan. So he rightly left that delivery. So scoreboard is having 35 runs. Once again Tawfiq bowls. Ball which is going again away from that off stump for the left-handed batsman Nishan. Again they're getting 1 more extra. So scoreboard is having 36 runs now. Oh, the ball which is going again away from the wickets. 1 more extra. This is struggling struggle which is continues again for Tawfiq. 3 runs conceded without any deliveries. 3 in the form of white balls. Oh, struck that one pretty hard into the hands of Khalid. He takes the catch perfectly. So the left-handed Nishan is walking back to pavilion. So scoreboard which is having a total of 37 on the board. And 1 more wicket is departed here for team Adimeshwari Jeppu. So Kiran has been sent into the bowling mark. In fact, for the batting, Kiran is a fantastic bowler. We've seen him in many tournaments with his outstanding cutters, always bowling along the carpet.
Here is being given the opportunity to bat in the tail end position. So Kiran at the facing end, and Taufik starts once again. He needs to continue the proceedings. So far he has conceded 3 runs and got a wicket as well, but he bowled 3 extras, so he would need to control that extras. Now the right-handed batsman at the facing end, Taufik once again comes right arm over the wicket and bowls. That's a brilliant delivery coming in from Taufik. Now this is a testing time here for Taufik, because Saurav, one of the well-settled batsmen, is at the facing end. How he's going to bowl is going to be key. 38 already in the scoreboard for Adimeshwari Jappu. Still 4 balls remaining in this innings for Adimeshwari Jappu to score runs. Ball which is going down the leg side. Wide ball again from Taufik. Plenty of extras in this over. He's only conceded 1 run and bowled 4 extras. Taufik balls. This is a good delivery. Right into the wicket to wicket line. And ball which is crossing the fence as well for 4 runs. Now the scoreboard is having 43 runs with that. And the time which is up for NM Jappu Mangalore. They need to call one fielder inside the 30-yard circle. Now this is a big punishment for NM Jappu. Already they are struggling with the bowling. In this over they have conceded 9 runs with still 3 balls remaining in this over. In just 3 deliveries, conceding 9 runs means this turning out to be an expensive over here for NM Jappu and Adimeshwari. They are all here for it. They want to get as much as runs. Oh, what a stroke that is! Struck it perfectly. Delicately done that. What a timing. Uses that perfect full toss delivery. You can watch it in the replay as well. This is an absolutely terrific innings played from the bat of Saurav. Full toss and dispatches it. What a eloquent timing, exclusive timing from the bat of Saurav. More than the power, I think the timing which is required to play that stroke is immense. Because reading the line and the speed of the delivery is very much required here for the batsman. Oh, fantastic delivery this time. And Saurav doesn't want to get in a single because he knows he can go for the big ones. Already scoreboard is having 47. In this day number 2, we had the 49 being the target in the first match. And that to chase Fry KCCR Kadri. So the chase is possible here in this ground. Swings ball which is going into the hands of short square leg fielder Arif. He collects it perfectly. And that's it. Innings number 1 which is completed. 48 on the board. 49 again is the target in this match number 3 as well. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಕೇವಲ 1 ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. I request all the players of Torpedoes Khana please immediately report here for the signing procedure.
So changes here in the commentary box. I'm once again delighted to welcome one of the most lovable voice. Everyone is waiting for his voice in the commentary box. I heartily welcome Gopi sir into the microphone in national language Hindi. Over to Gopi sir. धन्यवाद रशीद के बेहतर आंखों देखा आपने सुना है। और जहां तक सवाल है इस वक्त टारगेट का, तो एनएम के लिए लक्ष्य है इस वक्त 49 रनों का। नो बॉल का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद नो बॉल बाय द बॉलर तौफीक और रशीद बाबा। आरंभिक बल्लेबाज जय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। फ्री हिट गेंद, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अजय की गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए इनटू द कमेंटेटर बॉक्स। आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक केम टू द बैट ऑफ तौफीक। थोड़ा सा विड्थ था, और हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड, एंड ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। 6 रनों के साथ शुरुआत कर चुके हैं तौफीक, और इस छक्के के साथ रनों का सिलसिला बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर। फ्री हिट गेंद थी, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा तौफीक ने, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 on the board. This is the match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Souhard, the trophy season 2026 is now progressing here. This time again straight to fielder extra cover, but came after first bounce. और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त नहीं मिले। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। जय गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। तौफीक इस वक्त सामना करते हुए। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, और अगली गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, 6 number 2 in this over. Tawfiq looking on fire. Fantastically struck. This time he just hit that one much straighter, and he just got that one right from the middle of the bat. 14 on the board. तौफीक इस वक्त अपने इरादों को बुलंद कर चुके हैं। वो जानते हैं इस वक्त उनके टीम को एक बेहतर शुरुआत देनी है, और पावर प्ले का फायदा यहाँ पर उठाना है। और 2 छक्के इस ओवर में जड़ चुके हैं, और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 15 रन पर। 15 on the board टू लूज एन विकेट, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद दिस टाइम once again hit that one. This time chance, this could be the chance. No, in fact I think it might been stopped brilliantly by the fielder inside the fence. बेहतर स्टॉप इस वक्त करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर, और निश्चित रूप से छक्का इस वक्त बचाते हैं। और देखिए असल में यहाँ पर क्या हुआ था। well, look at this, the replay. This hit that one hard and high, and brilliantly saved by the fielder. This is an outstanding save. मौका जरूर था कैच आउट का, लेकिन कैच लपकने में सफल, लेकिन बेहतर तरीके से गेंद को रोका इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर। और रनों का जहां तक सवाल है, रन नहीं मिलेंगे। द स्कोर स्टेज एट 16 विदाउट लॉस, और सामना करते हुए इस वक्त रशीद बाबा, और गेंदबाज यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, और ओवर की समाप्ति। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। आफ्टर फर्स्ट ओवर दिस इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक स्टार्ट फॉर एनएम जयपुर। 16 on the board after completion of first over, all because of this man Tawfiq, who hit 13 runs with just 5 deliveries with a strike rate of exactly 280, और इस वक्त 16 रन के साथ बेहतरीन शुरुआत एनएम जयपुर यहाँ पर कर चुका है। अब लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन। 49 का टारगेट था, that means 49 minus 16, 33 more runs now they have to score for victory, remaining 30 deliveries. That means in remaining 5 overs, and the required run rate is now straight away coming down to exactly 6.60 runs per over.
30 गेंदें बाकी, 33 रन चाहिए विजय के लिए। सर्व 10 विकेट सुरक्षित। और देखिए छक्के को इस वक्त दिखाया जा रहा है तो तौफीक ने लगाया था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से। और गेंदबाज रिजवान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और तौफीक का सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ और रिजवान ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। इस बार lofted and this time I think a clear defense. Yes it does. One bounce into the fence for a boundary. He is looking right on top in this situation. तौफीक और यहाँ पर देखिए लगभग फ्लैटर वर्जन पर गेंद को उछाला गया था और गेंद इस वक्त डिस्पैच होते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर हो चुके 4 रनों के लिए पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज रिजवान इस बार नॉट करते दैट वन प्रॉपरली। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और रिजवान अपनी ओर के अगले गेंद लेकर तैयार। तौफीक के लिए ड्राइव किया मिड ऑन पर रन्स नहीं मिलेंगे। मिसफील्ड लेकिन रन्स लेना नहीं चाहा इस वक्त तौफीक ने। तौफीक स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं इस वक्त, इसलिए राशिद बाबा को उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से वापस भेजा और स्कोर तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रिजवान again square of the wicket, not quite mid wicket. In fact कम से कम 1 रन जरूर मिलेगा। फील्डर गेंद तक पहुंचे, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला राशिद बाबा के लिए, लेकिन दूसरा रन यहां पर पोर्ट करने में सफल। Fantastic running between the wicket, couple of runs added to the total. ಅಲ್ಲಿ NM ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ऑफिशियल हाड़े दाखिलिसಬೇಕಾಗಿ विनंती, नोंदाಯಿಸಬೇಕಾಗಿ विनंती. रिजवान तौफीक के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। ना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार तौफीक का स्ट्रोक खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 7 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन द 5 डिलीवरी सो फार इन दिस फर्स्ट ओवर। और रिजवान पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद बेहतर कमबैक इस वक्त कर चुके हैं। बाद के 4 गेंदों में गेंदबाज रिजवान अंतिम गेंद राशिद बाबा के लिए, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद राशिद बाबा के लिए, बाबा का स्ट्रोक, इट्स गॉन मैनी अ माइल्स, इट्स अ बिगी टू एंड द ओवर नंबर 2 and NM Jappu looking right on top with this 6. So just have a look at this in the replay, just standard delivered and he just got that one for a maximum. Outstanding struck. Now with this 6 I must say NM Jappu looking right on top. 29 on the board, 2 overs completed. पहले ओवर में 15 रन बने, 16 रन बने, दूसरे ओवर में 13 रन बने और इन 2 ओवर की बदौलत था। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को राशिद बाबा ने उछाला था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर लंबे छक्के के लिए। 29 without loss after completion of 2 overs and really NM Jappu looking right on top in this situation. So just 20 runs more now they have to score for victory in remaining 4 overs and the straight away required run rate is now coming down to exactly 5 runs per over. तो 2 पावर प्ले ओवर का बेहतरीन फायदा यहाँ पर उठा चुके हैं बल्लेबाज NM Jappu के, खासकर तौफीक और रशीद बाबा। खासकर तौफीक जो कि 10 गेंदों पर 20 रन बटोर चुके हैं और NM क्रिकेटर्स इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ। गेंदबाजी शुरू करते हुए किरण और निश्चित रूप से यहाँ पर श्री आदि महेश्वरी के बल्लेबाजों को गेंदबाजों को इस वक्त कमबैक करना है, तो यहाँ पर एक घातक गेंदबाजी करनी होगी बचे हुए 4 ओवर में। और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। गेंदबाज किरण ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तौफीक के लिए यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी इस वक्त और वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर। 30 ऑन द बोर्ड। NM Jappu progressing along nicely in this situation, just 19 to get. रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त।
परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद और रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। इसको बोस्ट है 30 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, वन मोर गुड डिलीवरी, and this is turning out to be a first good over so far in Sri Adi Maheshwari cricketers point of view. Just a single run scored in the first 2 deliveries in the face of wide. और गेंदबाज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। किरण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए तौफीक के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त तैयार। यह गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 30 रनों पर, 30 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेस किया फॉर एनएम जयपुर। जब आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स ने 48 रन जोड़े थे, 49 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा था, तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि एनएम जयपुर के बल्लेबाज दबाव में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब उनकी पारी की शुरुआत हुई तो तौफीक के चौके और छक्कों की बौछार लगाते हुए लक्ष्य को काफ़ी आसान इस वक्त बना चुके हैं। उनका अच्छा साथ देते हुए इस वक्त राशिद बाबा 1 रन का इजाफा स्वीप कर दिया इस वक्त तौफीक ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर, 31 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर और अब तक का गेंदबाज किरण का साबित हो चुका है। और इस बीच किरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। राशिद बाबा के लिए जस्ट कॉन्फर्म माइट ही नॉट सक्सीडेड, बेटर वन फ्रॉम द बॉर्डर, जस्ट केप्ट द लास्ट मोमेंट पास टू बैट्समैन बिलो ऑफ हिज बैट और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। रन्स नहीं मिलेंगे। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज किरण इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार रहा। दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार राशिद बाबा का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर, शायद कोई फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है लेकिन गेंद को रोकने में असफल। डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वाइड लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, जीत और कोशिश जरूर की इस वक्त गेंद को रोकने की। और यहाँ पर देखिए राशिद बाबा का स्ट्रोक एब्सोल्युटली इनटू द गैप एज वेल और गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में असफल। खुद अपने संतुलन खो बैठकर गिर पड़े इस वक्त और यहाँ पर चौका प्रदान करते हुए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर, 35 ऑन द बोर्ड। 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 35 विदाउट लॉस। राशिद बाबा का स्ट्रोक इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरीके से उन्होंने गेंद को खेला था। सफवान जो फील्डर थे, जो दौड़ कर आए, गेंद तक लपकना चाहा, गेंद को पकड़ना चाहा लेकिन नाकामयाब और चौका इस वक्त प्रदान करते हुए। सिर्फ 14 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल बाकी। नाउ जस्ट 14 to get in remaining 18 balls and just talking about the next match, one more good match is now coming up. Torpedoes Khana will take over team matrix. Because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त तौफीक जो कि बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए और इस वक्त दोनों बल्लेबाज पानी ग्रहण करते हुए। राशिद बाबा और तौफीक तो यहाँ पर एक नन्ना मुन्ना बच्चा जो कि इस वक्त सेल्फी लेता हुआ राशिद बाबा के साथ। तो ये बात ये दर्शाता है कि राशिद बाबा अंडरआर्म क्रिकेट में कितनी जनप्रियता यहाँ पर रखते हैं। तो इस वक्त आजकल अंडरआर्म क्रिकेट के लगभग सारे तारा खिलाड़ी, स्टार प्लेयर काफ़ी जनप्रियता रखते हैं और इसका एक उदाहरण हमने देखा यहाँ पर। सेल्फी जो कि नन्हा सा बच्चा खींचता हुआ बल्लेबाज राशिद बाबा के साथ। चौथा ओवर शुरू होता हुआ, 4th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। तौफीक का सामना करते हुए 14 to get from 18 deliveries। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर and it's gone, beat the fielder, third man gone over the fence for a boundary। 5 wides added to the total and with that 5 wide runs ऐसा कहना पड़ेगा एनएम जयपुर विजय के और निकट यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को फेंका था ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर कोई वहां पर मौजूद नहीं, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर थे लेकिन गेंद तक पहुंचने में सफल। 40 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड अगेन, जस्ट सर्चिंग फॉर हिज राइट लेंथ इन लाइन। कौशिक का जो गेंदबाज हैं 6 रन वाइड के रूप में प्रदान कर चुके हैं, 41। और this time driven that one but straight to fielder, short mid wicket, can't got any run for that stroke।
41 रनों पर स्कोर बोर्ड यहाँ पर रुक चुका है। और कौशिक अगली गेंद, यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड। 42 ऑन द बोर्ड। अपने मंजिल की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त एनएम जप्पू और एक बेहतरीन आरंभिक साझेदारी इस वक्त जमते हुए रशीद बाबा और तौफीक के बीच। कौशिक इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बार गेंद को उछाला जरूर है, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। तो तौफीक के बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है। इस बार स्ट्रोक को उछाला था जरूर, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और यहाँ पर देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, गेंद को इस वक्त उछाला गया था और आखिरकार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। फर्स्ट विकेट लॉस्ट आफ्टर बीइंग अ 41 रन ओपनिंग स्टैंड। This partnership has been broken in the face of Tawfiq, out for 21 of 16 deliveries. Fantastic innings came to an end from him. And NM Jaipur lose their first wicket. It's 42 for 1. Torpedoes Khana ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तुलने बल्लेबाज खालिद जो कि काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त एनएम जप्पू की ओर से क्रीज पर मौजूद और हम अपने होम ग्राउंड पर इस वक्त खेलते हुए खालिद, और देख रही है कि अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए किस तरीके का प्रदर्शन वो यहाँ पर देते। काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी, काफ़ी वर्षों से एनएम जप्पू का प्रतिनिधित्व करते हुए। कॉटन बॉल फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिस्मिसल फॉर हिम। गेंद को मोड़ना चाहा था, लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद टॉप एज पर टकराई और बैक टू द बॉलर के दिशा में पहुंची और कौशिक का कॉटन बॉल यहां पर लपकते हुए पहले गेंद पर खालिद का विकेट गिर चुका है। खालिद जो कि प्रमोट किए गए थे नंबर 3 स्पॉट पर, लेकिन इस बार अपनी पहली गेंद पर विकेट खोकर पेविलियन वापस लौटते हुए। टॉप एज और आसानी के साथ लंबे कद के खिलाड़ी कौशिक ने इस कॉटन बॉल को लपका फॉलो थ्रू में। 3.3 overs bowled, 7 runs to get from 9 deliveries. The equation stands for NM Jaipur. दोपहर के 1:40 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है यहाँ पर और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। मंसूर सीनियर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज कौशिक की गेंद, ये बार मंसूर के लिए खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई गेंद को रोकने में सफल रहे इस वक्त फील्डर। काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद स्पिन बल्लेबाज के पास मौका, 2 रन यहाँ पर देखना पड़ेगा, काफी नजदीकी मामला हो सकता है। आई थिंक इट माइट बी इन ट्रबल, तो यहाँ पर आउट दे चुके हैं अंपायर और बल्लेबाज रशीद बाबा की पारी पर पर्दा गिर चुका है। जोखिम भरा दूसरा रन चुराना चाहता, देखिए यहाँ पर थ्रो पहुंचा था और बेहतर पिकअप गेंदबाज द्वारा और दिस एन एब्सोल्युटली शॉट फेल आउट ऑफ द क्रीज। बल्ला हवे में था, द बैट वाज इन द एयर जब विकेट तब गेंदबाज ने थ्रो रिसीव करते हुए विकेट चटकाए थे। 1 run एडेड एंड अ विकेट लॉस्ट। 43 on the board for losing 3 wickets. ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains of Torpedoes Khana as well as Team Matrix please report in front of the commentator box for the toss procedure. Imran, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. और इस वक्त कौशिक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। मंसूर सामना करने के लिए तैयार, 6 रन चाहिए, 8 गेंदें बाकी। इनफैक्ट 14 balls left and 8 runs required. 6 runs required in fact. इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा। नाउ 13 balls left and 6 runs needed. 13 गेंदों पर 6 रन चाहिए, लक्ष्य बिल्कुल आसान इस वक्त एनएम जप्पू के सामने। और कौशिक इस ओवर में अंतिम बार आखिरी बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बार ड्राइव किया लेकिन फॉलो थ्रू में हाफ स्टॉप और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा हो चुका। 44 for 3, 4 overs completed and Jaipur still looking right on top in this situation. Just 5 to get from remaining 12 balls.
ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. So 5 to get for victory in remaining 12 balls. ज्ञानेश गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और मंसूर जो कि सामना करने के लिए तैयार. फर्स्ट बॉल कम्स. इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद विकेट कीपर चूके रन इस वक्त नहीं लेना चाहा मंसूर ने और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 44 रनों पर. अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए इशारा किया कि क्या ये वाइड है या नहीं परखने के लिए. और देखते हैं इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं. Match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy Season 5 2026 is now progressing here, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle Registered. और मुकाबला इस वक्त जारी है श्री आदि महेश्वरी और एनएम जप्पू के बीच और एनएम जप्पू इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ. They are looking right on top in this situation. निश्चित ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी मैजिकल बॉलिंग ही इस वक्त अब श्री आदि महेश्वरी के इस मैच में वापस ला सकती है. तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी करते हुए दोपहर के 1:45 यहाँ पर बजते हुए और मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ. इट्स अ फायर डिलीवरी. सही गेंद घोषित और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, ज्ञानेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक, फाइंड्स द गैप एज वेल and he just got the boundary for that stroke and that boundary brings the equality. Scores are now leveled. 48 for the loss of 3 wicket. Now just a single run they have to score for victory. सिर्फ एक मात्र रन चाहिए अब विजय के लिए. खूबसूरती के साथ गेंद को रिवर्स शॉट खेला था इस वक्त गली और बैकवर्ड थर्डमैन के बीच से. देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को मोड़ दिया था और 4 रन इस वक्त प्राप्त करते हैं बल्लेबाज. सिर्फ एक मात्र रन की दरकार विजय के लिए. और गेंदबाज ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा थर्डमैन की दिशा में और इसी के साथ NM Jaipur registered a comfortable victory by 7 wickets with 9 balls to spare in their innings, and with that comfortable victory they are through to the next round of this competition. ಕಾನಾ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. So man of the match, undoubtedly the man who gave a fighting start for his team, scored 21 runs, 21 valuable runs, including 2 massive sixes and 1 4. In just 16 deliveries, he scored 21 runs, and because of that, fantastic. Now, Tawfiq of NM Jaipur adjudged man of the match. I request Tawfiq of NM Jaipur, please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Tawfiq of NM Jaipur adjudged man of the match because of his fantastic knock of 21 runs of 16 balls, including 2 massive sixes and 1 4. So that's it for the match number 3 of this tournament. Match number 4 is now going to start between Tupudus Khana versus Team Matrix. One more good match is now coming up. और वो मैच शुरू हो गया. आप एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब यहाँ पर टोरपडोस खाना और टीम मैट्रिक्स की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद.
I request Taufik of NM Cricketers Mangalore kindly request you to please receive the man of the match award from our chief guest. ಹಾಗೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. Thank you very much Adimahesh Cricketers for being the part of this cricket tournament. One of the most oldest and reputed organization, Adimahesh Cricketers. I request the captain, please come and collect your memento from our chief guest for your representation in this prestigious cricket tournament. Derlakatte ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ Derlakatte ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ Ibrahim will going to present the man of the match award with the gift, and with the gift voucher will be presented for the man of the match award. And ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. So presentation of man of the match award. Taufik played a blistering knock in the beginning and scored a valuable 21 runs and deserved the man of the match award. Now Ibrahim, the founder member of DFC, is going to present this man of the match award in our presentation dais. Congratulations Ibrahim. Congratulations Taufik. Thank you very much Ibrahim. ಹಾಗೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request the captain Souhard or anyone else from Adimeshwari please report to the presentation dais to receive your memento. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ DFC Ibrahim, the presenting this beautiful memento with the word of thank, and we are thankful and grateful for your representation in this prestigious cricket tournament, Souhard the Trophy 2026 Season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle registered. It's a bright and sunny afternoon. Time is exactly 1:50 and going to witness one more good match. Team Matrix versus Team Matrix versus Team Torpedoes Khana, and one of the favorite of this Season 5 of prestigious cricket tournament. So last edition champion STC Jappu as well as runner of Kirti Ullalbail, both are out of the tournament. Edition 4, and in this edition 5 of Souhard the Trophy we'll going to witness a new champion. Here wait and see which team will going to become the champion here of prestigious Souhard the Trophy. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 24 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ 6 ಓವರ್ನ ಕೋಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, 24 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ.
So everything is ready here for the match here. Winning the toss, captain of Team Matrix elected to field first under great leadership of Matrix. And good to see that once again they are taking part in this cricket tournament in the Mangalore pool. And just like how the opening match, Boss Warriors are participated in this the Mangalore top pool. And the Team Matrix is one more team which is absolutely they wanted to give the challenge for the top ranking teams. And wait and see how well they will go into give fight here for the team. Torpedoes Kana came into this tournament as a favorite because particular season they are absolutely dominated and winning some prestigious titles successfully. The 4 to 5 titles already under the captaincy of the man is on strike, Bashit. Is once again is wanted to start the journey with the victory here. The first ball, the bowler Nizam starts with a quicker one and faster one. Nicely collected behind the stump by the wicket keeper. And just in number 18, Mousin, the wicket keeper behind the stump, did the rest back to bowler. Second time in this over. Bashit snapped it very nicely in the over the head of the square leg region. Square leg feeder behind the ball. Ball will not going to travel to the fence because it's absolutely it was a long distance to cover as far as the square leg is concerned. It's not so easy to get the boundary in that area, the longest part of the ground. And a couple of runs completed before the throw which just came from the fielder. And Rafiq, the fielder, is chasing the ball. And Bashit is off the mark with a couple of runs. With a couple of runs is a 2 without loss of any wicket. Nizam. Bashit once again played it straight to the answer fielder. He just wanted to defeat the infield, but couldn't manage to get that placement right. Nizam Boliar, and usually is playing for Torpedoes Kana because of Team Matrix's own team. He is representing for Team Matrix. Outside the line, next time going to be a wide. One more extra. With that extra score, moves on to 3 on the board. Team Matrix absolutely produced a lot of talent players in their side, and Riaz the man is giving a lot of opportunity for the young talents in his team. Again played it very gently, opening the face of the bat, getting the direction down to gully region for a single by Bashit. And just absence of Bashit for the team, his home team, Kirti Ullalbail, Kirti Sporting Ullalbail. They are out of the tournament, being the runner-up in the last edition. Kirti Ullalbail Sporting are out of the tournament, and even the winners of the last edition, SDC Jaipur, is also out of the tournament. Here comes the next one. Or the one that one straight to answer field, chance of run out. Derlakatte is gone. No need to go for the TV umpire. Imran the man at short mid off. It's asking for trouble. You can't run when the ball is going towards this man Imran. He's a sharp shooter. He's a quick fielder and he is a sharp shooter. And Ashraf departs, the danger man. Just wanted to play inside out cricketing stroke. Played it gently to that extra cover, and have a look at the throw. The angle of the throw, we can see that only one wicket, only one stump you can watch in this angle when you are standing at extra cover. Absolutely only the sharp shooter can hit that stumps in this angle. And you have always the good fielder standing in the position, extra cover and cover point. Someone who is going to be a quick fielder in your team will going to stay in that position. Always opportunities created for the run out in that position. The first wicket back at the pavilion of Torpedoes Kana. The danger man Ashraf departs. Again wanted to go for the sweep shot, missed it completely, but umpire will not going to miss the opportunity to get the afternoon exercise. It's a difficult exercise, I want to tell you. The morning, evening exercise is different, but in a hot sunshine in the afternoon, time 2 o'clock, the sun absolutely no excuse. It's unlofted, no power whatsoever, and Sharan is underneath. It's a one more huge wicket back in the pavilion. Praveen the fielder, I taught it to Sharan, but it's a Praveen the fielder takes a catch. And Nizam strikes with one more wicket here. One in the form of run out. And this is a huge one because Bashit, the informed batsman, informed batter in this particular tournament and in particular season. He scored 37 yesterday night at
Katipalla in that Azad Trophy 2026 is back in the pavilion. It's 4 for 2 all in sudden. It is always a different challenge, in fact, for all the players, especially the team this is representing in several tournaments at same time. They need to travel a long way and no enough sleeping. There is no sound sleep. And again, against this hot sunshine, the performing is always going to be a big challenge. It's 4 for 2. 5 for 2, correction, after completion of first over. So first delivery of the over number, second Praveen brought into attack and starts with the dot ball. And so many upsets in this tournament. And it might be the one more upset if Team Matrix will go into capitalize this start what they got in this first over. Shakir, lovely reverse sweep is absolutely fantastic. Have a look at that. This is what intelligent cricket is all about. Sometime more than the power. It's what the clever piece of batting will going to help you to get the runs. Just have a look at that one. Just helping it down. He is the kind of batter is very difficult to read for the batter. When and how we're going to make the strokes. That is a delicately played reverse sweep. Not in a power, but intelligent. Getting the pace and opening the face of the bat. Closing the bat in the face of the bat with the reverse sweep. Gets it in the gap and got a boundary for that. Welcome boundary for Torpedoes Khana, 9 for 2. Again, Drivan tried to play inside out cricketing stroke, but lack of placement. Played it straight to the hands of mid-off. Not for run. The fielder Ansar at mid-off fields the ball. No run scored. Praveen. Again, wanted to go for the reverse sweep. Just an excitement rather than the confidence. Nothing has happened here. Shakir is also in-form batter for Torpedoes Khana. Why they are very successful in this recent season, even the last season. This man is always leading from the front as a number 3 batter. Whenever the team is required him, is always leading from the front. Wanted to produce. This time he lofted it, but no power. And fielder is not getting that one. Unfortunately, the ball is landed in a no-man area. And the long on fielder, actually the slow movement. Even the short mid-wicket fielder can go for that. Because ball is in there for a long time. The ball which is the stroke which is played high up in the air. And the landed safely before the fielder will going to get that one from the mid-wicket region. It's 11 for 2. This is turning out to be a productive over for the point of view of Team Torpedoes Khana. Again, reverse sweep. Have a look at it again. Lovely stroke. Chase, but ball winning the race. He's just using that condition very well. You know exactly which direction is the wind is flowing. Just behind the wicket, the square of the wicket. And again, the intelligent cricket. Sometimes you can't set a field for such kind of batters. It's always difficult to set a field for the batter like Shakir. Once again, clever batting, intelligent thinking. And this is turning out to be a very expensive over and productive over for the Torpedoes Khana. It's 15 for 2 after completion of over number 2. Going exactly 7.5 runs per over. 7.5 runs per over. It's 15 for 2. Torpedoes Khana again out of trouble. After that, they got a shackling start, lost 2 wickets very quickly. Their top order batters are back in the pavilion. In-form batters are back in the pavilion. Ashraf and Bashit.
bowler brought into attack to bowl the over number 3, jersey number 07. Nizam, the bowler. The bowling is second and the last over of his quota. Nizam wanted to continue because he bowled brilliant in the first over. He got a good start for the team matrix, but that momentum what they got in the first over, but is missed out in the second over. This is what Torpedoes Khan has got a potential in the batting department. They got a huge batting orders in the side. Again, an helicopter shot comes into play. Harris, the very good wristy player, played it down to long on for a walkable single. With that single, scoreboard numbers on to 16 on the board for the loss of 2 wickets in the over number 3rd is in progress. Spread out field set. After that, power play over. Straight away, the fielder down at deep square leg in front of square. One fielder at long on, which is wideish. Long off is orthodox and a deep cow point. One fielder for the reverse sweep in the deep third man. After that, 2 boundaries. This is a typical Shakir's single hand sweep shot. Played it nicely into square leg region. Once again, fielding is not up to the mark. Rafiq couldn't manage to move very quickly to that ball. Grabbing this opportunity. This is a quite interesting kind of technique from Shakir. As far as the sweep shot and reverse sweep is concerned, is a master. Playing such kind of strokes. Will going to frustrate the bowler sometime. They have no idea where to pitch the ball. No idea that when and where and when he will going to play that reverse sweep and sweep shots. But he not only believe with that sweep shot and reverse sweep, but sometime he can surprise the bowler with some big shots. Sometime he is very good in footwork, coming down the track using his feet is also the one of his favorite. It's 18 for 2 in the over number 3rd is in progress. Shakir is batting on 12 out of 7. Lovely shot. No need to run for that. One bounce into the fence for 4 runs. Absolutely, it's a glorious extra cover drive. This is what I'm talking about. This man has got all the ranges of strokes. All the strokes in the book. This is one of the quality stroke I want to tell you. The way that Shakir played it. This is what sometime the batter have to see the field set. You know exactly what kind of view which is made for him. And what kind of stroke he need to play. There's a cover point, there's a long up, a huge gap between that. The extra cover, you choosing that one up and over. Fantastic batting display from Shakir. Is batting on 16 now. Straight to the answer fielder. This time he couldn't manage to keep it down. And Rafiq making no mistake at all. This is all happening sometime. What could be your strong point can become a weak point. If you couldn't manage to play it well. The Shakir's favorite of sweeping the ball. But this time he couldn't manage to get it down. Just have a look at the replay. Shuffled across a little bit. Single-handed sweep shot. Tried it, but the ball which is not getting into the sweet part of the bat. And the good innings, a small cameo of Shakir which is comes in and scored 16 valuable runs in just 19 deliveries. 9 deliveries correction, and scoreboard is 22 on the board for the loss of 3 wicket, and the over number 3rd is in progress. We are not feeling that much of heart in a last week when we have a tournament in UCG cricket ground and somewhere else. But when coming to this ground, Derlakatte, the little bit extra temperature, I can see that 29 to 30 degrees Celsius temperature in the month of February. It's a huge one, especially in the afternoon. Of course, we are not feeling that much of hot in the morning till 10:30 to 11. It's an absolutely bright sunny afternoon. Lovely reverse sweep played by Harris. Nizam correction. The new batter came into bat. The 2 cousin brothers out there in the middle. It's 23. It's not a cousin brothers, the cousins.
but a very similarity we can see. Oh, this time I think there will be a chance of run out. Oh, he missed it. Can you believe this? Deliberate padding, but there will be a run out. It's absolutely deliberate padding. That's why the batter is not interested. Just have a look at no strokes offered. The beaten by the incoming delivery and the opportunity of run out which is created. And bowler fails to gather the throw from Rafiq. Huge miss. 3 gone. It's 23 for 3. And another 3 overs remaining. The Torpedoes they really came back very strongly after that shackling start, and they were looks like we wanted to get a good score here, but still Team Matrix has got opportunity to bounce back with some 3 good overs. Who knows, if we prevent them under 45, it might be the game for Team Matrix as well. We'll take a short break. Not a short break, in fact Rashid is ready for that. He doesn't want to take any break here, and well, but myself I have to take a break for the lunch, and it's a time for Rashid to take over the microphone. Thank you. So yes, thank you, Satish sir. And this has been exactly very well balanced start. So 23 for the loss of 3 wickets. Anesia. Oh, fantastic stroke that one. But there's a fielder coming. Praveen doesn't make any mistake in the fielding department. Imran with a wide throw. Oh, that's definitely a mistake from Imran. The ball which is going over the head of the wicketkeeper as well. Mohsin, the wicketkeeper, one of the most experienced wicketkeeper for Team Matrix. Team Matrix Mangalore, one of the teams which has impressed everyone with their wonderful cricket. They're always very much well-disciplined team. Oh, top edge of the bat, ball which is in the air for a long time, but fielder is going to fall short of that one. Landed right in front of the fielder. He had a long way to cover from that third man region. There's a innovative stroke which is comes into play. Haris and Nizam. Haris at the facing end. Haris wanted to go for his favorite stroke, but the ball which is coming very, very slow from Anish. This has been a speciality of this man, Anish. He's got a lot of success this season, especially because he's bowling that deliveries with 6 different variations in 6 deliveries he's using. Absolutely fantastic bowler. And one of the matches which I can remember against Torpedoes Kana, in that match he got hat-trick in that UC Jorua ground. I think the Gaurav Trophy, in which this man got a hat-trick. And he got a wicket off Mansoor Rantadka with his brilliant off-cutter. Oh, ball which is played. There's a fielder coming, but no one stopping that one from getting into the commentary box. That sails over the rope. And Arish Patel with his unique signature of 6 runs. Scoreboard is having a total of 33 on the board. You can watch it in the replay as well. The ball which is sailed over the ropes. So Haris and Nizam in the middle for Torpedoes Kana. They're playing a very classy innings, these 2 batters. After hitting a maximum, he just gets the strike rotated. So 34 runs on the board. And you're seeing the dugout of Torpedoes Kana. Bashit, after getting out really early, couldn't manage to make any damage with the bat this time. It's a huge dugout, lot of supporters and fans for Torpedoes Kana. They've been one of the most successful teams this season. And the cameraman also focusing on the rest of the players of Torpedoes Kana. Yes, Chetan waving to the camera as well. Shakir, Ashraf Muttur, the 3 players. This has been a fantastic lineup this season, Torpedoes Kana. All these players showing their A-level game and taking Torpedoes Kana
into the leading. They are one of the highest trophy winning teams this season. And their management is going to be very happy this season. And coming into this Souhard Trophy 2026, one of the most prestigious cricket tournament which is held yearly in this green ground Derlakatte. They would be targeting to win this one as well. This is a prestigious trophy. White ball which is starting off the proceedings from the bowler. Ansar the bowler, given the opportunity to play in this big prestigious team matrix lineup. So 35 on the board. Just swept the ball through the block hole delivery. Going to get a single for that stroke. So Nizam gets the strikers in. Nizam has been on a terrific form this season. In the bowling, in the batting, he's been absolutely dominating all the opposition he has faced this season. Nizam at the facing end. He swings and couldn't manage to get in a perfect connection. Ball which is going away from the batsman. Ansar again struggling to keep the ball in line. So white ball which is called from the main umpire. For the next match, I request KCCR Kadri. Oh, in the meantime, ball which is coming. Oh, there's a ball. Wicketkeeper had to collect it in the first time, but ball which is deviating away from the wicketkeeper with the spin. Manages to deceive the wicketkeeper, and they get in ample time to collect their single as well between the wicket. For the next match, I request KCCR Kadri and young friend Surwa. For the match number 5. This is the match number 4 which is progressing here. Team Matrix taking against Torpedoes Kana. So I request KCCR Kadri and young friend Surwa. All the players please complete the signing procedure immediately. Ball which is going into the hands of Ramesh. Ramesh collects it finally. The captain of Team Matrix. This season Team Matrix, they have been searching for the right track. They have came till the semi-finals I think in a tournament this season. But they aren't able to get in trophies this season. Or directly required to the danger end, but he manages to cross that line pretty easily. And over which is completed. One ball which is remaining in this over. In fact, just waiting for that umpires. They're both looking in a little bit of confusion. Both of them, yes, finally have taken the review. So the square leg umpire Harish Padil has taken the review. The third umpire's help has been taken. And we got third umpire Vivek Challenge Bowler here in the commentary box. So he's going to review that decision. Torpedoes Kana, they are looking to set in a big total because they know the conditions in this ground can sometimes favor the chasing teams very well, even though Torpedoes Kana have got a very good bowling lineup. So not out is a decision from the third umpire. The bat slided perfectly. So the last ball which is remaining. And we are also seeing in the screen Sinan, one of the most dangerous batters. So the ball which is coming into that close fielder, Anish. In fact, Imran, has he done just enough to get that run out? In fact, Azmal Jokate says no. The run has been completed. The run which is completed, and scoreboard is having after the completion of 5 overs, scoreboard is having a total of 30. So 40 runs on the board. So 40 runs in total on the board.
So Imran brought into the attack for team Matrix. Imran, one of the experienced campaigner. Oh, struck the run pretty hard into the deep extra cover, but there's the fielder. Praveen takes the catch comfortably without any mistake at all. The catch taken quite comfortably from Praveen. So Nizam is walking back to pavilion, wicket which is falling. He wanted to go into that long off position, I think, but mistiming that stroke, and ball which is carried into one of the longest part of the ground, into the deep extra cover region. Imran gets the success of his very first delivery. So Aman Osangadi, the new batsman. So Aman into the striker's end. So far 39 for the loss of 4 wickets for Torpedoes Khana. Oh, struck that one into the hands of Rizwan. Makes a slight bit of a fielding mistake. That would have been a run out opportunity created if he had managed to collect the ball perfectly in time. So scoreboard is having 40 runs on the board for the loss of 4 wickets. It almost seems like Torpedoes Khana, now they are going to look for the big runs. Oh, played in the air ball which is going into the hands of Ansar. Takes a catch perfectly, doesn't make any mistake. And the scoreboard is having a total of 41. So Chetan into the middle. So Chetan to the striker's end. Is a powerful striker as well, Chetan. So 41 for the loss of 5 wickets. So 3 balls which is remaining. Chetan into the middle. Once again, Imran takes his time. Balls, brilliant delivery along the carpet. Just plays it into that cow corner region where Ismail collects it without any mistake. Scoreboard is having 1 more run added to the total of Torpedoes Khana with that single. So total moves on to 42 for the loss of 5 wickets. Aman Osangadi at the facing end. Oh, powerfully struck that one. There is nobody stopping that one from crossing the fence. It's a powerful strike which came from the bat of Aman. So 1 bounce and into the fence. Scoreboard is having a total of 46. They are closing, very much closing towards that 50 run mark. They would hoping for that last ball to be boundary or to be a maximum, because they desperately want to get across that, get past that 50 run mark. Swings and ball which is going into that deep mid wicket area. Ismail collects the ball perfectly. So 48 after the completion of the first innings from Torpedoes Khana on the board. So 49 run is a target for Team Matrix. It's a chaseable total. Even in the previous match, 49 was a target. Here the same target as well. Even in the first match as well, 49 was the target. So all 3 matches have, all 2 previous matches where 49 was the target have been chased. And today we are going to have from that Pool A and Pool B,
from the Pool A, the first quarter final, which will be played between Najat Friends and Team B-Boy Salaikala. That's one big match which is coming up. All the spectators are going to be waiting. And second quarter final, which will be played between Kaskan Aringana and Lucky Star Rantadka. Two teams which have played outstanding cricket in day number 1 yesterday. Lucky Star Rantadka defeated STC Jaipur to enter into this quarterfinals. ಸೊ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ KCCR ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ Gopi sir into the microphone for this chase which is beginning from Team Matrix. Scoreboard is having 49 run target. This is the same target we seen in the previous match, Gopi sir. Is it going to be a chase from Team Matrix, or we are going to witness Torpedoes Khana defending this total down? So over to you, Gopi sir. धन्यवाद रशीद आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगले मैच का KCCR कद्री का मुकाबला होगा यंग फ्रेंड्स उरुवा के साथ. वन मोर बिग मैच इज नाउ कमिंग अप. यंग फ्रेंड्स उरुवा will take over KCCR Kadri in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. स्ट्राइकर रिजवान, नॉन स्ट्राइकर एंड पर इमरान. और गेंदबाजी शुरू करते हुए चेतन. 49 रनों का लक्ष्य, 49 the target for Team Matrix set by Torpedoes Khana, and their innings now going to start. They have to score with a required run rate of exactly 8.17 runs per over. तो अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. चेतन दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और रिजवान जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ऑफसाइड पर विकेट के पीछे 3 फील्डर मौजूद. पॉइंट दूसरा स्लिप, पहला स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन थोड़ा सा पीछे. इस बीच ये गेंद उछाला, पहली गेंद, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिसमिसल फॉर रिजवान. ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट हिट दैट वन प्रीटी हार्ड बट कांट फाइंड द गैप एज वेल. और वाइड लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे कैच को लपकने में सफल. दमदार स्ट्रोक जरूर है लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, और वाइड लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया फील्डर द्वारा. और पहली गेंद पर ये विकेट तक हो चुका है टीम मैट्रिक्स. रिजवान डिपार्ट्स एंड नाउ रिप्ले पर दिखाया जा रहा है. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, लेकिन आखिरकार फील्डर को प्राप्त करते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को फील्डर ने लपका. और पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में रिजवान का विकेट गिर चुका है. टीम मैट्रिक्स पहला विकेट खो चुका है 0 पर. इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर. जहां तक 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त टीम मैट्रिक्स को चाहिए एक बेहतरीन शुरुआत, और उन्हें 49 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप. और नए बल्लेबाज प्रवीण का आगमन इस वक्त होता हुआ, और चेतन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर.
चेतन अगली गेंद लेकर तैयार। केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और अगली गेंद लेकर चेतन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की दिशा में गेंद का पीछा करते फील्डर सबसे पहले पहुंचे बासित जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को रिवर्स शॉट के सहारे इस वक्त खेल दिया था डीप कवर पॉइंट पर 2 रनों के लिए बल्लेबाज ने। और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। टीम मैट्रिक्स 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहाँ तक सवाल है पिछले गेंद पर बल्लेबाज प्रवीण अपना खाता जो कि खोल चुके हैं। और चेतन एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद, जबकि लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा वाइडर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर ठीक सीमा रेखा के पास। यह गेंद ड्राइव के फॉलो थ्रू में कैच छूट चुका है। दमदार स्ट्रोक था लेकिन फॉलो थ्रू में इस गेंद को लपकने में सफल, लेकिन बेहतरीन स्टॉप गेंदबाजी चेतन ने किया। इस बीच बल्लेबाज को रन नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चेतन फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा बेहतर विकेट कीपिंग विकेट कीपर द्वारा, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वक्त चेतन सिर्फ 2 रन इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। और अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 के अंतर्गत इस वक्त एक शानदार प्रगति करता हुआ इस श्रृंखला की प्रस्तुति की है देरलकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड ने। और चेतन दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद तक पहुंचना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। और चेतन फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार ड्राइव किया लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम चेतन and a slower start for team matrix. It's 2 for 1 after completion of first over. ड्रोन कैमरा द्वारा इस वक्त दिखाया जा रहा हाई व्यू ऊंचाई के साथ इस मैदान का चित्रण हमें इस वक्त दिखाई देता हुआ। और निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए मैंगलोर मीडिया द्वारा एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त दिया जा रहा है जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज शाकिर और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ इमरान जो कि इस वक्त सामना करते हुए 47 रन चाहिए बचे हुए 30 के अंदर में 30 balls left 47 more runs now they have to score for victory and the required run rate is now straight away gone up to exactly 9.40 runs per over। शकीर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। हवा का रुख काफ़ी तेज़ मैदान के दाईं से बाईं और इस वक्त हवा गुजरते हुए और निश्चित रूप से जो हवा गुजर रही है खिलाड़ी और दर्शक दोनों को इस भीषण गर्मी से यहाँ पर राहत दिलाते हुए दोपहर का वक्त का जहाँ तक सवाल है 2:35 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है। और शाकिर ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर था विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद इमरान के लिए क्विक वन एब्सोल्युटली क्विक वन लगभग जमीन के सहारे गेंद आई और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और गेंदबाज शाकिर इमरान के लिए again reverse shot delicately played this time he finds the gap as well and it's crossed over the fence for a boundary fantastically struck from Imran। ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में मिडल ऑफ स्टंप पर गिरी थी बल्ले को तिरछे उड़ाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंटली चतुरता के साथ खेल दिया। इस वक्त शॉर्ट टर्नमैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके दाईं ओर से गेंद निकली और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इमरान के बल्ले से लगता हुआ ऐसे स्ट्रोक्स की और ज़रूरत है, ऐसे चंद स्ट्रोक्स
और लगाने होंगे बल्लेबाजों को टीम मैट्रिक्स को अगर उन्हें कम बैक करना है इस मैच में। शाकिर रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इमरान ने रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। और जहां तक सवाल इज गॉट अ बैट ऑन टू दैट इन द लास्ट मोमेंट। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। 24 स्टिपुलेटेड मिनट के अंदर, 24 निगदित मिनट के अंदर हर टीम को अपने 6 ओवर का कोटा पूर्ण करना होगा इस श्रृंखला के नियमानुसार। एवरी टीम हैज टू कंप्लीट द 6 ओवर्स कोटा अंडर 24 मिनट्स as far the time is concerned, as far the rules and regulations is concerned for this tournament. Shakir reverse bowled him, just wanted to play the reverse shot, not succeeded. The man Praveen departs, extra quicker from Shakir, and he just get rid of the batsman. मिडल स्टंप इस वक्त उखड़ कर गिरता हुआ और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो एक बेहतर गेंद थी शाकिर के, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ उन्होंने इस गेंद को फेंकी थी और बल्लेबाज प्रवीण ने गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन गलत लाइन पर खेलना चाहता। और देखिए किस तरीके से गेंद उनके पैरों के बीच से होते हुए उनके बल्ले को वंचित करते हुए मिडल स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए। सेकंड विकेट गॉन, इट्स 7 for 2. New batsman, number 4 batsman is now comes out to the middle और शाकिर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, नॉट सक्सीडेड, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। शाकिर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज मोहसिन इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अभी भी एक लंबा सफर तय करना जाके बाकी टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाजों को। और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद पर वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई दिशाहीन गेंद इस वक्त शाकिर ने फेंके थे और इस 1 रन के साथ 8 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। Again the lost it, this time he finds the gap as well. In fact he's get at least a single for that. They're looking for the second and this time they won't get it. मोहसिन जो कि उन्होंने खास दिलचस्पी इस वक्त नहीं दिखाई दूसरा रन लेने में, शायद दूसरा रन पूरा हो सकता था अगर मोहसिन दौड़ पड़ते तो, लेकिन एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 9 for the loss of 2 wicket. 7 runs came from Shakir Souhard and a wicket for Shakir in this over. 9 for 2 after completion of 2 overs. Still the batsmen of team matrix searching for the right track. So exactly 40 runs required for victory in remaining 4 overs and the required run rate is now straight away gone up to exactly 10 runs per over. 24 गेंदे 40 रन चाहिए और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए निजाम फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ बल्लेबाजी में तेजी लाना जरूरी बन चुका टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाजों को, खासकर चौके और छक्के इस वक्त कुछ लगाने होंगे यहाँ पर कमबैक करने के लिए उनके बल्लेबाजों को। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद बाउंड आउट, जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, लेग स्टंप uprooted. One more wicket fallen, Motion departs. The problems are now more building up for team matrix. They are looking deep in trouble. It's 9 for 3. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद इस वक्त निजाम की और
रिप्ले पर इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरीके से इस गेंद पर विकेट गिरा था मोशिन का. जस्ट कन्फर्म ही नॉट सक्सीडेड, लेग स्टंप अप्रूटेड. और इस बीच नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और निजाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त गेंदबाज की दाईं ओर से जगह बनाते हुए मिड ऑन पर और तेजी के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके 1 रन के साथ. स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू double figures now. That means on 10 for the loss of 3 wicket. The over number 3 in progress. और निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इमरान के लिए. इस बार रिवर्स शॉट डेलिकेटली प्लेड. फील्डर इस वक्त काफी स्क्वायर था. ना तो 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा. बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा. हालांकि काफी टू स्कोरर फील्डर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से तेज तरीके से दौड़ लगाकर उन गेंद तक पहुंचा काबिल तारीफ है. सिर्फ एकमात्र रन यहाँ पर प्राप्त करता हुआ टीम मैट्रिक्स. और ये देखिए मैदान और उसके बाहर का नज़ारा, कई बड़े इमारतें दिखाई देते हुए मैदान की दाईं ओर से रास्ता जो कि इस वक्त गुजरता हुआ, जहाँ पर कई गाड़ियाँ इस वक्त आती जाती हुई. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाह. शॉट सलमान पर रनआउट का खतरा और यहां पर शायद ये विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में. 1 more wicket fallen. Wickets are tumbling and problems are now more building up for team metrics. It's 11 for 4. So new batsman number 6 batsman is now comes out to the middle for team metrics. They are really struggling out in the middle. 11 for the loss of 4 wicket. And this is the over number 3rd of their innings is now progressing here. और निजाम गेंदबाजी करेंगे इस वक्त इमरान के लिए. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. Straightforward dismissal. Strange stroke played by Imran. He just got the penalty for that. पहले सोचा कि गेंद को रिवर्स शॉट खेला जाए, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद लेग स्टंप पर आते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया. अजीब तरीके से गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद उसके टॉप एज पर टकराई और शॉर्ट फाइन लेग पर आसान सा कैच पहुंचता हुआ. और यहाँ पर देखिए असल में क्या हुआ था. पहले सोचा कि गेंद को रिवर्स शॉट खेला जाए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पर अपना बल्ला उड़ाया. ये देखते हुए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है और गेंद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए टॉप एज पर टकराई. आसान सा मौका. इमरान का विकेट गिर चुका. 5th विकेट गॉन. 11 for 5. Number 7 batsman is now comes out to the middle. 38 more runs required in remaining 19 deliveries, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 12 runs per over. निजाम सफल ओवर साबित हो चुका है अब तक उनका. और इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन रफीक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अनुभवी खिलाड़ी टीम मैट्रिक्स की ओर से इस वक्त सामना करते हुए. और निजाम इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाता है. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई ये देखते हुए कि रफीक का बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त मिड विकेट फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है 20 गज के दायरे के अंदर सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में. और निजाम इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट रफीक के लिए. इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद को बोलना चाहा विकेट कीपर, चूंकि और बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं बाई के रूप में. बाई टू एंड द ओवर. 3 गॉन and after 3 overs still struggling. Time continuing here for the batsmen of team metrics. It's 12 for 5. 37 to get from remaining 18 deliveries. निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाजों को सिर्फ चौके और छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं. क्या होगा देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में टीम मैट्रिक्स की पारी में. तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतिम 3 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. आइए सतीश, धन्यवाद. थैंक यू.
So thank you so much, Gobi. And Team Matrix, absolutely, they are struggling in the middle, not in the form of run, but even they lost 5 wickets against Torpedoes Khana's excellent bowling performance. And still long way to go. 37 needed from 18 balls, and need to get some big overs here for the Team Matrix if they wanted to back in the game. Sharan brought into attack to bowl the fourth over, and round the wicket in operation. The Rafiq wanted to sub the ball, and looks like the ball is going to miss the stump, and rightly so, and like by call by umpire Harish Padil. So far, all umpires did a great job in the 2 days of this cricket tournament. Of course, yesterday is a big day and challenging day for umpires. The match, which is almost ended in a late night, 2:30 to 45. Harish Padil and Ajmal Jokate, Ranjesh, Vivek, challenge bowler, everyone did a great job to make this cricket tournament very successful one. We are thankful and grateful for their great effort. This time reverse sweepages comes into play, and protection has been given in the deep, and Pradeep, the fielder, in the deep fields the ball, and ample time for the batter to complete the single. This is what the cricket ground of Derlakatte, and the bird eye, our drone camera of Mangalore media covering this cricket ground. The beautiful view we can see in the sky high, and this time Rafiq wanted to go for the big shot. Chance for Bashir to take that catch. Comfortably taken. No timing whatsoever there from Rafiq. Almost drags it from outside the line, and of course he got a connection, but fails to get the distance. Without timing and power, that ball will not going to travel to the fence. Just have a look at it in a replay. Sharan offering around the wicket. The delivery which is coming into the batter, and almost drags it, played it cross-batted stroke, and played it high, and Bashit comfortably taken in the mid-wicket region. Wicket number 6 gone. Team Matrix are looking in more trouble. It's 14 for 6. KCCR Kadri versus young friend Surva. One more big match will go into commence. Everyone here in Derlakatte cricket ground excited to watch this battle. High voltage match. They wanted to go for reverse sweep. Picked up a single for that. With that single score, but moves on to, it's 15 for 6. They wanted to go for the switch it and missed it completely. Ramesh, the batter, the new batter came into bat. Ashpak, the batter, is on strike. It's 15 for 6. Again, outside run off stump and edging it down to third man region for a single. With the addition of that single score, but moves on to 16 for 6. And over number 4 completed. 2 overs remaining. And in our commentary box, we have Gitesh as a manual scoring department, and right we have Tushar, the man, is the man behind Mangalore Media with every department, even in the mixing department and even in online scoring department. The experienced man with the magical finger is very much important whenever you are wanted to get the third ump addition, and Tushar, the man, always behind, giving some good angles, providing very important for the success of any YouTube channel. I need to have some experience. Technicians. Oh, lovely shot, magnificently struck, but unfortunately we're going to get a single for that. Ashpak played it very nicely into the extra cover, and more than anything else, the fielder is very quick to react to that one, and ample time for the batter to complete the single. It's 17 for 6 in the over number 5 in progress. Ramesh, the very good striker of the ball, experienced campaigner, facing Shakir. Again, wanted to go for the inside out cricketing stroke. Misjudgment there from Bashit. The ball is almost deviating because of the blade, which is a little bit turned. Try to hit the ball, so that ball is just spun in front of Bashit. It's a spectra wide, huge wide.
The wide press one experiment there from Shakir. Looking for the slow delivery, but ball misses the line. And couple of runs, the bonus runs is added to total 20 for 6. Ramesh is not ready to face Shakir. Outstanding season for Shakir from the bat and ball. Very important role he played so far. Every tournament, the team which is won the big titles. The all-round performance. Again, lovely delivery coming into the batter. Ramesh has got no room to play the shot. And this is what Shakir is good for. Reading the intention of the batter very well. Again, driven that one into the long on area. Safely taken there by Aman Asangadi. Not Aman Asangadi. And Harris, the fielder in the long on. Because we are not having any view here in our commentary box. We have a sound box which is right off our commentary box that will going to cover that areas. And in the screen, yes, comfortably held by Harris at long on. It's 24-7. Team Matrix are looking more trouble. Derlakatte Friend Circle registered one of the most reputed organization organizing this Souhard Trophy 2026. The season, successful season 5. What an outstanding journey from the organizer, the 5 years successful cricket tournament. Again, played it nicely into the long on region by the batter Nizam. New batter came into bat. It's 21-7. Slower one. And the ball which is pitched outside the line. A good over there from Shakir. Last over remaining. Looks like just a formalities left in this game. You can't say it's the formalities. And because still they needed another 29 runs to win this match. I have to deal with the big shots in this last over. 5-6 which is required for the team Matrix to win this match. 21 is a score. That means 28 needed. Nizam, one more very successful player for the side of Torpedoes Karna. All we can see that's all-rounders. When you have more all-rounders in your team, the opportunity is always there. Harris, correction. This time it's been a fantastic struck. What a magnificent stroke. This is absolutely towering 6. Outstanding struck came from the bat. Harris, the bowler, has been welcomed by the magnificent switch hit. Never looks like it's going to be a right-hand batter hit the ball. Just look at Arshad Bajal hit the ball, the left-hand batter. As clean as a whistle, and that ball is gone many miles out of the park. Missed it completely. And this is what the dot ball is required. Now last opportunity. 23 needed. And 22 needed, correction. 22 needed from 4 balls. And it is last opportunity. And for the batter to get these runs. Once again, what a shot! This is just like a stroke from the cannon. What a shot! This man absolutely surprised everyone. Nizam, remember the name. The match is not yet over. Shakir quickly coming back to have a word with Harris. I request the two captains to come here for the toss. Young friend Surwa as well as the captain of KC Serkat, they kindly request you to report here for the toss. The match is not yet over. 2-6 already in 3 balls. And one more 6 make this match exciting. Oh, this time he's not right for the switch hit. I think it might be a better option to go with the same shot. After he got 2 6s in that similar shot, why not try for one more? Now it looks like just a format is left in this game. Exceeds the time limits.
One fielder coming inside the ring. 33-16 needed, and now just 4 minutes left in this game. I think one ball remaining in this last over. And need to appreciate Nizam the way that is batted in the last over. The two massive sixes. Again, I'm really surprised why he's been not promoted up in the order. But definitely next match, next tournament, you will definitely find him in the top order. And especially, I think, give a suggestion, send him as opener batter to take the advantage in the power play over. The way that he hits the ball, the way that he has got a technique of hitting the ball, the switch it is concerned, outstanding. Nizam Boliar is playing for Torpedoes Khana. Now against the same team, he's absolutely played two massive sixes from his bat. It's 33. At last they finished. And now time to announce the man of the match award. The man of the match once again, it's going to the hands of the man who contributed from the bat and ball, Shakir of Torpedoes Khana will going to receive the man of the match award for his all-round performance. 16 from the bat, 2 wickets from the ball, and he deserved the man of the match award. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿರಚಿತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಯಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ come here and receive that memento from our chief guest. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ರಿಯಾಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಶಾಕೀರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇವರು ನೀಡಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ. ದಯಮಾಡಿ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ. So presentation of the man of the match award. Harris is came from long way for this cricket tournament from Bangalore to Mangalore, and to present the man of the match award for Shakir for his all-round performance. Congratulations, Team Matrix ತಂಡದ ನಾಯಕ. ದಯಮಾಡಿ ರಮೀಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ರಿಯಾಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಂಡದ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ದ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ no change in language, as same language, English. And Rashid, one more very talented young commentator, will going to have the mic for this big match. Team KCCR Kadri registered versus team Young Friends Urva. Winning the toss, Kadri captain elected to ball first. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಕಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವೇಕನ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಒಂದು ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವೇಕನಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಡ್ಲೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ನೀವು ನೆಲಕಡಲೆ ತಿಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈನ್ಸ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀನಟ್ಸ್. ಬಡವರ ಬಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾದಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ 10 or 20 rupees. So please cooperate with the Kadle Siddiq and his brother. Thank you. It's over to Rashid. Thank you. So yes, thank you so much, Satish sir, and we are beginning with one more match, one more big match, the quarter-final. KCCR Kadri takes against Young Friends Urva, and Young Friends Urva, the first down to bat first after winning the toss. KCCR Kadri elected to bowl first, and Dilip starts off the proceedings here. Fantastically bowled that one right into that off stump line. It doesn't give any opportunity for any runs at all. Mithai is the man standing in that short point region.
Dilip continues again. Santosh went for the big one. He gets the party going here from the first delivery itself. This is the second delivery and is started off in style. What a stroke that is. Fantastically struck that one. Dilip is having no idea at all. He bowled that same two deliveries and this time he manages to dispatch it. What a shot that is. One of the most difficult shot in the book. But this man Santosh Bantwal makes it look like a very, very easy job for him. KCCR Kadri, they are making total changes in the fielding setup. Because now they know that they need to have good improvisation in the fielding setup. And KCCR Kadri, they are playing with their new kit. So Karthik Kumla behind the wickets. Oh, fantastic job from the wicketkeeper. Santosh Bantwal couldn't manage to get in a connection this time. So the ball which is going into the hands of wicketkeeper. 6 on the board without any wicket loss. 3 deliveries completed. Santosh normally is very much watching the delivery and then making the strokes. But this time completely mistiming it. Misjudging the line. Dilip, it's got variations in his bowling. He's not such an easy bowler to pick. It might seem very easy for the spectators who are watching from the galleries. They might think the ball which is coming very easy down the track, but if you watch it in the replay in the Mangalore media live telecasting, you can see that he's got a different types of variations in his bowling. So 4 balls which is completed, just 6 runs on the board. That's maximum which came from the bat of Santosh. This time beautifully bowled the slower one, even deceiving Santosh Bantwal with that delivery. So scoreboard which is having 6 without any wicket lost, 7 without any wicket lost in fact. So far 1 more which is remaining in this over. You can look at that maximum in the replay. What a stroke. Absolutely phenomenal timing from Santosh Bantwal. Now his partner Arshad Bajal taking the strikers end. 2 of the destructive, I think one of the most dangerous opening batters in under-arm cricket at present time. Santosh Bantwal and Arshad Bajal. 2 are very much dynamic batters. Setting the field inside the power play is a very challenging thing for the opposition captain. So Dilip bowls the last delivery of the over number 1. Arshad Bajal couldn't manage to get any connection with that one. So over which completed. It's just a 7 on the board. And this is the reason why Dilip is a power play over bowler. He managed to deceive the batters. He managed to keep them very quiet after conceding a 6 in the second delivery of the over. So 7 after the completion of over number 1. So 1 over completed, 7 without any wicket loss so far. Arshad Bajal and Santosh Bantwal, they're checking the ball. So 7 after the completion of over number 1. Just delicately pushed that ball between the 2 fielders, Mitesh and one more fielder, Ravi, I think managed to stop that one finally from crossing the fence. But batters very quickly completed the runs in between the wicket. They got a couple of runs added into the total. So total moves on to 9 on the board. Satish is a man who's been given the responsibility of bowling this over. Over number 2, the second over of the power play. Satish, very absolutely fantastic campaigner. Brilliant delivery, brilliant bowling. This is from Satish. And you can see in the ground, the spectators, they can easily see that. And yes, we are also having Satish Salian sir also saying that thank you. Because he's also one more good bowler back in his time in the leg spin.
as well as a very explosive batsman as well. So 10 on the board for young friend Surwa. After losing the toss, I think the strategy from young friend Surwa batters is very clear. They want to put a big total on the board in the first innings itself. If they can manage to get in a big total on the board, they're definitely going to have a lot of relief in the second innings, because this ground chasing is a little bit easy most of the times. But in the previous match, Torpedoes can absolutely stop the opposition from getting that 49-run target they set on the board. Team Matrix couldn't manage to chase that total down. So Satish so far has completed 3 balls in this over. So far 3 balls which is completed, 3 runs from this over conceded. In the first ball, Satish conceded a couple of runs, then bowled a dotted delivery. Then Santosh managed to get in a single. Oh, this is absolutely, this is the reason why Satish Salian has given him the nickname of killer of the ball. What a strike that! Unbelievably struck that one. Perfect timing, perfect power behind the strokes. And the bowler is thinking that what to bowl in the next delivery. Whenever Arshad Bajal and Santosh Pantwal is batting in the middle, it's a nightmare for the bowlers, because any variations they are having, these two batters have got different answers. One is very good in playing that reverse, and another one very much almost like a slog sweep from that block hole delivery, almost reaching towards the off stump as well, and then dispatching it for a maximum. What a stroke! This is a fantastic batting. And the young friend Surwa management, they would be very, very happy to see Arshad Bajal back in form. For them, this man is a key man to score runs in the power play. If he stays in the middle for a long time, especially at least 3 to 4 overs in the middle, I think the scoreboard is going to look massive for young friend Surwa. Once again, Satish takes his time. Now he's got a big responsibility. He needs to restrict the batters. Ball which is going into that mid-wicket fielders, and he collected it perfectly without any mistake. So scoreboard is having no run added from this delivery. Dot ball. So last one remaining in this power play over. Arshad Bajal, the killer of the ball, the gabbar of underarm cricket at the facing end. Will he go for the big one? Last ball of the power play. He tried for the big one, but couldn't manage to get a perfect connection. There was a slight bit of an appeal for the leg before wicket, and rightly so. The main umpire Ranjesh Uchila signaling that ball which is hit the legs and then got a run for the opposition batters. So leg by is the signal from the main umpire. Scoreboard is having a single added of that last delivery. So 17 on the board. 17 on the board with that leg by single. And we are seeing on the screen Satish Salian, Riaz Matrix, Sadiq N.M. as well. And I think Faisal as well. They're all having some conversation. And this kind of tournaments always giving opportunity for all the legends and experts of underarm cricket to get a chance for 2 days of festival atmosphere here in this ground. So Dilip again brought in for the over number 3. This is a good decision from KCCR Kadri. They have again went in with Dilip. Dilip starts off the proceedings here. Oh, quicker one bowled from Dilip, but couldn't manage to turn the ball inside the legal area of play. So the ball which is deviating away from the batsman. Wide call from Vivek, the main umpire.
So Dilip balls again and struck that one into the deep square leg region. And once the fielder collected that, Arshit, I think the man in that deep square leg region, collected that ball. They had ample time to get in runs between the wicket. So single added. Scoreboard is having 19 on the board. Oh, just swept the ball perfectly from the block hole area. Ball which is once again going into the hands of Arshit. He collects it perfectly. Scoreboard is having one more run added to the total. And this is a calm and composed innings from the batters of young friend Surwa. Harshad Bajal and Santosh Bantwal. They know their responsibilities. They perfectly know that they need to put good partnership on the board for the first wicket. Oh, struck that one pretty hard. Just to stand and deliver. The ball which is going into the hands of Faisal's hand. So it's a very clean maximum. Clean pickup from the bat of Arshad Bajal. You can watch it in the replay as well. Dilip bowled it into that off-stump wicket line, and Arshad Bajal just stand and deliver. And the catch taken perfectly outside that boundary line from Faisal NM as well. So once again, this is going down through the block hole, in fact. Brilliant delivery. Absolutely fantastic bowling. This is from Dilip. Even though he's conceded sixes, but he's bowling fantastic over. Is making a great comeback. Bowling against these two, not an easy job at all. Oh, struck that one top edge. This could be a chance inside the 30-yard circle. Taken pretty comfortably. Catch which is going to dismiss the big man. The Gabbar is back into the pavilion. This is some moment of relief for the bowling lineup of KCCR Kadri and the fielders of KCCR Kadri, because at least they managed to get in that big fish in the net. So 26 for the loss of one wicket for young friend Surwa so far. And now the captain of young friend Surwa into the middle. The Mr. Defendable Sajid Patna. The man this season has been absolutely in terrific form for young friend Surwa. So Sajid, the captain, into the middle. In the previous match, he did not get an opportunity to bat because Santosh and Arshad, they finished the game. So the ball which is going into that short point fielder's hand. Mitesh collected that perfectly. So scoreboard is having 27. 27 after the completion of so 27 for the loss of one wicket after the completion of 3 overs play. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Gopi sir into the microphone. 27 for the loss of one wicket after the completion of 3 overs. I request Gopi sir to continue the commentary duties as Santosh Bantwal and Sajid. After the departure of Harshad, Sajid came into the middle, and these two needs to build a good partnership for the wicket number 2. And over to Satish, over to Gopi sir.
Thank you, Mr. Rashid, a fantastic English commentator. So Rashid, once again, fantastic English commentator. Thankful to you once again. और जहाँ तक सवाल है चौथे ओवर का पहली गेंद लेकर तैयार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ और गेंद कवर पॉइंट पर जब तक फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 28 for 1. दिस इज एब्सोल्युटली गुड प्रोग्रेस और अर्शद बजाल ने एक बेहतर शुरुआत इस वक्त दी थी यंग फ्रेंड शुरुआत को उसकी बदौलत इस वक्त एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा और मितेश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा बेहतर गेंद थी शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची रनआउट का खतरा हो सकता है लेकिन अंतिम क्षण में खतरा टल चुका है गेंद काफी वाइडर इस वक्त निकलती हुई और एक रन तोड़कर दोनों बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 29 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस वक्त प्रगति फॉर फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट साजिद जो कि इस वक्त सामना करते हुए मितेश की गेंदों का और मितेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद साजिद का स्ट्रोक एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंटली प्लेड ओवर द लॉन्ग ऑन फेंस फॉर अ मैक्सिमम और अरशद बजाल के बाद इस वक्त साजिद की बारी और यहाँ पर देखिए गेंद को किस तरीके से उछाला था मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड लॉफ्ट दैट वन इन स्टाइल ओवर द लॉन्ग ऑन फेंस फॉर अ मैक्सिमम इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और साजिद एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार बैकफुट पर गया खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंची एक रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरा रन लेना चाहते हैं साजिद लेकिन दूसरा रन नहीं मिलेगा और एक रन के साथ और डायरेक्ट हिट इस वक्त और ओवर थ्रो लेकिन दूसरा रन इस वक्त एक बार फिर से नहीं मिलेगा तो सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है वह 36 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर इट्स 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस और तो इस वक्त जहाँ तक का सवाल है संतोष बंटवाल का 2 क्वार्टर इस वक्त रनआउट का और इस बार इज गॉन इन फैक्ट इज गॉन रनआउट हैपेंड द नो स्ट्राइकर एट लास्ट जोखिम बड़ा रन चुराना चाहता संतोष बंटवाल ने भुगतान उन्हें करना पड़ा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है umpire whether it's a caught or run out it's a catch so it's a caught by the short cover fielder Santosh Bantwal departs second wicket gone it's 36 for 2 Numan now comes out to the middle wearing number 7 jersey. और जहाँ तक सवाल है अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज मितेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज मितेश इस बार बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर 4 gone and after 4 overs still young friends Urva lost their 2 wickets except they lost their 2 wickets in the face of Arshad Bajal and Santosh Bantwal. They are looking in a good situation. It's 36 for 2 after completion of 4 overs and now just in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in the innings और मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है दोनों आउट हुए बल्लेबाज संतोष बंटवाल और हर्षद बजाल इस वक्त प्लेयर्स डगआउट में बैठे हुए और जहाँ तक विश्राम करते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए 12 गेंदों का तो 2 ओवर का तो देखते हैं बचे हुए 2 ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं
Match number 5 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. Souhard the trophy season 5 2026 is now coming up, which is proudly presented by Derlakatte Friends Registered. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, 5th over starts in their innings. तो मंजुनाथ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और 5वां ओवर की पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ बाएं हाथ राउंड द विकेट. क्विकर ऑफ द टॉस, खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ बेहतर फील्डिंग, रन आउट का खतरा लेकिन निशाना इस वक्त टल चुका है और बल्लेबाज दूसरा रन के लिए यहाँ पर दौड़कर दूसरा रन पूर्ण करने में सफल हो चुके हैं. बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 38 रनों पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर. मंजुनाथ एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त बल्लेबाज साजिद के लिए इस बार ड्राइव किया हवे में, लेकिन फील्डर पीछे तैनात. डीप एक्स्ट्रा कवर पर नॉट मोर देन अ सिंगल. 39 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. और 2 गेंदें इस वक्त मंजुनाथ फेंक चुके अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट. This time lofted and this time he finds the gap as well. 6 into the account of the batsman and 6 into the account of young friend Surwa. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 45 रनों पर. इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. किस तरीके से गेंद को उछाला था और इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर डिस्पैच करने में सफल छक्के के लिए. 45 रन. अजीम के बल्ले से छक्का लग चुका है और मंजुनाथ इस वक्त तैयार. एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास. विकेट कीपर कार्तिक चूके गेंद को कलेक्ट करने में. एक रन का इजाफा. ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. couple of runs added to the total in the face of by that couple run the scoreboard moving up to 47. They are heading towards to a huge total now. Young friend Surwa 5th over in progress. मंजुनाथ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए lost it. This time too higher, but he got the distance at last. It's a big A, number 2 in this over. And the batsman is now looking on fire. इस बार साजिद के बल्ले से छक्का लग चुका है. Absolutely fantastically struck. Have a look at this in the replay. And he just dispatched it in a style. And he's got the distance at last. और ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तित के तौर पर विकेट कीपर का थ्रो चूकता हुआ और बल्लेबाज एक रन यहां पर पूर्ण करने में सफल. 50 comes up for young friends Surwa. 54 for the loss of 2 wicket after completion of 5 overs. They are looking in a commanding situation. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 54 for 2, 5 overs completed. साजिद एंड अजीम और साजिद का जो छक्का पिछले गेंद पर लग चुका था काफी काबिल तारीफ. अंतिम ओवर का खेल बाकी और अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. तो अजीम के बल्ले से पिछले ओवर में छक्का लग चुका था और अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ. गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं. गेंद इस वक्त टिप्पा खा चुके. खाली क्षेत्र पर 1 रन का इजाफा हो चुका है. 55 for the loss of 2 wicket at the start of the 6th and the final over. They are heading towards to a huge total now. Young friend Surwa Sajid. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. जितेश की गेंद इस बार उछालना चाहा साजिद ने, चूंकि रनआउट का खतरा. निशाना चूका और इस बीच ओवर थ्रो और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए रन पंचक इस वक्त जुड़ चुका है. ओवर थ्रो के रूप में कोई बैकअप नहीं और चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं.
5 रन प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज. 60 on the board. $60 for the loss of 2 wickets. Quite interesting figure in fact. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद जस्ट ओवर द विकेट कीपर सेट डाउन टू अ शॉट थर्ड मैन फॉर अ सिंगल. और जहां तक सवाल है इस वक्त आक्रामक स्ट्रोक जरूर लगाना चाहता लेकिन ठीक तरह से गेंद को स्ट्रोक्स को खेल नहीं पाए. 1 रन मिला. 61 और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिस्ट देयर टाइम लिमिट. तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. 3 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स. और साजिद बैक ऑन स्ट्राइक. गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए जितेश. दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. Lofted 6 runs. No need to run for that. Into the roof of commentator box stand. Now Sajid looking on fire. Or just exposing the stumps played. That one after being getting right from the middle of the bat. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को डिस्पैच किया था छक्के के लिए साजिद ने. 67 on the board. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. Again deflected fine. It's gone fine. गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. 69 for the loss of 2 wicket. Now just a last ball remaining of their innings. और यहाँ पर देखिए किस तरीके के स्ट्रोक साजिद के बल्ले से लगता हुआ comes down the track and lofted that one in a start. The last ball of the innings is now coming up. Full toss चूके और इसी के साथ ये विकेट शायद यहाँ पर गिर चुका है अंतिम गेंद पर. फुल टॉस के तौर पर गेंद थी. अंतिम अक्षर में आगे निकलते हुए गेंद को उछालना चाहा चूके और आखिरकार विकेट गिर चुका था. So the innings is up for young friends. They finished well with 69 for the loss of 3 wickets in the stipulated 6 overs. And now the target for KCCR Qadri is exactly 70. 70 runs KCCR Qadri have to score for victory in the stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 11.66 runs per over. 70th exactly the target in their stipulated 30-60 levels. So they have to score for victory. And let's see can they reach the target or not. और इस बार KCCR Qadri की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तो इस वक्त 70 रनों का लक्ष्य 70 द टारगेट. और देखते हैं यहाँ पर KCCR Qadri के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते रहे. तो उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे एक और टैलेंटेड कमेंटेटर श्रीमान मुशफीक के साथ, यंग टैलेंटेड कमेंटेटर मुशफीक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब KCCR Qadri की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸೀಸನ್ 5 ಅದ್ದೂರಿಯ ಹೊನ್ನಳು ಬೆಳಕಿನ 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KCCR Qadri ತಂಡದ ನಡುವೆ
ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 69 ಓಟ, 70 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 70 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 70 ಓಟಗಳ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ರಿಫಾನ್ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಚೆನ್ನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಬದಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಕಡೆಗೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿ 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 ಪ್ರಹಾರ. ಇದು ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 6 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 70 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಫಾನ್ ಮರಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಕಡೆಗೆ. 6 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. ಧನುಷ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 6 ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಫಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಳೂರು ಇವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 7ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 7 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 33 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 63 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಫ್ವಾನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ವಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಸ್ವೀಪ್. ಇದು ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಧನುಷ್. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 9 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 70 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ರ ಮುಂದೆ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ರಿಫ್ವಾನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಫ್ವಾನ್. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. That gone out of the park. Mighty hit from the bat of Manjunath. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ಲೇ. ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ರಿಫ್ವಾನ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ
ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 15 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. 70 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಿಳಿಸಿದಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುತೇಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳು ನೇರ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಬಂದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೇಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಎದುರಿಸಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹರ್ಷಾದ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರಂಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಸ್ಲೋ ಇನ್ ಪೇಸ್. ಖಂಡಿತ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ. ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರ್ಷಾದ್. ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ್ಯ ತಂಡಗಳು 70 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ವಾನ್ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಹುತೇಕ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ದಾರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12.48 ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ, ಬಹುತೇಕ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡವರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮನೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಮನೀಶ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೇತರಕ್ಷಣಿ ಭಾಗವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5 ಸೇತರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಮನೀಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಕಡೆಗೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24ಕ್ಕೆ 0 ಉದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. This is Ravi Salian Padayuru for you. What a shot! Switch it comes into play. ಬಹುತೇಕ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖಾಂತರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಎ ಹಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೌ 40 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 23 ಬಾಲ್ಸ್. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಆರಂಭಿಕ ಈ ಇರುವ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಾರಿ ಆಘಾತ ಇದು. 2.2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೆ 1 ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಿತೇಶ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೀಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಡಿಯುವಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 31ಕ್ಕೆ 1 ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ 70 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಯೂರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಮಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು ಮನೀಶ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ
ಬಹುತೇಕ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದಂತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುತೇಕ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್. ಚೆಂಡು ದಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಸತತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಬಹುತೇಕ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸತತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 31ಕ್ಕೆ 1 ದಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 70 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31ಕ್ಕೆ 1 ದಾರಿ ನಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So thank you so much, Mushfiq, and well, what a match is in progress. A great and strong reply came from KCR Kadri, but in last over, just lost the momentum what they got. So yes, I request NM Jaipur. I request all the players of NM Jaipur, please report here immediately to sign the official chart. Already Torpedoes Khana, they completed their signature. I request NM Jaipur, please complete the signature as soon as possible. So 4th over going to start here. KCR Kadri have to go long way. Oh, this time lovely delivery. Tanveer, the man of the match in the previous match with this excellent bowling spell, brought into attack. And he starts with a dot delivery. So altogether consecutive 4 dot deliveries. And from KCR Kadri point of view, it's not a good sign. This time Mitesh played it nicely into the long on region for a single. With that single scored moves on to 32 on the board. And man in the picture, the birthday boy today, Rajesh Ubar, is celebrating his birthday. If cameraman will go to catch him. And if you are viewing me, of course listening me, and here is the birthday boy. Yes, Rajesh Ubar celebrating birthday today. They're wishing him very happy birthday. One of the iconic player as far as under-arm cricket is concerned. Age is just a number for him. I'm not saying how much of age, but definitely he is the one is a fantastic performer as far as under-arm cricket is concerned. Yes, again one more single there. With that single scored moves on to 33 for 1. In the over number 4 is in progress. Here comes next delivery. They wanted to go for the cross the line, misses it completely. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದರೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು, ದರೆ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ದರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. This time he wanted to go for the big shot and he got the distance as well. Oh yes, he does. Birthday boy couldn't man. Ashik, he saved the run. He saved the 6. My goodness, can you believe this? This has been outstanding. And Rajesh, the man, the birthday boy, saving certain 6 for his team. Let's have a look at the effort there from Rajesh Ubar. I thought it might be a clean hit, but he played it very high. Rajesh Ubar, and a lovely camera work here from the cameraman of Weatherby. Oh, lovely save. It's been outstanding jump taken by Rajesh, and he's celebrating his birthday in his unique way. Need to be careful, birthday boy. Again, inside edge of the bat, outside edge of the bat of big man Manjunath. He is a key player now. How to deliver some big shots so far? Last 2 overs, they are not having any big shots. 35 for 1, 34 for 1. Correction. Again, wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold of that and properly picked up a single. One more addition. 36 for 1 after completion of over number 4. 2 overs remaining.
34 needed from 2 overs. 12 balls and 34 runs required for the victory. 17 runs per over the required run rate now for the KCCR Kadri. And Tanvir once again being the consistent bowler for the side of young friends Urva. In a very important stage of innings, this came in and it delivers the over which is much required for him. This is one more save. One more view of that save by Rajesh Ubar in a different angle. Lovely piece of fielding there by Rajesh Ubar. "36 for 1. Everyone tried to bounce back, but here in our commentary box and our experienced commentator Abdul Razak Salmara is looking for bouncing back here, not in the form of batting and bowling, but in the form of voice what he has lost yesterday. He's getting some treatment here to get back into the commentary box soon, because his fans and followers just waiting for his voice. And doctor here, it's Pakkade doctor. Ajmal Jokatte given some kashaya for Razak Salma to get back into his natural rhythm in the form of voice is concerned. Meantime, here KCCR Kadri, they got a momentum in the first and second over, but they lost the momentum in the last 2 overs. And once again, they have to bring back that momentum with some big shots. I request the two teams captain, please report here for the tossing ceremony. Torpedoes Kana ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ. So here comes Arshad Bajal. This time clean it, just like I mentioned about. If they wanted to back in the game, then you need to deal with the big shots. And this is a little master. Chota Pack Bada Dhamaka. What a shot. Fantastically struck. Almost ball is in the middle stump and he just grabs it away. Drags it away and then played it to exquisite slog sweep shot down to deep square leg boundary for 6 runs. Now 27 needed from 10 balls. Needed such kind of firework from the bat if they wanted to back in the game. Once again, Mitesh swings and misses. This time Arshad Bajal. It's too clever to watch that intention of the batter as the ball just outside the line of stump, moving away, shaping away from the left-hand batter. And no run scored. It's 43 for 1. On the selfie time, the photo session is going on here with the very popular man in underarm cricket, Rashid Baba. And of course, he also loves the children. Even children also loves Rashid Baba. Again, played it very nice into square leg region. Reform the fielder in the right position. He will go into get the ball. Ample time for Mitesh to complete the single. With that single, scope moves on to 40. 44 for 1. Again, once again, one more wide. It's 45. It's 45 for 1. This is the one over that Arshad Bajal wanted to deliver with the remaining this over. Bowling! Big man departs. Arshad Bajal absolutely produced that ripper. Is bowled absolutely report. You know exactly what the big man is trying for, Manjunath. And the killer of the ball tried to kill the stump here with the ball. Now I think it's a double name I have to be given for this man, because in the present days he also loves to kill the stumps with his bowling. Not only is kills the ball from the bat, but he loves to kill the stumps with his bowling. Outstanding all-rounder Arshad Bajal.
Young friends who know exactly they lost their rhythm. They lost their winning track in the last 4-5 tournaments. Coming towards the semi-final, losing some closing matches. Then this time it's picked that one, but straight to the answer fielder against the direction of the wind. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. The strong breeze which is passing in left of our commentary box from west to east, but he is choosing that one against the direction of the wind. If it is in the morning, you need to find the ball out of the boundary line, but in the afternoon and evening here, it's very difficult to get the distance. The big Arshit is the one more very dangerous batter is back in the pavilion. Torpedoes Khana, their teams and managers, the mentors, everyone are ready to take the next match. It's going to be a big match here for both the teams, NM Jaipur and Torpedoes Khana. And more than Torpedoes Khana, I think NM Jaipur, the fan followers, they certainly wanted the team when they were coming to this their right track. The track was missed after so many years. They are the winners of Souhard the Trophy Season 2. And young friends Surua, they are the champions in Season 3. So both the teams desperately wanted to back in this track. But KCC Kadri do or die situation now. 25 needed from last over. And having Ritesh in the middle and the experienced batter Dilip is in the middle. I think it can be a possible, but Hafiz is looking so good in this particular tournament. Especially in the first match, he's been fantastic. And now he starts with a delivery which is punished by umpire Ranjesh. The 46 now, 24 needed for the victory. And very surprising that Hafiz has been introduced for only 1 hour in this match. Oh, just about him, cleaned him up. Hafiz, I've already mentioned. I'm really surprised why the captain is left him not to come and bowl in the power play over, because he's bowled fantastically in the previous match with the pace. One of his success in the previous match, because he's generating a lot of pace. Just have a look at the delivery. This is absolutely came in at such a pace. No time for Mitesh to react. The 46 for 4 now. Last 5 balls remaining. 24 runs required for the victory. The new batter came into middle. Do or die situation. Now here we can see some the friendly chatting with the different team. Team Matrix Riaz along with Shakir, Rafiq, Ayaz. Everyone is enjoying. This time he lofted it and finds a fielder. Sajid has taken that straightforward catch. The jersey number 18. The batter is back in the pavilion of team KCCR Kadri. Jitu, the fielder, umpire saying that exceeds the time limits the fielding team. Praveen, the new batter, walking towards the middle. Praveen now looks like now he's on hat-trick. Hafiz is on a hat-trick. This time a lovely delivery. Again, have a look at the pace there from Hafiz. Definitely is going, it can be a useful bowler for the young Fred Surwa in the future. The way that is handling the pressure. And again played it. Oh, back to bowler. Chance of caught and bowled and chance of run out, and both are missed. So NM Cricketers Mangalore
now. I'm just watching Khalid of NM Cricketers Mangalore. After a long time, I'm watching him in ground and along with the team NM Cricketers Mangalore. Will going to give some kind of level of confidence because experience always comes into play. Drives that one down to extra coverage and will going to pick the boundary. Dilip, it's too late for them. Ajmal is absolutely absence of mind. Is an absence of mind. He's in the long off region, but he's not really aware of the ball is coming to that long off region. And late Latif. Again outside the line of stump. That's it. Huge victory. The victory of 18 runs for KCCR Kadri. For correction for Young Friends Surua against KCCR Kadri. Congratulations Young Friends Surua for the huge victory. They won this match by 18 runs. Congratulations. And we are ಎಸ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಾಜಿದ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಜಿದ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಜಿದ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಗೆ
ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. Hello, 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 hello. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬಂದೊಮ್ಮೆ ಆಲಿಸಿ. ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆಕ್ಟಿವಾ ಇದರ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕಾವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆಕ್ಟಿವಾ ಇದರ ಕೀ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಕಾವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲುಪಿಸಿ. Hello, hello, hello. ಎಸ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸ್ಕೋರ್ 25 ರನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, 25 ಓಟಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಾಜೀದ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Hello, 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 hello. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ್ಯ ತಂಡಗಳು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಡುವೆ ನನ್ನಿಚ್ಚುಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತರಕ್ಷಣಿ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್, ತೌಫೀಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಇವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚೇತನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಬದಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇತರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ. ಜೆರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಂತ ತೌಫೀಕ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭ. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಇವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿಯದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಸ್, ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಸ್ಕೆಟಿ ಸೌಕತ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಜೇಶ್
44th, ಎಸ್ 44th, 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದು. 40th ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕ್ಷಾರಗೊಳ್ಳಲಿ. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 40 ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್. Oh, what a shot this is from the bat of Tawfiq. One bounce into the fence for ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ ಇದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳು, 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗೆ ತೌಫಿಕನ ಕಡೆಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಓ ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹಾರಿಸ್ ಸೇತ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ 40 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶುಭಾರ್ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಬಹುತೇಕ ಸುದೀರ್ಘ 1.5 ದಶಕಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತೌಫೀಕ್ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೇತನ್. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾಯ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಹುತೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಟ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಶಾಕೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಶರಣ್ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಇರುವ ಸೇತ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಶಾಕೀರ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಶಾಕೀರ್ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಕಡೆಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳಿತು. ಬಹುತೇಕ ಗೂಟ ಪಾಲಕನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನವಿಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 19. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ತೌಫೀಕ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಿಯಾಜ್ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19 ಬಂದಾಗಿದೆ. 2 ದಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವುಗಳು ಎದ್ದೇಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚರಣ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗನ್ನ ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಕಡೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. ಅನಗತ್ಯ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಾರಿ ಇದು. ಅನಗತ್ಯ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಥ್ರೋ, ಬಹುತೇಕ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಪ್ಪು. ಥರ್ಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್. 20 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ನಂಬರ್ 5 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಕೇಶ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮನ್ಸೂರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನ್ಸೂರ್. ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಅಶ್ರಾಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು. ಬಹುತೇಕ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಪ್ಪು. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವೀಪ್ ಇದು. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ 2 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ. 2ರ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆದಂತಹ ಓಡಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಕೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2.4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2.4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ರನ್ದಾರನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್, ನಂಬರ್ 6ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ನಿಜಾಮ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 25 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಇದು ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, 5 ಎಸೆತಗಾರರು, 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3, 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಟ್ಸ್ 25 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 25ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 25ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು. ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25-18 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ಎಂ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So thank you, Mushfiq. So we are coming into the over number 4, which is starting here from Chetan. Chetan brought into the attack for the over number 4, and it's going to be Sukesh at the facing. And looking at the game, Torpedoes Khana, they're looking in a comfortable position at the moment. And here we go, one more breakthrough. The finger isn't from the main umpire. Sukesh has to walk back towards the pavilion. This is a wicket which is required here for Torpedoes Khana. And they're getting the success as well. You can watch it in the replay as well. There's a clean plumb in front of the wicket. Straight away, umpire lifting his finger. Azmal Jokat along with Harish Padil at the square leg umpiring duty. Harish Padil, more than 25 year experience in the umpiring duty. And also we have 2 more experienced umpires. Vivek Challenge Bolur and Ranjay Shuchil. So 4 umpires. This is a very good experienced and a very qualified umpires panel. We are having this prestigious Souhard trophy, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle. Day and night cricket tournament at this green ground Derlakatte. Today as well as yesterday. This is day number 2, the final day of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy 2026. This is season 5, which is in progress. With the first cash of 1,50,000 and second cash of 75,000 and Souhard Trophy 2026. All the teams, they want to enter into that mega final. They want to make one trophy.
So Imran at the facing end. Oh, swept the ball perfectly. Oh, directed could send him back to the pavilion. But the throw which is missing from the hands of Chetan. Chetan, who's standing at that short square leg region, couldn't manage to give the ball rightly. He was double-minded, I think, because he is thinking that maybe there's a bowler to collect at the bowling end. But he half-heartedly took that directed towards the wicket. And it completely misses the target. So Imran is quite safe on his mark. So Atif at the facing end so far has faced a single delivery. Yet to open his account. Atif at the facing end. Chetan to Atif. These two have a long history of knowing each other very well. Oh, that's a fantastic delivery coming in from Chetan. So leg by which has been signalled from the main umpire. Again Atif still yet to open his account. And we are also having Kadala Siddiq here in the ground, selling his peanuts. And as Satish Salian sir already mentioned that it's a nutritious food. And we are watching him in the screen as well, Kadala Siddiq. So 28 for the loss of 5 wickets in the scoreboard. 3.4 overs are complete. Chetan has got last 2 more deliveries in this over. Chetan, will he be able to get a breakthrough? 28 for the loss of 5 wickets. And Jaipur, they are definitely struggling to put runs on the board against this strong bowling lineup of Torpedoes Khana. Again, Atif fails to score runs with the bat. This is the 3rd consecutive delivery he has played, but couldn't manage to get any runs. Yet to open his account, Atif. So 28 for the loss of 5 wickets. And what a pitch we have the organizers have prepared for this wonderful cricket tournament. It's absolutely very well balanced for both the batters and the bowlers. It's helping even that bowlers who are bowling along the carpet are having a lot of advantage as well. I just swept the ball, a ball which is going into that leg side of the wicket. From the fine leg region, Sharan collected the ball quickly and threw it towards the wicket-keeper's hand. And the decision which has been referred from the square leg umpire, Harish Patel, to the 3rd umpire. Vivek, challenge bowler, is going to check that decision for the run out. Is Atif safe? It's a question mark here for the fans and supporters and also the players and the dugout of team NM Jaipur, because if Atif, it looks like it's a very close call and umpires are checking from all the different angles. Mangalore media providing this tournament with a wonderful live telecast with 4 cameras covering all the 4 parts of the ground. And every small and minute details have been covered in this tournament from Mangalore media team. The cameramans are doing a wonderful job. And the technicians behind Mangalore media, Ashfaq and Tushar, they are also doing a great job in operating the system behind the scenes for this Mangalore media team, which is greatly led by Salam and Kamal, 2 brothers. So yes, out is a signal from the 3rd umpire, and definitely Atif very, very disappointed because he knows his wicket falling at this situation is going to be very, very bad situation for team NM Jaipur. And his bat was landed but couldn't manage to keep it inside that crease line. It was just touching that on the line. And 3rd umpire, having that all the angles provided from the technicians of Mangalore media, just did so easily that it's going to be out. So Atif back into the pavilion. And new batsman walking into the middle, Ayaz.
29 on the board for the loss of 6 wickets. 29 on the board for the loss of 6 wickets. Last 2 overs which is still remaining. And Sharan, one of the express bowlers from the side of Torpedoes Khana. Sharan, what a career he has witnessed. A top class bowler. He's become elite level pace bowler for Torpedoes Khana. And he's been called on to bowl this penultimate over. This is a very important over he's bowling in the perspective of the game. Oh, struck that one pretty well, Imran, but ball which is going into the hands of Pradeep Rai. Is one of the best fielders outside the 30-yard circle. Very quick in covering the boundary lines. If you have him in one region, he can cover almost 2 fielders' job single-handedly. He is such a quality fielder. Always running all parts of the ground, Pradeep Rai. And now they're making some changes in the fielding department. Torpedoes Khana, they're exactly knowing that the changes which is required according to the batters. And Ayaz at the facing end. Ayaz, very clean striker. And a well-rounded all-rounder for the side of team NM Jaipur Mangalore. Oh, beautifully played that one. Pradeep, will he be able to stop that one? In fact, even the bestest of the bestest couldn't manage to stop that one from crossing the fence. Pradeep, as I was mentioning earlier, is one of the best fielders in the boundary lines. If he can't manage to stop that one, no one else can. And that crosses the fence very quickly for the boundary. Well-rounded batting. This is coming from the bat of Ayaz. According to the situation, he's playing a very matured innings. He's become a very matured cricketer as well. Starting off with this home team, South Sporting Jaipur. And then making his debut with the NM Jaipur. And then he's had a lot of ups and downs in his career. But what an innings he has played throughout whenever he has represented his team NM Jaipur. So 34 for the loss of 6 wickets. 4.3 overs proceedings are complete. Sharan again. He needs to make a comeback. Both the players are coming. Oh, Shakir beaten by that quick pace of Sharan. Ball which is deviating. And boundary which is signalled. And for the white check, third umpire's help has been taken from the main umpire, Harish Padil. More than 25 years of experience. And umpire, you want to make sure that double check is made on that white ball. So wide delivery is a signal from the third umpire, because the ball which is going, if Harish Padil takes a review, then you know that it's very close, because a lot of experience, one of the most experienced umpires in this umpiring duty. On the line, that's the reason why ball which is going to be called as a wide, and the third umpire judging it very clearly, and even the team of Mangalore media technicians doing a great job in showing different angles, and also the cameraman doing a great work behind that delivery. The whole tournament, I think, which has been made more memorable with the work of Mangalore media throughout this tournament, showcasing all that drone footages as well. They are covering all parts of the ground, even the Derlakatte city, which is under the night time, which looks great. It's becoming one of the most popular hubs. Oh, that top edge of the bat, mistiming, which is coming from Ayaz. Is thinking that the ball which is coming very quick along the carpet, wanted to sweep it across the line of the delivery, but couldn't manage to get it perfectly. Top edge and ball travels now to that short backward point region. Sinan collects it perfectly without any mistake. Now the scoreboard is up for team NM Jaipur, 40 up for them in 4.4 overs proceedings. They were struggling at one time to make runs on the board, but now all of a sudden they are looking very comfortable in the middle. NM Jaipur, Imran and Ayaz. Imran at the facing end. Imran has so far faced 3 deliveries. Oh, wanted to go across the line of the delivery, and against Sharan's pace, it's not so easy job at all for the batsmen to go for the big one. And time which is up for Torpedoes Khana. Very early they are getting that timeout,
and they have wasted a lot of times, it seems, in this first innings. And for the next match, I request team Najat Friends and B-Boy Salekala, please immediately come for the signing procedure. B-Boy Salekala and Najat Friends. This is a quarter-final match of the Pool A, Ullal Division. Ullal region teams which competed in the Pool A. 8 teams and now 2 teams which is remaining. And ball which is racing towards the fence for 4 runs. Hamano Sengadi couldn't manage to stop that one. And it goes all the way. Imran plays a very good knock. Fantastic improvisation from Imran. In the previous ball, he tried to hit across the line of the delivery into the onside of the wicket. But he goes straight now and gets a boundary added. He sees a gap in that long on fielding region and he exploits it perfectly. Experience always comes into play whenever the situation requires it to be. So 44 for the loss of 6 valuable wickets for NM Jaipur. Ayaz came in at 8th position, and after he and Imran joined in the middle, they have been putting a good partnership for the wicket number 7. This looks like the partnership which is taking team NM Jaipur towards a big total. So 44 already registered. Even if they can manage to get in there 6 runs in this remaining 6 balls of Haris, they can easily cross that psychological advantage point. That is the 50-run mark in this ground. Is going to be a good total on the board. A dependable total on the board. So Aris balls. So the ball which is going almost close to that legs, and they are appealing for the leg before wicket as well. And main umpire Asmal Joker is saying you are coming right in front of me, and even bowler Aris also agreeing that yes, I'm standing right in front of the umpire. That's a good thing to see from Aris as well. One of the most decent cricketers. Aris once again takes his time balls. Brilliant delivery. Brilliant delivery. That's a fantastic delivery. Beaten by that turn. Fantastic delivery which is coming in from Aris. And especially in the death overs, he is a very specialist bowler. Especially for the last overs. He is always kept reserve for the last overs because he is one bowler who has mastered that bowling the last over. And Ari is doing a great job here. 5.2 overs proceedings are complete. So 45 on the board. Just swept the ball and they're going for the run as well. They quickly completed that single between the wicket. So 46 runs on the board. Oh, just played nicely into that square leg region where Chetan did a great bit of a fielding. Excellent fielding experience once again showcasing from Chetan. So last 2 more remaining. So just a single they managed to get into the scoreboard. So last 2 more remaining. I request for the next match Najat Friends and V-Boy Salekala, please immediately complete the signing procedure. The match which is going to start exactly at 5:30. And once again, team Torpedoes Ghana, they are losing one more fielder from the 30 yards, from the boundary line. They're being called into that 30-yard circle. And we have one more umpire joining us for this umpiring panel of this Souhard trophy. Rajesh Padil, the main umpire, joining, one more umpire joining for this prestigious Souhard trophy. And driven that one nicely. They managed to get in a couple of runs. Oh, in fact, throw which is coming wide off the wicket.
and NM Jaipur. Torpedoes Khana and NM Jaipur. This is a match which is progressing here. First innings which is completed. Exactly 50 runs on the board. Exactly 50 runs on the board. And 51 is the target for team Torpedoes Khana. Yes, we are also having one of my good friends joining through video call for this prestigious cricket tournament. Ramshi KC Road is watching. Absolutely one of the fans of Shakir. He absolutely supports Torpedoes Khana as well. So sending in the best wishes as well. Ramshi Medical, thank you so much for your best wishes for this tournament as well. And thank you so much. And for the next match, I request a team B-Boys Alekala and Najat friends. Please immediately report to the mic point for the tossing ceremony. I request both the teams, Najat friends and B-Boys Alekala, please complete that signing procedure if any players is remaining to complete your signing procedure, and send in the captain immediately for the tossing ceremony. I request Najat friends and B-Boys Alekala. That's a first quarter-final match of this prestigious Souhard trophy. And welcome for Rajesh Fadil into the commentary box. One of the experienced umpire. And changes here in the commentary box for the chase which is starting here from Torpedoes Khana. I'm heartily welcoming once again Gopi sir into the microphone. The target of 51 on the board for Torpedoes Khana to chase down in 36 balls. Is it going to be chaseable? And that question is for Gopi sir. Over to Gopi sir. धन्यवाद रशीद आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। तो जहां तक सवाल इस वक्त द टारगेट इज 51 फॉर तो जहां तक सवाल है इस वक्त 51 रनों के लक्ष्य का। 51 द टारगेट फॉर Torpedoes Khana सेट बाय NM Jaipur had batted first. They managed to score 50 runs exactly, and now the target is 51 और इक्वल कंट्रीब्यूशन सब खिलाड़ियों ने दिया। और जहां तक सवाल है इस वक्त इमरान और अयाज ने बेहतर बल्लेबाजी की। इमरान नाबाद रहे 8 रनों पर, अयाज नाबाद रहे 9 रनों पर। और जहां तक सवाल है आरंभिक बल्लेबाज राशिद बाबा जिन्होंने 9 रन का योगदान दिया। और इस वक्त 51 रनों का स्पर्धात्मक लक्ष्य इस वक्त तय कर चुका है। NM Jaipur और बासित और शाकिर आरंभिक बल्लेबाज। 51 द टारगेट इन 6 ओवर्स। और एक हाई वोल्टेज मैच का द्वितीयार्ध इस वक्त शुरू होता हुआ। और गेंदबाज आतिफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप बासित के लिए। गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट। थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी इस वक्त। बासित इस गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए। गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। दर्शकों से मैदान लगभग भरता हुआ और निश्चित रूप से भरनी भी चाहिए। एक बेहतरीन हाई वोल्टेज मैच इस वक्त प्रगति पर Torpedoes Khana और NM Jaipur के बीच। और बासित इस वक्त सामना करते हुए आतिफ की गेंदों का रिवर्स शॉट। गेंद को खेलना चाहा, गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर टकराई। इस वक्त 1 रन का इजाफा। और 1 रन के इट्स ऑफ द बैट इन फैक्ट नो इट्स अ लेग बाइट। नाउ द डिक्लेरेशन केम फ्रॉम द एम्पायर। और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो शाकिर इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर के लिए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। यह गेंद शाकिर के लिए खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल। और गेंद इस वक्त डीप एक्स का वसीम मारेगा जब बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्ट्रक केम टू द बैट ऑफ
शाकिर दिस टाइम मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी और गेंद को खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान खेल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद खूबसूरती के साथ निकलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर, 5 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निसंदेह टोटप्रोडोस्काना के बलाढ्य बैटिंग लाइनअप पर अगर नियंत्रण प्राप्त करना है तो इस वक्त एनएम जप्पू के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। और शाकिर का स्ट्रोक था काफी बेहतर, कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद को निकाला था इस वक्त 4 रनों के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर। इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार आतिफ, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शाकिर के लिए टॉप है जिस वक्त, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया था लेकिन पहुंच नहीं पाए और जब तक गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर पीछे की ओर जाकर फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total, 7 on the board in the over number first in progress। 4 गेंदों में इस वक्त 7 रन प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज आतिफ और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार शाकिर के लिए। यह गेंद बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद को स्वीप करना चाहता चूंकि 1 रन का इजाफा सिली पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 8 रनों पर, 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। आतिफ 5 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, केवल 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। आतिफ यह गेंद बासित के लिए स्वीप किया, शॉट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी झिझक इस वक्त दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए इस वक्त सुरक्षित। और जहां तक सवाल है रनों का तो 8 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। 8 विदाउट लॉस, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, स्टेडी स्टार्ट फॉर टोटप्रोडोस्काना चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 51 in 6 overs। They made 8 runs. They scored 8 runs after completion of their first over. Let's straight away. रियाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 43 runs more now they have to score for victory in remaining 30 deliveries and the required run rate is exactly 8.60 runs per over। रियाज इस वक्त एनएम जप्पू के प्रमुख गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार शाकिर और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर टोटप्रोडोस्काना की पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ और फील्डिंग में जमावट करने के बाद रियाज ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर जो कि सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद 100 स्ट्रोक, फैंटास्टिकली स्ट्राइक बाय शाकिर दिस टाइम। और ऐसे स्ट्रोक सिर्फ शाकिर ही खेल सकते हैं। अंतिम क्षण में एक हाथ से बल्ले को छुड़ाते हुए सिर्फ एक हाथ से स्ट्रोक उन्होंने स्कूप कर दिया, खूबसूरती के साथ मोड़ दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्ट्रोक खेला था, 100 स्ट्रोक का निश्चित रूप से चौका यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। एक जमाने में तब 90वें 80वें 90वें दशक में गोरियंग बॉयज के बेहतरीन खिलाड़ी इकबाल ऐसे स्ट्रोक्स खेला करते थे और निश्चित रूप से इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक को खेला शाकिर ने, इकबाल की याद जरूर इस मैदान पर आते हुए। तो जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार है, ये गेंद स्वीप किया एक बार फिर से शाकिर ने, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट की दिशा में, गेंद जाती हुई गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से गेंद को इस वक्त निकाला था खूबसूरती के साथ और 2 रन प्राप्त करने में सफल। तो आमतौर पर पावर प्ले में बासित आक्रामक साबित होते हैं, लेकिन यहाँ पर शाकिर आक्रामक साबित होते हुए और बासित को अपनी अभी भी अपना खाता खोलना बाकी है, जबकि शाकिर 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। सिर्फ 4 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है और इस बीच रियाज दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, डेलिकेटली प्लेड दिस टाइम वंस अगेन बाय शाकिर इनटू द गैप एज वेल। लंबा दौड़ लगाते हैं, फील्डर गेंद को रोकने में सफल, इस बीच 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। खूबसूरती के साथ विद अ ट्विस्टेड बैट गेंद को खेला था इस वक्त पॉइंट और
गली के दरमियान और 2 रन बटोरने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 16 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रियाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शाकिर के लिए। यह गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम रियाज। एक्स्ट्रा क्विकर लगभग जमीन के सहारे आते हुए और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 16 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। रियाज फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शाकिर के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। He's got a single. With that single run, the scoreboard moving up to 17 on the board. Yet to lose any wicket in the over number 2 in progress. 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं। बासित इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद लेकर रियाज इस वक्त तैयार बासित के लिए। और पावर प्ले की इस अंतिम गेंद पर देखते हैं बल्लेबाज इस वक्त किस तरह का स्ट्रोक अपनाते हैं। बेहतर गेंद इस वक्त पैरों पर टकरा है। सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड गेंद पहुंची इस वक्त गली की दिशा में। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज रियाज की और इस अपील को नकार दिया अंपायर ने। 2 ओवर की समाप्ति। 10 runs came from this over and after 2 overs now I must say Topodos Kana looking in a good situation. It's 18 for none after 2 overs. 33 more runs. Now they have to score for victory. In remaining 24 deliveries and the required run rate is now exactly 8.25 runs per over. 33 रनों के दरकार बचे हुए 24 गेंदों पर। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए इंडियन जप्पू के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है और बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त एक बार फिर से सौंपा गया है आतिफ के हाथों में, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 7 रन प्रदान किए थे और कुल 8 रन उस ओवर में बना था। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और बासित इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। शाम का वक्त लगभग 5 इस वक्त बज चुके हैं। धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद है। सूरज मैदान की दाईं और अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर धूप की तीव्रता भी कम होते हुए और इस बीच आतिफ ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बासित इस वक्त सपना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। गेंद स्टंप्स पर टकराई है, नहीं देखना पड़ेगा। अपील इस वक्त जारी है और जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर ने कुछ जरूर कहा विकेट कीपर से और शायद विकेट कीपर का पैर स्टंप्स पर टकराया था, तो इस वजह से बल्लेबाज सुरक्षित था। लेकिन बेहतर गेंद थी जरूर इस वक्त आतिफ की। और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 18 विदाउट लॉस। नाउ 23 balls left and 33 runs required. आतिफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बासित के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार आतिफ, इस बार बासित का स्ट्रोक खूबसूरती के साथ नहीं। गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से रोका गया है। यहाँ पर बेहतर फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर करते हुए काफी दमदार स्ट्रोक था इस वक्त बासित का। और देखना चाहूंगा कि क्या असल में क्या हुआ था। वहां पर गेंद को उछाला था लंगन पर, फील्डर ने जीतोड़ कोशिश की लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाया और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 19 ऑन द बोर्ड, 32 टू गेट फ्रॉम 22 डिलीवरीज। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग। और एक हाई वोल्टेज मैच इस वक्त प्रगति पर और आतिफ इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट शाकिर के लिए यह गेंद, शाकिर ने इनसाइड आउट क्रिकेट खेला है। गेंद जाती हुई इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में काफी लंबा दौड़ लगाते हुए रियाज गेंद तक पहुंचे। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया उन्होंने, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त शाकिर का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर 2 रनों के लिए। 21 ऑन द बोर्ड। नाउ इक्वेशन स्टैंड्स 21 balls left, 30 runs exactly required. और आतिफ इस बीच तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट शाकिर के लिए 100 स्वीप। दिस इज एन एब्सोल्युटली एब्सेंस ऑफ माइंड इस वक्त शाकिर द्वारा। और यहाँ पर विकेट कीपर तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस विकेट का, तो देखते हैं यहाँ पर असल में क्या हुआ था। रिप्ले रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि यहाँ पर विकेट उखाड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही विकेट बल्लेबाज क्रीज से बाहर की ओर निकले एक गेंद के साथ विकेट स्टंप से इस वक्त उठा चुके हैं विकेट कीपर। और यहाँ पर देखना है कि बल्लेबाज यहाँ पर बचते हैं या नहीं। तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए देखते हैं आखिरकार इसका परिशीलन करने के बाद यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहले प्रयत्न में जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का पैर शायद क्रीज पर मौजूद था, लेकिन जब दूसरे प्रयत्न में क्रीज से जैसे पैर बाहर निकला स्टंप्स के साथ इस वक्त गेंद को इस वक्त
उठाई थी। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए, और देखते हैं यहाँ पर वो क्या निर्धार देते हैं। जहां तक सवाल है इस वक्त निर्णय का, तो निर्धार का अभी भी इंतजार है। एक बेहतरीन मैच यहाँ पर खेला जाता है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 विच इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय डेलकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड। और इस बीच परिशीलन पार करते हुए, और जहाँ तक सवाल इस मैच का, तो दूसरे दिन का छठा मैच यहाँ पर प्रगति पर। 6th मैच ऑफ द डे 2 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और इस बीच तीसरे अंपायर यहाँ पर परिशीलन करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहां तक मैच का सवाल है, अभी भी ऐसा करना पड़ेगा। द मैच स्टिल स्टैंड्स इन अ बैलेंस, अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। और एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर इस प्रतिष्ठित इन दोनों टीमों के बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी नज़दीकी मामला इस वक्त। और जहां तक लाइव टेलीकास्ट का सवाल है इस वक्त, मैंगलोर मीडिया के कैमरामैन टेक्नीशियन ने इस वक्त एक बेहतरीन रिप्ले प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और देखते हैं अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद तीसरे अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। So no doubt is the call and the batsman survived. शाकिर इस गेंद पर बच चुके हैं अंतिम क्षण में। तो जब विकेट उखाड़े गए थे तब गेंद अलग हाथ में था और विकेट दूसरे हाथ में था। हालांकि देरी के से गेंद विकेटों को उन्होंने लगाई थी। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर का, तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए, तो तीसरे अंपायर ये कहते हुए, और देखते हैं यहाँ पर असल में क्या होता है। तो
So decision came from the third umpire and after all not out is the call. जब स्टंप्स इस वक्त जमीन से अप्रूट हुए थे तब गेंद स्टंप्स के साथ रहना जरूरी था, तो गेंद अलग हाथ में था और स्टंप्स अलग हाथ में था। तो जहां तक सवाल है तीसरे अंपायर कहते हैं कि स्टंप्स जब अप्रूट हुए तब गेंद को स्टंप्स के साथ रहना चाहिए था, तीसरे अंपायर ने ये कहा। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज शाकिर इस गेंद पर बच चुके हैं। और काफी नजदीकी मामला इस वक्त है, लेकिन भाग्य इस गेंद पर शाकिर का साथ देता हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 21 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 30 रन और चाहिए यहाँ पर विजय के लिए, जबकि 20 गेंदें और बाकी 20 बॉल्स लेफ्ट, 30 रन रिक्वायर्ड। द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड और आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार शाकिर के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद शाकिर का स्ट्रोक इस वक्त लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज का नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। मैग्निफिसेंटली स्ट्राइक और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे जीतोड़ कोशिश जरूर की थी लंगोन पर अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपकने की, लेकिन जीतोड़ कोशिश करने के बावजूद यहाँ पर देखिए किस तरीके का स्ट्रोक था और निश्चित रूप से गेंद हवा में ट्रैवल करते हुए लंगोन फील्डर ने जीतोड़ कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर सीधे फ्लेक्स पर टकराते हुए और 6 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए शाकिर। और इस छक्के के साथ समीकरण आसान हो चुका है। अब 19 बॉल्स रिमेनिंग, 24 रन रिक्वायर्ड। और आतिफ अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और बार बार देखिए छक्के को दिखाया जा रहा है। जस्ट स्टैंड एंड लॉफ्ट दैट वन बाय शाकिर, फैंटास्टिक स्ट्राइक। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद एक बार फिर से शाकिर का स्ट्रोक। दिस इज गॉन बिगर देन द प्रीवियस वन। इट्स अ बिग नंबर 2 इन दिस ओवर and with this 6 I must say Torpedoes Ghana for the first time they are looking right on top. 2 consecutive sixes from Shakir. This is the second one. Have a look at this in the replay. Just stand and delivered. Better than the previous one. And he's got the distance at last. Now, equation stands. 18 balls left, 18 runs required. और स्कोर है इस वक्त जहां तक सवाल है 33 रनों का। 33 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs. Torpedoes Ghana looking in a commanding situation. 3 ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदें बाकी, 18 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए। और निश्चित रूप से पिछला ओवर मैं जानना चाहूंगा पिछले ओवर में कितने रन बने थे। 15 रन स्कोर्ड फ्रॉम द लास्ट ओवर। 15 रन अंतिम ओवर में बने। और हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा पहले 4 गेंदें इस वक्त बेहतर फेंके थे आतिफ ने, लेकिन उसके बाद अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्का जो शाकिर ने लगाया उन 2 छक्कों की बदौलत इस वक्त टॉर्पेडोज घाना इस मैच में वापस आ चुका है। सो 3 ओवर के समाप्ति और चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हैं। डबल स्टार्ट फ्रेश प्रोसीडिंग्स। अयाज अब निश्चित रूप से कम बैक करने के लिए एनएम मजप्पू को चाहिए घातक गेंदबाजी। और ओवर की पहली गेंद लेकर अयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। ये गेंद बासित के लिए स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 1 रन एडेड टू द टोटल विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 34 विदाउट लॉस। और यहाँ पर कम बैक करना है एनएम मजप्पू के गेंदबाजों को, तो इस वक्त विकेटें उखाड़ने होंगे, खासकर इस आरंभिक जोड़ी को यहाँ पर तोड़ना होगा। और शाकिर जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, बैटिंग ऑन 30 इन जस्ट 12 डिलीवरी। शाकिर ये गेंद 100 स्ट्रोक खेलना चाहा लेकिन नाकामयाब और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन मिलेंगे 8 ऑफ द बैट इज मूविंग अप टू 31 नाउ इन जस्ट 13 बॉल्स ही स्कोर्ड एंड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 240। और इस बीच 35 रन बन चुके टॉर्पेडोज घाना। 35 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त तैयार था। तो पर विकेट बासित के लिए गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा। थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। फैंटास्टिक ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर फॉर टॉर्पेडोज घाना। बासित और शाकिर, खासकर शाकिर इस वक्त पारी के भागदौड़ को संभाले हुए एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा शाकिर ने, रन 2 कदम आगे जरूर बढ़े। ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 1 रन पूर्ण कर चुके, दूसरे रन दौड़ पड़े हैं और 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो इस वक्त
एनएम मज्जप्पो के देह भाषा से पता लगता है इस वक्त कुछ खास दिलचस्पी वो इस बात में नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर रन से जो कि आसानी के साथ बनते हुए 38 रन इस वक्त पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी कम बैक करने का मौका है एनएम जप्पो के गेंदबाजों को। और अगली गेंद लेकर तैयार शाकिर के लिए, इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पर ऊपर टकरा कर पहुंची शॉर्ट लेग पर 1 रन का इजाफा। नाउ द स्कोर इज नाउ मूविंग अप टू 39 विद दैट सिंगल in the over number 4 in progress. 13 balls left and 12 runs required. The equation, in fact, 13 balls left and 12 runs required. अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, गेंद को खेला, कवर पॉइंट पर रन आउट का खतरा, लेकिन नहीं, काफी ऊंचा थ्रो इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर रियाज द्वारा 1 रन का इजाफा। रियाज का थ्रो इस वक्त पर्याप्त नहीं था बल्लेबाज को आउट करने के लिए। 4 overs gone, 40 without loss. Topadoskana looking in a good situation. 11 runs to get from remaining 12 balls. 12 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए। और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही, मैजिकल बॉलिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एनएम जप्पो को इस मैच में वापस ला सकते हैं। लेकिन मौका जरूर है यहाँ पर इन 2 ओवर में एनएम जप्पो के गेंदबाजों को कम बैक करने का। और कई प्रेक्षक इस वक्त मैदान पर कुछ दीवार पर बैठे हुए इस मैच का आनंद लेते हुए मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है। निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 विच इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय देरलकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड। और एक बेहतरीन मैच यहाँ पर प्रगति पर, मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत दूसरे दिन का इस वक्त प्रगति पर। और जहाँ तक तो इस बीच पहली गेंद लेकर गेंदबाज सुकेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, 11 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल। फर्स्ट बॉल बासित का स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, दौड़ लगाते हुए फील्डर इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, थोड़ी सी मिस फील्ड के बाद बल्लेबाज 3 रन के लिए दौड़ पड़े और 3 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। विकेट कीपर सादिक के हाथों में जब तक गेंद पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। 43 विदाउट लॉस, नाउ जस्ट 8 टू गेट फॉर विक्ट्री. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಳಿಕಲ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾ ಈ ವಿನಂತಿ. 8 runs to get from 11 deliveries और शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. सुकेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट, वन हैंडेड जस्ट वाइड ऑफ द फील्डर एंड इट्स क्रॉस ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री. This time he just played that one. The ball was went in the air but it went just wide of the fielder and shot third man. और इस चौके के साथ और विजय के निकट होता हुआ टॉर्पेडोस का शाकिर मूविंग अप टू 38 now with about have a look at this is the replay. फुल टॉस गेंद पर गेंद को रिवर्स शॉट खेला था with one hand stroke. स्ट्रोक इस वक्त प्राप्त करते हुए अगली गेंद अगेन रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक and Shakir looking absolutely in a good touch. The scores, no, in fact, victory for Topadoskana. They reached the huge target of 51 in just 4.3 hours. Fantastic innings from Shakir, who remained unbeaten on 42 of just 17 deliveries. और विनिंग स्ट्रोक इस वक्त देखिए किस तरीके से खेला था with a reverse shot, with a twisted bat, played that one fine, with that boundary. Topadoskana registered a comprehensive victory, big margin victory by 10 wickets with 9 balls to spare, all because of this man. Monitor पर दिखाया जा रहा है Shakir, who remained unbeaten on 42 of just 17 deliveries, with a strike rate of almost 250, and because his fantastic batting knock, Topadoskana through to the next round of this competition, defeating NM Jaipur in a high voltage encounter. So man of the match, undoubtedly the man who batted fantastically. Fantastically batting display came from Shakir, who remained unbeaten on 40 runs. In fact, हालांकि मॉनिटर पर 42 रन दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में शाकिर ने बनाए थे 40 रन 17 गेंदों पर. 2 रन जो बाई का था वो शायद इस वक्त बल्लेबाज के खाते में जुड़ चुका है. तो मॉनिटर पर इस वक्त स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि 42 रन है, लेकिन असल में शाकिर का स्कोर है 40 रन. रिमेंड अनबीटन ऑन 40 इन जस्ट 17 डिलीवरीज एंड विद this victory.
So next match is now going to play between the B boys. Alekala versus Nazat friends. One more good match is now coming up, and that match starts with just short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. I request the captain of B boys as well as Nazat friends Ulal, please report here immediately for the tossing ceremony. So man of the match, I request Shakir, please come to the presentation dais and receive your man of the match once again. The second consecutive time, Shakir will going to receive the man of the match award. He is in once again one more fantastic knock from him, unbeaten, 42 runs in just 17 deliveries. He is absolutely unstoppable in this particular season from the bat and ball. I request Shakir to please go and collect your man of the match award. At the same time, I request NM Cricketers Mangalore, the captain, kindly request to receive that memento from our chief guest for representing in this prestigious cricket tournament. And thank you very much, NM Cricketers Mangalore, for your wholehearted support for this prestigious cricket tournament. I request Sadiq DFC. Sajid DFC, kindly request you to present the man of the match award. Sajid ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Sajid of DFC.
ಶಾಕಿರ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So Shakir receives the man of the match for his blistering knock and explosive knock of 42 runs in just 17 deliveries. And Sajid of DFC, they're presenting the man of the match award. 40 runs we scored in 17 deliveries. What an innings he's played for his team and deserve the man of the match award second consecutive times. I request NM Cricketers Mangalore captain or any player NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ NMನ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ So Ramsey Medical KC Road, one of his close friend and his his teammate is wishing congratulating Shakir for his wonderful and match winning knock. ಅಲ್ಲಿ K19 MM3433 ಈ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. K19 MM3433. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಜದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ನಜತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸೊ ಎಸ್, ನಜತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತರದೇ ಇರಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ this is the final day of Souhard trophy. We are humbly requesting all the fans and the spectators, please come out of the ground, vacate the ground immediately. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮೈದಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ. ಸಾಹಿಲ್ ನಜತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಹಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಜತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.
ಸೊ ಎಸ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಇಳಿಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆತೀಫ್ ಇವರು ಈಗಲೇ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ Mangalore for your representation in this prestigious Souhard Trophy 2026 season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered. So Souhard Trophy 2026.
So opening batters are walking towards the middle. I request the fielding team, please make the field set immediately. Already we have wasted some time here, so we request Nazat friends, kindly request you to please spread out immediately. So opening batters already walks towards the middle. So we are replacing here the umpire Rajesh Patel replacing the place of Ranjesh. Thank you very much, Ranjesh, for your wonderful contribution for the prestigious Souhard Trophy 2026. As an umpire, did a great job yesterday from morning to till 2:30, and today from morning to till 6 o'clock. He did a great job as an umpire, and now Arish Patel, Vivek, and Ajmal Jokate, and along with this Rajesh Patel will going to join the umpiring panel. Welcome for him. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾದಿಕ್ came into bat, and the bowler will go into start the proceedings. Here comes the first ball. And first ball, Sadiq just wanted to get the ball towards mid-off region, but couldn't manage to get the timing behind the shot. And the first ball is a dot delivery. Pradeep balls this time. It's going to be a chance here for the fielder. The big fish in the net. The danger man Sadiq departs very cheaply. The jersey number 10 who did a great job so far for B-Boys is back in the hut. In the second delivery itself, the batter, of course the bowler Pradeep strikes. The placement is not good enough. Adi just waiting for that opportunity to grab. Just have a look at that one replay. Sadiq wanted to place one of his favorite, but this time his ball is very close to his body to play that inside out cricketing stroke. Played it uppishly. And long off fielder Adi making no mistake at all. That takes the catch quite comfortably. The wicket number first back in the pavilion, and team Nazat has got a very good start. Nazat's friends Alekala. Imran, the new batter in, as a number 3 batter for the side, will going to take the strike after the dismissal of Sadiq. Very out for duck,
And it's a 0 for 1. Pradeep A. Again, swept the ball. Jagadish, the fielder, running back very quickly. And ample time for batter Imran to complete the single. Outside the line of leg stump, it's going to be a wide. One more extra, one, and with that extra score, but Namuzan to 2 on the board, 2 without loss of any wicket. And extra which is comes into play here. And the Sahif will going to take the strike. Right arm over the kitty balls. A lovely shot, beautifully driven down to wideish long off. Adi is a busy customer in the long off region. Picks it up very quickly, moving to the direction of the ball quickly, denying the second run from this batter. With that single score, but Namuzan to 3 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. The first is in progress. Nazat Sports winning the toss. Elected to field first this time. It's a chance here for the fielder, just falling short of the fielder, and even the run out chance. 2 chances in 1 ball, which is completely missed out. My goodness, can you believe this? Imran just wanted to go for the reverse sweep. He's got a top edge. The fielder in the gully region couldn't manage to move very quickly. Maybe that he couldn't manage to move to the ball very quickly. At the same time, to another opportunity to make the run out, because both the batters are in the same end. And very lucky for the Imran that is managed to survive from the run out as well as a catch out. 2 chances in 1 ball. 4 for 1 in the over number. First is in progress. Batter is on strike. Nawaz, the striker. Here comes Pradeep, right arm over the kitty balls. Once again, lovely delivery. The batter has got the bat onto that, and no chance of any run. One more dot delivery. Excellent first over there from Pradeep. 4 runs and a wicket. This is what Nazar's friend Salekala wanted in the beginning. And Pradeep has absolutely produced that over. But team B boys Alekala, after their upset, the team Sporting in the previous day, yesterday, and Kirti Sporting Ulalbail, and they came into this round. Even Nazar Sports also did a great job in this particular tournament with their excellent performance. They defeated Test Sports in the first round. Then they defeated Brothers Makyar in the second round, and they are in that the quarterfinal, which is between 2 big teams here. And the B-boys Alekala, they defeated Challenge Boys Malar in the first round, then defeated Kirti Sporting in the second round. Then they came into the quarterfinal. Mahesh, the bowler, brought into attack. There's some chance of run to wide throw came from Jagadish. But I think its opportunity is more here in the non-striker's end. But it's very difficult to return the throw in that angle to the non-striker, and ample time for the batter to complete the single. It's 5 for 1 in the over number. Second is in progress. Mahesh Kuttar. Right arm over the wicket. Oh, full toss delivery, but a slow full toss. Low full toss. Nawaz so excited, but watching that ball, tried to play across the line and missed it completely because of slow delivery. Maybe the ball stepped out of the hands of Mahesh as he tried for the slower one, but no run scored. Scoreboard remains on 5 for 1. Again, appeal for LBW. Umpire Vivek is not interested, thinking that ball is going down the outside off stump as the batsman turns out for the switch it. Leg by called. One more addition. It's 6 for 1. So that brings Imran into strike now.
Nawaz and Imran are the batters, have to rebuild the innings. They have to study the innings for the B-boys. 6 overs format of a game. It's no time to think and play. Have to deliver. Again, the full toss straight to the hands of Jagadish. Chance of run out. Once again, have a look at Mahesh is not happy with the Jagadish. The firework is on, but not in the form of crackers, but exchanging the word. And again, Jagadish may be thinking about the run-out opportunity in non-strikers end, but opportunities created in the strikers end. What Mahesh is talking about, all happening in cricket. 7 for 1 in the over number second is in progress. Very hard to combine the runs because of some good fielding performance. Of course, some opportunities missed out by Nazar's friends. Alekala again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get that much of timing he's looking for. Nawaz just tried to post that ball, but Mahesh is different kind. The experienced bowler, you know exactly what the batter is trying for. Not really tried to ball quick, but is just holding that line and length. And making the batter to make a little bit extra effort to get that timing and timing in the stroke. He's mistimed that stroke completely. This time, a chance for the fielder Adi. Second time, he's taken the catch in that same long off region. Mahesh, well deserved wicket for him. Exactly, he's given everything in this particular over. And now, he's got the same man is back in the pavilion. Nawaz the batter is back in the pavilion. The long off fielder making no mistake at all. Of course, Adi making no mistake at all in the long off. And the wicket number 2 gone. It's 8 for 2 after completion of over number 2. The B-boys Alekala searching for the right track and absolutely struggling in the first 2 overs. If that belongs to team Nazat friends. In the evening, it's not easy to get the distance in front of a wicket. Especially long off and extra cover. It's not so easy to get the distance for any batter. It's 8 for 2. 7 for 2, not 8. It's the 7 for 2. No, correction. It's not 8. It's 7 for 2. It's 7 for 2, correction. The wonderful over. In this particular over, Mahesh bowled extremely very well. Just 3 runs he conceded. Vijay, the batter, came into bat as a 3-3-3, the jersey number. The bowler brought into attack. Pradeep in his second and last over of his quarter. He's been outstanding in the first over with a lovely piece of line and length. He managed to ball in that over. Sweep shot which comes into play. Imran almost covered his stump and using that sweep shot quite effectively down to fine leg region for a single. It's 8 for 2 in the over number third is in progress as Pradeep bowled to Vijay. The fielder at deep square leg, long on. The fielder at long off and deep extra cover. The deep square leg. This time, lovely shot, played it down to long on region. The protection is there in the long on. Vijay has been outstanding in this tournament as watching him from the match one itself. He is a kind of batter. He loves to play the strokes, being the one of the experience and a very stylish left-hand batter. He is confidently is off the mark with that single and score numbers on to 9 for 2 in the over number third is in progress. Pradeep again wanted to change his angle, coming over the wicket and this time not quite intended. Imran wanted to go for the reverse shape, quite hardly managed to get the bat onto that,
but it's not necessary that how technically sound in that shot, but it's very important for him to just get at least a single for every ball, because B-Boys Alekala have to put some good score here, at least a 40 plus runs what they wanted to put. And with that single score, moves on to 10 for a loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Now that brings Vijay into strike now. This is going to be a great contest between these two, Pradeep and Vijay. Vijay once again one of his favorite, even though his footwork is not really working that much of technically, but it's not necessary that he need to be technically very sound in his footwork, but in underarm cricket more than anything else, eye-hand coordination is so important. And getting your bat into the line of the ball quickly, that bat speed, and it's so important to get the ball, need to get a contact with the ball. It's 11 for 2 now. Right arm over the wicket balls. Once again, Imran is so good in that sweep shot. They're dealing with the singles. Pradeep will not go and bother about the singles. You know exactly how to prevent the boundaries. And so far, both the batters are dealing with the single. Rightly so. They know exactly here or not, so not to play any dot ball. And waiting for the odd deliveries to go for the big shot. That's maybe the game plan. It's 12 for 2. And the last 5 deliveries of Pradeep, both the batters are picked up a single. The last delivery of the over number 3rd. Around the wicket to Vijay. Ball him! Clean him up! Absolutely, he bowled a pitch of the delivery coming into the Vijay. Vijay, absolutely no clue whatsoever. What a delivery there from Pradeep. The last delivery, he just wanted to send the danger man, the man in form Vijay, back in the pavilion. Just have a look at it in replay. That was, of course, the delivery which is on the middle stump, but the batter very slow to react to that stroke. Maybe I think is beaten by the pace. He too early into the stroke. Just have a look at that one replay coming into the batter, and he's just let the gap between bat and pad, and ball just passing under his bat. The wicket number 3 gone. It's 12 for 3, and 12 for 3 after completion of over number 3. And wait and see how well B-Boys Alekala will going to bounce back. And it's a time to change in voice. And once again, I would like to invite one more very talented young, multi-talented, of course, he's a cricketer come commentator come MC. It's over to Mushfiq to take over the microphone in the remaining 3 overs in sweet language Kannada. Thank you. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಚಂದನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ-ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ. ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರ ನೇರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನೆಚ್ಚುಮಿಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇತರಕ್ಷಣಿ ಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 3.1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 12 ಓಟ. 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಬಿ-ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 6ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಖಲೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು, ಸ್ಲೋ ಇನ್ ಪೇಸ್, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಬಹುತೇಕ ದಾಂಡಿಗ ಖಲೀಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಪ್ರದೀಪನ ಕೈ ಚಲಕ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್, ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೇಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚಪ್ಪ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು, ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೇಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಚಪ್ಪ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ದಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಸಾಗಿಸಬಹುದೇ? ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ 3 ವಿಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಓವರ್! ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರೇ ಸರಿ ಇದು. 4ನೇ ಓವರ್ ನೆಸೆದಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೇಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಹುತೇಕ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೇಲ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ಐದನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಆದಿ ಓವರ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮೇಡನ್ ಓವರಿಗೆ ನಜಾತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೀನ್ ರವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಜೀತನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅನಗತ್ಯ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಈಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಜಿತನ ವಿಕೆಟ್ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆ ಕಲಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ 12 ರನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4.1 completed. It's 12 for 7. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೌಶಾದ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಇಜಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಇಜಾಜನ ಕಡೆಗೆ. ದೂರದ ಬದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಜಾತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಮೀನ್ ರವರಿಂದ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾದಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್, ಬಹುತೇಕ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹುತೇಕ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದಿ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದೂರದ ಬದಿಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗೆ ನೌಶಾದನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಗದೊಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಸಾಬೀತಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲೋ ಬಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಬಹುತೇಕ 1 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹುತೇಕ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಬೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್, ವಾಟ್ ಅ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 14ಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಓವರನೇ ಸೇಲು ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ ಓವರನೇ ಸೇಲು ಜಗದೀಶ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 14 ಓಟಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಳ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಶಾದ್ ಹಾಗೂ ಇಜಾಜ್ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹುತೇಕ ವೀಕ್ಷಕ ಅವರನ್ನ ಕೊಠಡಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವಾಗ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗದೀಶ್ ದಾಂಡಿಗ ನೌಶಾದನ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೌಶಾದನ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಸೈಫನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಡೌನ್. 8ನೇಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 14 ಓಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ಅವರನ್ನ ಕೊಠಡಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ ಸಲೇಕಲ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಿಲಕ್ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಎಚ್ಚರಣೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಚ್ಚರಣೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಗದೀಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. Again the finger raises from the umpire. Wicket number 9 down. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಿವ್ಯೂ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸಲೇಕಲ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸಲೇಕಲ. ನಂಬರ್ 11 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕುಂಜಿ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಸ್ಕನ ರಿಂಗಾಣ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ. ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರ ಸೇತರಕ್ಷಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ 16ಕ್ಕೆ 10 ವಿಕೆಟ್ ಆಲ್ ಔಟ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸಲೇಕಲ ತಂಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 16 ಓಟಗಳು. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಓಟಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಚಮತ್ಕಾರದ ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಬಿ ಬಾಯ್ ಸಲೇಕಲ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡುವರೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಅವರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
So yes, thank you, Mushfiq. So it's 17 runs, which is the target here for team Najat Friends Ullal. Najat Friends, they're having a low total on the board from 36 balls. They're going to require 17 runs. It's been a one-sided domination from Najat Friends in the bowling department in the first innings. Wonderful performances from the bowlers of team Najat Friends. They're all bowlers did a great job in the bowling department. Pradeep bowling that maiden over and getting that 3 wickets as well in that over. That was a fantastic over from Pradeep in the first innings. And main umpire Rajesh Padil along with square leg umpire Vivek Challenge Bowler is signalling off to start the game. The match which is beginning here. The second innings. The chase which is coming up from Najat Friends. B-Boys Alaikala. They are certainly looking in a disadvantageous position, but only the good bowling which is required for them to bring back in the game. But this one crosses the fence quite easily for 4 runs. It's a trace bullet which is left from the bat of Preetham. ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತನು ಮನದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ರೌಫ್ ಸಿಎಂ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ರೌಫ್ ಸಿಎಂ ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 5 on the board. After getting that boundary in the first ball itself, Preetham rotates the strike here to his partner Sanil. Oh, that was a delicately played stroke. What an innovative way to collect in runs. Fantastically struck that one from Sanil. That shows the timing and the confidence of the batsman. This is very innovative stroke play from Sanil. Fantastic batting performance so far. I request for the next match, Kask Naringana and team Lucky Star Rantadka, please complete the signing procedure immediately for the next match. Or just defended off the top, directed or send him back to the pavilion. Sanil had almost lost his hope that he cannot make it to the danger end, but the throw is missing off the target. So luckily Sanil survives. And scoreboard is having one more run added as well. 8 already registered in the scorecard. So 4 balls which is completed in this over. Last 2 more remaining. Only the players of Kaska Naringana remaining to complete the signing procedure. I request Kaska Naringana, all the players immediately report to the mic point for the signing at the official chart. ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೆಕಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸೀಸನ್ 5ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನೋ ವೈಟ್. So 8 on the board, 8 runs already in the scoreboard, and it's a fair delivery as well, which is the first dotted delivery of this innings from B-Boys bowlers. B-Boys Salekala, they're certainly looking in some trouble. Just swept the ball and managed to get in a single between the wicket. So with that single, scoreboard which is moving on to a 9 after the completion of first over.
So just 8 required now from 30 balls. He just swings for it. Couldn't manage to get a perfect connection. It's a legal delivery. Dot ball here from Tilak to start off the proceedings. It almost seems like it's the formalities now for team Najat Friends to cross over the victory mark and enter into the semi-finals after winning this quarterfinals. Very much one-sided domination from Najat Friends. I request the Kaskanaringana players, please immediately complete the signing procedure. So yes, a little bit corrections in the scoreboard. It's 8, which is so 10 runs in together on the scoreboard for Najat Friends. Oh, tried playing some football, Sadiq, but couldn't manage to get the ball to the wicket. And again, the help of the third umpire has been taken. And no help has been taken, so the review has been cancelled. So they are continuing the play. Even the third umpire, after checking that, already saying that it's a fair delivery as well. So the ball which is going down the leg side. Good bowling here from Tilak. So 11 on the board for Najat Friends. Oh, beautifully struck that one, but there's the fielder. And this is what the captainship is all about. You need to have fielder in the right place. But they are not having an ample total on the board. Team B boys. So Saif into the middle. Saifullah, the man standing at the strike, is a fantastic all-rounder. Struck that one pretty hard. But ball which is going into the long on region gets just a single added. So the total moves on to 12 on the board. So far, scoreboard is having a 12 on the board. So Sujit brought into the attack. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಸ್ಕ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಸ್ಕ ನರಿಂಗಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಎದ್ದು ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
So Pradeep in the middle wanted to go for the big one, but I think ball which is going far away from his reach. 1 plus 1, 2 run added into the total. Wide plus 1. So the ball which is going into the hands of short fine leg fielder, and he collected the ball in time. And again the third umpire's help which has been taken to check whether the batsman is safe. So third umpire's help has been taken to check that run out decision. ಕಾಸ್ಕನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. All the players of Kaskanaringana, please complete the signing procedure for the next match, which will be quarter-final match against team Lucky Star Rantadka. And already all the players of Lucky Star Rantadka has cooperated and completed their signing procedure. So thank you so much for Lucky Star Rantadka. They have already completed their signing procedure. The discipline is a very important part of cricket. Without discipline, you cannot conduct such a huge tournament and be successful. So 14 for the loss of 2 wickets here. We're just waiting for that third umpire's decision. Out is a decision from the third umpire. So Pradeep is walking back to the dugout. So Pradeep walking back to pavilion. So far scoreboard is having 14 for the loss of 3 valuable wickets. And a new batsman, Pradeep Amlamugar, into the middle. Oh, that's a delivery which is deviating far away. Big turn. And it's almost going outside.
So the ball, which is again a dot ball. Oh, ball which is going into the bowler's direction, and after taking the deflection of the foot, and it's traveling again behind the bowler. They're getting a room to get in a single, so safe. And oh no. Even Gopi sir predicted that maybe the match is over, but no, still it's going to go into that one more over. So 17, which is the target. The scores are level here for Najat Friends. One-sided domination from team Najat Friends. Absolutely, they dominated this game. So Nawaz brought into the attack. Oh, left head in the air, and there's two men underneath it, and Nawaz and Imran finally collapsed and taken the catch. It went very high in the air. Very elevated stroke coming in from the bat of Pradeep Amlamagan. And they have sent in Adi into the middle. This is definitely going to be a good opportunity for Adi to showcase his talent in the batting department as well. And even in the recently concluded SRGT trophy, in the nearing Father Muller ground, in a crucial moment, Adi scored 5 runs in a pinch hitting where ball to ball required. Already the wickets 8 which was tumbled, and Adi came and finished the game for team SRGT. So he's got ability to bat wide, and that's it. That's it. Comfortable victories for team Najat Friends. They are into the semi-finals. So the first team which is entering into the semi-finals. So congratulations, team Najat Friends. And for the next match, we're going to have Kaskanaringana against Lucky Star Antadga, which is one more match coming up. So for that, changes here in the commentary box. I'm once again heartily welcoming Gopi sir after a short break. So I request for the man of the match, Pradeep Kerebel, please come and collect your man of the match for your outstanding maiden over and 3 wickets. Please come and collect your man of the match. Fantastic bowling. He is absolutely leading the team from the front with his outstanding bowling. So I request Pradeep Kerebel to come and collect your man of the match here at the victory dais. ಸೊ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಸರ್, ಅರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ತಾವು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೇಲ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೇಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ your outstanding maiden over 3 wickets. You are getting the man of the match. So I request Pradeep Kerebel, please ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾದಂತಹ ಬಿ-ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಬಿ-ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ-ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಓನರ್, ಮಾಲಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಫ್ ನಜತುಲ್ಲಾಲ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಜತುಲ್ಲಾಲ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಬಿ-ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ತಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿ-ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ that participation certificate and a memento. So yes, we are seeing that Amin sir, the vice president of Najat, handovering that cash prize. And the B-boys please, B-boys ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಜತ್ತ ತಂಡದವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಸ್, ಮೈದಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಡಲೆ ಸಿದ್ದೇಕರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯವು ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ.
ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಕರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕೂಡಲೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತನಕ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಪಿಚ್ ಬಳಿ ಆಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬದುಕಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾಸ್ ಕನ್ನಡಿಗಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ 7:12 ಆಗಿದೆ. 7:15 ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 7:15 ಒಳಗಾಗಿ ಅಂದರೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಡೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕಡೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ. ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ, ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಡಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ.
I think Lucky Star Rantarka, after one the toss, they elected to field first. And because of that, their fielders are now spreading out on the field. And I request the openers of Cask Naringana, please go for bat immediately. The match starts now just within a just short while. I request the openers of Cask Naringana, please go for bat immediately. I request the openers, Cask Naringana, please go for bat immediately. Right, the last quarterfinal match of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy 2026 Season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle Register, is now going to start between Cask Naringana versus Lucky Star Rantarka. One more good match is now coming up. Winners of this match will meet Nazat Friends in the semi-final. So right of this match, the first semi-final match will be played between Young Friends Urva versus Torpedoes Kana. The big match is now coming up, and that match starts at exactly 8:30 p.m. ಸರಿಯಾಗಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 8:30 ಒಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್.
राइट आर्म ओवर द विकेट। रिवर्स शॉट गेंद को खेला, इस वक्त गेंद पहुंची गली क्षेत्र पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया गया 1 रन का इजाफा हो चुका है। कास्कर नरिंगाना इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद, और अगली गेंद, यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद, जस्ट सिंगल। दोनों बल्लेबाज रशीद और शाफी अपना अपना खाता खोल चुके हैं, और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। शाहनवाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ड्राइव किया, इस वक्त मिड ऑन की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 3 गेंदों में 3 रन इस वक्त प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज शाहनवाज, और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच, द लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, Souhard Trophy 2026 season 5 is now started just short while ago, और शाहनवाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। शाफी सामना करते हुए, again just gone for a mighty heave, not succeeded, absolutely fantastic delivery from the bowler, much straighter line, और गेंद ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज शाहनवाज फेंक चुके हैं, और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार बेहतर, वंस अगेन अ फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम शाहनवाज, 2 डॉट बॉल्स इन ए रो, और 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं शाहनवाज। अब तक बेहतर शुरुआत दे चुके हैं अपनी टीम के लिए, और इस ओवर में अंतिम बार शाहनवाज शाफी के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, bowled him, just gone for losses of stump, first wicket fallen, Shafi departs, and a terrific from Shahnawaz, just got the lead of the batsman। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूके पूरी तरह मिडल ऑफ स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ, बिल सब डिस्टर्ब होते हुए, और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। Absolutely fantastic delivery from Shahnawaz, और रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से गेंद को फेंका था, but straight a line, it just wanted to play that one with a wrong line, and he just played the penalty for that, off stump uprooted, first wicket gone, and a fantastic over came student from Shahnawaz. Kasnarigana lose their first wicket, it's 3 for 1 after first over. After this match, the next match will be the first semi-final match, the big match is now coming up, Young Friends Urva will take over Torpedoes Khana in the next match. The first semi-final match will be starts exactly at 8:30 p.m. And because of that, I request all the players of Young Friends Urva as well as Torpedoes Khana to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart before 8:30 p.m. and also complete that toss procedure. फैसल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, दूसरा ओवर शुरू होता हुआ, और सामना करते हुए इस वक्त माफ कीजिए फैसल नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और सामना करने के लिए तैयार रशीद। पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई, प्लम इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रशीद की पारी समाप्त, जस्ट वांटेड टू लॉफ्ट दैट वन ऑन द ऑन साइड, गेंद लाइन पर टिप्पा खाई, मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कंसंट्रेट कर आते हुए, और आखिरकार उनके पैर पर टकराई, और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई, उन्हें एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में दूसरा विकेट गिर चुका है। रशीद डिपार्ट्स एंड कास्टनरिगाना लूज देयर सेकंड विकेट। तो यहाँ पर देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर लेग बिफोर विकेट हुए थे बल्लेबाज रशीद, और गेंद उनके पैरों पर टकराई, लाइन पर टिप्पा खाते हुए, और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई, उन्हें एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में। सेकंड विकेट गॉन, दे आर लुकिंग इन ट्रबल, कास्टनरिगाना, इट्स 3 for 2। So in these critical circumstances, the number 4 batsman is now comes out to the middle, Sampat, और वो इस वक्त सामना करेंगे नासिर की गेंदों का, और अपनी पहली गेंद पर विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं नासिर। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, विकेट कीपर मंसूर रण तड़का इस वक्त बिल्कुल विकेट के अति निकट बैठे हुए, और
ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को टैप कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात पॉइंट पर और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress. Absolutely, a partnership is now needed for the batsmen of Kas Naringana if they have to post a huge target in front of the batsmen of Lucky Star Run Tarka when they coming to bat. और इस बीच फैजल सामना करते हुए नासिर की गेंदों का, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, विकेट कीपर ने विकेट जरूर उखाड़े लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और कोई क्षति नहीं इस वक्त बल्लेबाज के लिए, नो डैमेज डन। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज नासिर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फैजल जो कि इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा और गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है। 1 more wicket fallen just after being shuffling across the line, wanted to sweep it away down towards deep square leg, not succeeded. Much straighter line from the bowler और गेंद बल्लेबाज को वंचित करने के बाद सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है नंबर 3। तो यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है किस तरीके की गेंद थी। देखिए इस वक्त गेंद लगभग सीधी रफ्तार के साथ स्वीप करना चाहा, लेग स्टंप को छूकर गेंद निकलते हुए और गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। 3rd विकेट गॉन, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। खासकर नरिंगाना और नाउ 4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। It's 4 for the loss of 3 wickets. 2nd over in progress. Really a testing time continuing here for the batsmen of Kask Naringana. 3 अपने बहुमूल्य विकेटों को खो चुका है सिर्फ 4 रनों के योग पर और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नंबर 5 बल्लेबाज के हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए निजार इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और नासिर बेहतरीन ओवर अब तक उनका साबित हो चुका। 2 विकेट इस ओवर में प्राप्त कर चुके, अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, बेहतर गेंद थी इस वक्त। विकेट कीपर सीधे पहुंची, विकेट कीपर गेंद सीधे पहुंचे, विकेट कीपर मंसूर रन तड़का के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज नासिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन बेहतर स्टॉप इस वक्त। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम। इनफैक्ट दे बैक टू देयर क्रीजेस और थ्रो को ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए इस वक्त विकेट कीपर मंसूर और बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस। 2 gone after 2 overs. Really struggling time continuing here for the batsmen of Kask Naringana. It's 4 for 3 now after completion of 2 overs. Next match will be the first semi-final match of this tournament. Will be played between Young Friends Urua versus Souhard Khan, and that match is now coming up live exclusively right in front of you within just right after this match in fact, and that match starts at exactly 8:30 p.m. और निश्चित रूप से कास्ट नरिंगाना के बल्लेबाज अपनी सही राह को इस वक्त तलाशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नंबर 23 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज शाहनवाज जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सीराज के लिए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका, 4 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर जा चुके हैं और शाहनवाज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद हल्के से गेंद को खेला जरूर, हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में बैकअप होता हुआ रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइडर और बल्लेबाज 1 रन दौड़कर यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फॉलो थ्रू में अपना हाथ जरूर आ रहा था शाहनवाज ने लेकिन गेंद को पूरी तरह रोक नहीं पाए और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता सिली मिड ऑन फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रनों के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज कास्क नरिंगाना के और गेंदबाज शाहनवाज अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर मंसूर। लगभग बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आए थे इस वक्त, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, बेहतर गेंद थी शाहनवाज की
और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। शाहनवाज ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ लेकिन सीधे फीडर के हाथों में डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर। स्ट्रोक में दम था लेकिन प्लेसमेंट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग और यहां पर ये विकेट इस वक्त गिर चुका है। और निश्चित रूप से डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, एक बेहतरीन कैच, एक बेहतरीन जजमेंट के साथ हो लेते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका। मुन्ना जो फील्डर थे जिन्होंने इस कैच को लब कर, देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को उछाला था। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले एंड फैंटास्टिकली हेल्ड बाय द फील्डर एट डीप बैकवर्ड थर्ड मैन। So Imran, the fielder, Imran Munna held the catch successfully, and because of that good catch, one more wicket fallen. Kask Nadigana looking deep in trouble. It's 5 for 4. So in these critical circumstances, the number 6 batsman is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सपना करने के लिए तैयार रहा। और शाहनवाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, लेकिन कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए, और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। शाहनवाज 2 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं और अपने ओवर के 5 विकेट लेकर इस वक्त तैयार रहा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को उछालना चाहा, ऑफ स्टंप इस वक्त गिर चुका है जरूर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से नहीं टकराई थी, शायद विकेट कीपर का हाथ या पैर इस वक्त टकराया था और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 5 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, और बल्लेबाज जुबैर इस वक्त सामना करते हुए जो बल्लेबाज है अंतिम गेंद। शाहनवाज ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑफ पर स्ट्रेट टू फील्डर एंड वन मोर फैंटास्टिक ओवर। In Lucky Star run Tadka's point of view came to an end. 3 gone after 3 overs. Kask Nadigana still searching for the right track. It's 5 for 4 after completion of 3 overs. 3 to go in the innings. और देखते हैं यहाँ पर 3 ओवर में कास्क नादिगाना के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो और इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो, आगे का होते कल सोने के एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ अंग्रेजी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश को। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you so much, Gopi. Good evening, all cricket lovers. Welcome to this under floodlight last day and the final day of this cricket tournament. And Kask Nadigana searching for the right track, struggling in the middle against disciplined bowling and attacking bowling performance of Lucky Star Rantadka. The wickets are absolutely dismantling here. They're 6 for 4. They're searching for the right track and struggling in the middle. There's some lovely shot, really beautifully down to long off, wideish long off region by Zubair. And experience, the batter is a great all-rounder for the side of Kask Nadigana. Zubair and Siraj have to rebuild the innings here for his team to get into the good total. Shreyas, lovely delivery, is the man, is known as Junior Ashwin. And the bowling action almost is similar to the bowling action of Ashwin. And again, bowling right arm over the wicket balls. Oh, beautiful leg cutter in the occasion. And the last moment, the batter has got a bat onto that. Otherwise, the batter definitely going to be an infant of stump in that occasion. The quicker leg cutter there from the bowler Shreyas. It's 8 for 4 in the over number 4 is in progress. Shreyas bowls. Oh, what a delivery. This is one of his special. This is one of his the weapon which is always he loves to use. The quicker off cutter. You can see that it's very difficult to read that line. Zubair has got no clue whatsoever. The beautiful executed that incoming delivery. And the faster and quicker one, not that much of turn in the ball, but just retaining that the pace in the bowling and what you call it's a clipper as the language if is going to use. And absolutely beaten by that the flipper there from Shreyas. Outstanding delivery. He's one of the most successful bowler in this particular tournament with the wicket every time when he's in action. It's 8 for 5.
This time again, slight a bit of ball missing the stump. The lovely over which is comes in and here from Shreyas. Successful over, 3 runs and a wicket after completion of over number 4. Kask Naringana still searching for the right track, struggling in the middle. Never looks like it's going to be a cricket scoreboard. It looks like it's a kabaddi scoreboard. 8-5. Lucky Star Rantadka in the previous day, the last match, the way that they chased down that runs, the target which is set for the team Rantadka, Lucky Star Rantadka, and they're against the STC Jaipur. The Mansoor Rantadka, the innings is played absolutely on of the blistering knock played in that late night and came into this round. The bowler brought in the attack. Zakaria. That was the run what that desperately needed for the Kask Naringana. Even that ball, very hard to combine the runs from the bat. This is the one run, it's absolutely going to be a bonus in the form of extra. The big white defeats everyone. Wicket keeper and the short third man. And with that boundary score, but now moves on to 12 on the board. 13 correction, 5 runs added to total, white plus 4, 13 without loss, 13 for the loss of 5 wicket. 14 correction. Again now it's 14. On the board as bowler will going to continue. Zakaria. Oh, what a shot. Lovely shot. Played it down to long on. The protection there in the fielder. Oh my goodness, has got a problem here for the fielder Nasir. While he will try to bend down, maybe has got a little problem with his neck. And maybe that light tower, that wire maybe which is hanging there in that tower, which is hit the neck of Nasir, has got a little bit pain. They need to be very careful in that area, isn't it? The very, very dangerous. And that will going to hurt a lot for Nasir, because sometimes you are absolutely aware of that while you are only looking towards the ball. You are not really concentrating on the disturbance which is in the ground. It's a 16 for 5. Kask Naringana. Looks like is very lucky to survive from that the wire. They passed in the ground in the boundary line. Fantastic delivery, faster and quicker one there from Zakaria. The wicketkeeper behind the stump, Mansoor Rantadka, no chance to get away from his perfect pair of hands behind the stumps. Here comes again right arm over the wicket balls. Once again, lovely delivery, beaten completely in relegation. Zakaria, the balls are back-to-back 2 dot deliveries in this over. Starts with the fight, Spectra wide, then he's managed to keep his line and length with the good areas. 16 for 5 in the over number 5 in progress. Munzir the batter. Again, that's going to be one more wide. This is the first time we're watching that the bowlers
of Lucky Star Rantadka. The first bowler is bowled some extras. But otherwise, each and every bowler really did a great job to restrict their opposition runs. This is a big over from the point of view of Kask Naringana. 17 for 5. Change of face, slower one, and chance of run out. It looks like the Zakaria fails to gather the throw from Shreyas. He tried to hit the stump, but I think he did a great job. He just wanted to make two things clear, that he just wanted to hit the stump. If the ball will go into miss the stump, the bowler has got an opportunity to gather the throw, because he thrown that one after one bounce. And but the bowler fails to gather the throw from the fielder. It's 18 for 5. Zakaria. Oh, lovely delivery, appeal for leg before wicket, but I think the batter has got a bat onto that in the last moment. So first productive over for the Kask Naringana came from this over, the over of Zakaria, and even though still it's not a huge score on the board. It's 19 for 5. You are watching the prestigious Souhard Trophy 2026 Season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered. And after this, we are going to witness one more big match. The first semi-final of the prestigious Souhard Trophy 2026 from the Mangalore top ranking teams, and the team which is going to have a contest, Young Friends Surva and Torpedoes Khana. This is absolutely the moment what the cricket lovers spectators want to watch, the battle between these two teams. The battle in the sense is a healthy battle between run and bat and ball. And wait and see how well these two teams will go into battle for the place in the mega final of Souhard Trophy 2026 Season 5. Nasir brought in that experienced campaigner to bowl that last over on behalf of team Lucky Star Rantadka. Pass umpire Arish Padil. The first ball. And starts with the wide. Wicket keeper changes. And Mansoor coming to the one of his favorite areas, cover point region, taken some spectacular catches in that area. He's not only the good wicket keeper, but he's a good fielder. And just like I mentioned about, he's lost that area. He's taken some spectacular catches in that area. He's not only a very good keeper, but he's a very good fielder as well. At cover point region, but little bit high. Couldn't manage to held that one. He's got a jump, but not good enough to get the catch. It's 21 for 5. Bowled him, clean him up. Nasir picks up first wicket, and wicket number 6 gone. It's 21 for 5. Only one wicket remaining here of Nas Karingana. They're playing with the only 8 players. This is a highly disappointment, isn't it? You're coming to this quarterfinal after a lot of hard work, after a good performance, upsetting some big teams. But when you are in a quarterfinal, you are not having a full strength means. And definitely something to think about. This is what the crowd is all about here in Derlakatte, enjoying their game of cricket. They're not really bothered about that.
It's 21 for 6. Welcome back once again. Nasir will going to continue. Right arm over the wicket to the new batters. This time, lovely shot. Played it down to long off region, but protection there in the long off. Ashraf is off the mark with a single. And Ashraf, the it's 22 for 6. Now Sampath lofted that one, but there is a fielder, Shreyas, a tall man there in the but this time it's going to be out. This is a great throw came from Shreyas. He's got absolutely good arm, and going against a good arm, it's always asking for trouble. Even though we can see that you have to cover the distance, it's a long distance to cover. When you try to return the throw to the wicket keeper, you have to be little bit, have to be a good arm, strong arm, and the very good job. All out, it's bundled out. Cast Naringana, it's 23 for 7, but they are playing with the 8 players, so that they are bundled out. Unfortunately, the 24 is the target set for the team. Lucky Star Rantadka. So let's wait and see. It's going to be a target which is not a huge one, and of course having only 8 players in the side, restricting their opposition for 24, it's not a joke. But wait and see how well the Nas Karingana will going to fight in their limited strength against team Lucky Star Rantadka, and we'll take a short break here, and after short break once again the time for Gopi to take over the microphone. Welcome Gopi once again for the prestigious Souhard the Trophy 2026 season 5.
धन्यवाद सतीश. So the target is 24, the target for लकी स्टार रन तड़का. और पहले बल्लेबाजी करते हुए कास्ट नरिंगाना ने अपने 8 खिलाड़ी की मदद से खेलते हुए 23 रन बनाए और अपने 7 विकेटों को वो खो चुका है, यानी ऑल आउट हो चुका है. और 24 रनों का लक्ष्य इस वक्त लकी स्टार रन तड़का के सामने और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. मंसूर रन तड़का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. कल रात को एसटीसी जप्पू के खिलाफ, श्रीदेवी जप्पू के खिलाफ मंसूर ने एक बेहतरीन पारी, आक्रामक पारी खेलते हुए अपनी टीम को विजय दिलाई थी लकी स्टार रन तड़का को. और यहाँ पर उसी तरीके की बल्लेबाजी का इस वक्त इंतजार है उनको और उनकी टीम को. और गेंदबाज अशरफ ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार मंसूर का स्ट्रोक, लेकिन कवर पॉइंट फील्डर गेंद को रोकने में सफल रहे. हालांकि गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थी, लेकिन आखिरकार कवर पॉइंट फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए रन बल्लेबाज को नहीं मिला. और फिर से एक बार मंसूर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. अशरफ की गेंद मंसूर के लिए काफी देर तक हवा में गेंद इस वक्त फील्डर गेंद तक पहुंच पाए, लेकिन गेंद को लपकने में असफल रहे इस वक्त. लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय द डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर. कम से कम 20 से 25 कदम उन्होंने दौड़ा और गेंद को लपकना चाहा, लेकिन गेंद तक पहुंचने के बावजूद गेंद को लपकने में सफल, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न जरूर किया इस वक्त वडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने. और इस बीच बल्लेबाज मंसूर के पास 1 रन लेने का मौका और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर हो चुका है. नौशद सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. अशरफ गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ. अशरफ नौशद के लिए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. यह गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. इस मैच की विजेता टीम दूसरे सेमीफाइनल मैच में नजत फ्रेंड्स का सामना करेगी और वो मैच दूसरा सेमीफाइनल मैच पहले सेमीफाइनल मैच के बाद खेला जाएगा. फिलहाल पहला सेमीफाइनल मैच इस मैच के बाद होगा एक हाई वोल्टेज मैच यंग फ्रेंड्स रूआर टॉर्पेडोस काना के बीच. और इस बीच गेंदबाज अशरफ मंसूर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद मंसूर का स्ट्रोक, बेहतर स्ट्रोक. इस वक्त गेंद जाते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर. जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 4 रन बिना किसी नुकसान के बन चुके हैं इस वक्त. 24 रनों का लक्ष्य, 24 द टारगेट इन 6 overs. लकी स्टार रन तड़का टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. और गेंदबाज अशरफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Yes, swings and this time he's got the distance. It's a big one for Mansoor and he's just taking the aerial route. So absolutely fantastically dispatched it away down to a deep mid wicket fence for a maximum by Mansoor. Have a look at this in the replay. This is a deep backward square area जहां पर उन्होंने गेंद को उछाला था. इस वक्त गेंद मैदान के बाहर जो इमारत है, बिल्डिंग है, वहां पर उसके आगे टिप्पा खाते हुए सीमा रेखा से बाहर. इस बार बॉल्ड आउट, फैंटास्टिक कमबैक. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कमबैक मेड बाय द बॉलर अशरफ. अगली गेंद पर एक्स्ट्रा क्विकर गेंद के जरिए मंसूर का विकेट यहां पर उखाड़ा. और यहां पर देखिए किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त की थी गेंदबाज अशरफ ने. और आखिरकार मंसूर छक्का बेहतर तरीके से उन्होंने जरूर लगाया था, लेकिन अगली ही गेंद पर ऐसा कहना पड़ेगा अशरफ उनका विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके. एक्स्ट्रा क्विक वन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर अशरफ. और पहला विकेट गिर चुका है. मंसूर डिपार्ट्स एंड इट्स 10 for 1. This is the last quarterfinal match of this prestigious cricket tournament. Souhard Trophy 2026 season 5 is now progressing here. Winners of this match will meet Nazat Friends in the second semi-final. And that second semi-final match is now coming up live and exclusively right after the first semi-final. Meantime, after this match, the first semi-final, the big match, is now coming up between Young Friends versus Torpedoes Kana. और गेंदबाज इस वक्त तैयार और गेंदबाजी जुबैर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए ऊपर की पहली गेंद लेकर तैयार. नौशद इस वक्त सामना करते हुए क्विकर गेंद, बेहतर गेंद थी जुबैर की इस वक्त.
गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 14 रन सिर्फ चाहिए, गेंदें बाकी है 29। जुबैर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नौशद इस वक्त सामना करते हुए स्वीप करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी, 2 गुड डिलीवरीज बॉल्ड बाय जुबैर टू नौशद। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और जुबैर इस वक्त अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉट मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा। Leg by declared by umpire. Run with that leg by run. The scoreboard moving up to 11 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज जुबैर यहां पर फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। सामना करते हुए बल्लेबाज इमरान। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद पर बल्ला अड़ाया था जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। दर्शक खामोशी के साथ इस वक्त मैच का मुआयना यहां पर करते हुए और निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति करते हुए अंडर फ्लड लाइट्स इस मैदान पर। और जुबैर ये गेंद टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। विकेट कीपर को के पास मौका जरूर था, लेकिन अंतिम क्षण में यहाँ पर गेंद तक नहीं पहुंच पा रहे। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर, 12 ऑन द बोर्ड। बेहतरीन ओवर जुबैर का समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल रिमेनिंग इन दिस ओवर, 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्टिल द सेम नंबर ऑफ रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 12 रन बन चुके हैं, 12 रन और बनाने हैं विजय के लिए। जुबैर इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नौशद के लिए। इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा। बेहतरीन ओवर जुबैर का समाप्त हो चुका है। लेग बाय के शोर अंपायर का 3 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर फ्रॉम जुबैर आफ्टर 2 overs. Still I must say, lucky start run Tarka looking in a good situation. It's 13 for 1 after 2 overs. What a fantastic tournament is now progressing here in the name of Souhard Trophy Season 5 2026, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered under floodlights. इस वक्त अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ मुकाबला इस वक्त जारी है कास्क नरिंगाना और लकी स्टार रन तड़का के बीच, और 11 रन की दरकार इस वक्त लकी स्टार रन तड़का को बचे हुए 4 ओवर में, यानी 24 गेंदें बाकी और 11 रन चाहिए विजय के लिए। गेंदबाज अशरफ, जिन्होंने पहले ओवर में एक बेहतरीन गेंद के जरिए मंसूर का विकेट प्राप्त किया था बोल्ड आउट के रूप में, और यहाँ पर अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नौशद सामना करते हुए। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा, 14 ऑन द बोर्ड। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज इस बीच अगली गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड, प्रॉपर्ली गॉन टू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली। 1 रन फिर से मिलेगा बाई के रूप में, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो इन द इनिंग्स। अशरफ नेक्स्ट टाइम से बाहर, अपील, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। प्लम इन फ्रंट गिवन बाय द अंपायर एंड एट लास्ट नौशद डिपार्ट्स। गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे, गेंद सीधे उनके पैरों पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा, और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई, उन्हें एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में। सेकंड विकेट गॉन, नौशद डिपार्ट्स। नाउ इट्स 15 for 2. तो जहां तक सवाल है, मैदान पर ऐसा लग रहा है मॉनिटर पर कि बारिश यहां पर हो रही है, और असल में यहां पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मॉनिटर पर इस वक्त नज़ारे को देखकर देखिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि मैदान पर बारिश हो रही है। तो यहां पर वाटर टैंक के ऊपर 2 मुसाफिर, ऐसा कहना पड़ेगा 2 प्रेक्षक इस वक्त मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए बैठे हुए,
और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे पहले गेंद अगली गेंद पर। देखिए दो प्रेक्षक इस वक्त वाटर टैंक के ऊपर बैठे हुए इस वक्त मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए, और गेंदबाज अशरफ, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, एंड द स्कोर स्टेज एट 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार अशरफ, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद वाइड का इशारा। One more run added to the total. It's 16 for the loss of 2 wicket. साबित नए बल्लेबाज जिनका आगमन इस वक्त हो चुका है सामना करते हुए अशरफ की गेंदों का। ऑफ स्टंप से बाहर और शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद, ओवर की समाप्ति, 3 गॉन आफ्टर 3 overs, 16 for 2 for lucky star run tarka with 8 runs to get from remaining 18 balls. That means remaining 3 overs. तो जहां तक का सवाल है इस वक्त नया ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं। 4th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और गेंदबाज इस वक्त तैयार। फर्स्ट बॉल कम्स ऑफ द टोज, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट दैट सिंगल रन, द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 17 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इन फैक्ट धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त लकी स्टार रन तड़का, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, और गेंद को छोड़ दिया इस वक्त अंतिम क्षण में ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा इस बीच। 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद को खेलने के प्रयास में चूके संपत एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और जहां तक सवाल इस स्ट्रोक्स पर बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, गेंद को खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। संपत एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, इस बार स्वीप करना चाहा, विकेट कीपर ने तेजी, इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा अपील जारी है, लेकिन तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त इशारा कर चुके हैं अंपायर। तो इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग नहीं किया गया है, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर। संपत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए साबित के लिए, lost it and this time I think it might be in clear defense. It's all over for this match. Lucky Star run tadka or won the match by 8 wickets with exactly 14 balls to spare in the innings. And have a look at the shot from the batsman. Just stand and delivered, and he just finished the match in a style with a 6, with a maximum in fact. So that's it, and Lucky Star run tadka through to the semi-final of this competition, and in the second semi-final match they will meet Nazat Friends. Meantime, the first semi-final match will be played between Young Friends Urua versus Torpedoes Kana, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. The big match is now coming up, first semi-final between Young Friends Urua versus Torpedoes Kana. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ಗೆಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಇಮ್ರಾನ್ ಶಾಮನಿಗೆ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಋತುರಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಶಾಮನಿಗೆ.
behalf of the organizer, Derlakatte Friends Circle registered, and behalf of all the spectators, heartily welcome to you, sir. The first semi-final match, the big match, is now going to start at exactly 8:30 p.m. That means right after 20 minutes break between Young Friends Urva versus Torpedoes Kana. We'll be back right after the short break. Right after the break of 20 minutes in the first semi-final match will going to start at exactly 8:30 p.m. between Young Friends Urva versus Torpedoes Kana. Now it's time for 20 minutes break. Thank you. Dhanyavad.